the separate list to be moved. Government amendments uploaded on 24/3/2026. Can I? Yes, please. Please carry on. So thank you very much. I take this opportunity to reply on the debate which has been held on the finance bill itself. So nation building is a continuous process and it doesn't happen overnight. Every budget, every finance bill that we've come up with is a step towards the ultimate goal, and that is attaining Viksit Bharat by 2047 and fulfilling the aspirations of 140 crore Indian citizens. So, in this quarter of the 21st century, sir, India is moving from India is actually moving forward with reform not out of compulsion, which is what has happened earlier. Reform is not happening out of compulsion, but out of conviction, with clarity, confidence, and commitment. India is riding on the reform express under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, and this finance bill of 2026-27 therefore rests on 5 clear principles, sir. First one is there is a trust-based tax administration that is being improved upon. Actually, we are reducing unnecessary hardship for honest taxpayers. You can see various aspects of it in my response to various questions and clarifications sought by members. I will elaborate on it. Second, sir, the ease of living for common citizens. I was worried that some of our honorable members have started mocking ease of living and ease of doing business. It is important that we continue on that process. Every citizen should feel that this country doesn't really make it difficult for him by doing compliances, by seeking permits, by seeking quota, by seeking licenses for legitimate businesses. I thought it was from 1991 that all of us kept saying India has to become a lot more easy to live, a lot more easy to govern. So it was astonishing for me to hear some members talk about ease of living and ease of doing business as not so significant, not so important. I think it is important that we go on that route and make India a lot more easy to live. Third, sir. हनुमान बेनीवाल जी आप बैठिएगा. बेनीवाल जी आप बैठिएगा. Third principle, sir, we are empowering the MSMEs, farmers, and cooperatives, because MSMEs, farmers, and cooperatives are at the heart of creation of employment, for production, and for overall development of India. So this finance bill supports them with very many measures that improve liquidity, but also reduce the compliance burden and give them the opportunity to have greater contribution made towards first their cooperatives and then the larger economy. Fourth, sir, making India a stronger global business hub. And that is why we've brought in clarity in very many provisions, taxation-related provisions, and I would elaborate on it. It supports key sectors such as digital infrastructure, electronics manufacturing, marine products, leather, critical minerals, nuclear energy, and so on, all of which are critical for India to speed up towards Viksit Bharat. And the fifth one, sir, and the final, is to become seamless trade facilitation move and bring in customs reform. So very many provisions have been altered in order that we are able to provide greater trade facilitation. So with these just opening few words on the finance bill itself, I will now, by responding to honorable members, be able to elaborate on some of the features that are in the finance bill. Sir,
to begin with, we had the Indian National Congress's member, Dr. Amar Singh, who I respect a lot because he's a trained economist who was heading Planning Commission in Punjab, who contributes to the debates in this House. But this time I feel he did not speak as an economist. He spoke more like a politician who's wanting to take a pot shot at the ruling party. I wish he had contributed to the debate with his wisdom, with his exposure to the field of economics. Whereas what he said astonished me. It can't come from him, but he said it, and therefore I have to respond. Sir, I'm just summarizing. He said, nothing is there for the middle class. You've done everything for big businesses. What an irony. I thought this finance bill has so much more for the middle class. If only I list out a few. I hope Dr. Amar Singh will concede that he was on a completely wrong track. Budget, sir, has slashed this finance bill, has slashed the TCS rate for pursuing education and medical purposes under the liberalized remittance scheme, the LRS as it is popularly known. It used to be at 5%. We brought it down to 2% so that people who send money abroad for their children, middle class which borrows money to send their children abroad, will have lesser TCS to pay. Similarly, TCS on overseas tour packages, where people go on trips in a group, families together and so on. We used to have a TCS of 20%. Now that's been brought down to 2%. Are the large corporates going on these kind of group trips? No, ordinary middle-class families go. So that is one thing I want to draw his attention to. Second, completely we have exempted the basic customs duty on 17 critical life-saving drugs and medicines. Is this not going to benefit small families, ordinary citizens whose elder or family member is admitted in hospital and who have to buy these expensive medicines? We've brought down the basic customs duty to complete zero, exempted them from basic customs duty. Furthermore, duty-free personal imports of medicines, where your children are abroad, they are sending it for your upkeep, for your medicines. And food and special medical purposes food items, which come for people who are undergoing severe treatments, have all been extended to 7 additional rare diseases also. They have also been given duty-free personal imports. That, of course, will help middle class. Any interest, similarly, on the Motor Accident Claims Tribunal awards, any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal, for instance, when it becomes delayed and the family of the accident victims are waiting for the payment, and when the payment comes, the interest is awarded by the tribunal, there was a tax on it, that has also been completely removed. It is completely exempt. Is that not going to help people who are waiting for the insurance amount to be given back to the families of the affected party? We are proposing also to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated. Normally, after it is initiated, you're not allowed to correct your returns. We have allowed that, and at an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. So the assessing officer will then use this updated returns for further proceedings. It makes life easier for the taxpayer. So young professionals, students, and relocated NRIs often make inadvertent mistakes or errors in the budget, in their assessment when they file it. A one-time 6-month foreign assets disclosure of small taxpayer scheme has been brought in, whereby this small taxpayer can declare small overseas assets which are left undeclared till then, or even income up to 1 crore of rupees if it has been left without disclosure, and up to 5 crore of previously taxed but undeclared assets are now
without any prosecutions to be faced. They can just declare and do the due process. There will be no prosecution after them. This will bring in great relief for small taxpayers who by chance, didn't know, inadvertently missed out on declaring amounts which are left in accounts abroad. Senior citizens and small savers will also benefit from a new single window system allowing depositories to accept Form 15G and 15H directly and distribute them to relevant companies, ending the hassle of submitted multiple physical forms of personal personal forms to avoid TDS or on dividends. So instead of the tax assessee paying it to so many different agencies, the depositories can do on behalf of the taxpayers, particularly the senior citizens, and therefore this will be a relief. So very important, which will affect all passengers, all relatives, families, friends, even honorable members who go abroad and come back. We are rationalizing the passenger allowances, rationalization in tariffs on gifts and also on personal imports, and simplification of personal effects. This reduces disputes at the airports. I normally receive a huge lot of day-to-day complaints of, I'm held back in Delhi airport, the customs official is not letting me go, I'm saying this is mine, they are saying no, this is new. All these disputes will be now over. We are increasing, in fact, rationalize it completely on every item that you can bring, and if you want, you take it back, if you want, you leave it. So the passengers now will have far less to worry about when they land in India. Then finally, sir, digitization of temporary imports and exports of valuables, including jewelry and professional equipments, bringing in cameras, going out with cameras, simplifies travel for individuals attending overseas events, medical procedures, and also on personal visits. So if this is the set of relief that we are offering, these are aimed at offering for the middle class, for the passengers, ordinary citizens. It is not for those big travelers or high net worth individuals. Sir, similarly for MSMEs, sir, we have taken there are two principles which I would want to put up front. For dealing with MSMEs, we take this approach, penalize first, don't take them to criminal courts or whatever, just whatever you penalize them, relieve them of what they actually we are moving away from penalizing first and giving them the relief, And then later, one more thing I would like to say is we are facilitating first, enforcing later, if necessary, that is. So that way we are taking an approach which is friendly for MSMEs. Penalties for technical defaults, like failing to get accounts audited, have been converted into predictable fixed fees. So there's no uncertainty MSMEs will have to face. So similarly, rule-based automated process for small taxpayers have been brought in to obtain a lower or nil deduction certificate online itself. So there are very many more which I can list out, but the fact is individuals or MSMEs have been given more facilitated treatment. So for strengthening agriculture, fisheries, and the cooperatives, there are several measures in this finance bill. Primary cooperative societies, sir, enjoy deduction for supplying milk, fruits, and vegetables to their federal cooperatives. This budget or this finance bill also expands that deduction to include cooperatives supplying cattle feed and also cotton seed, recognizing the integrated nature of rural value addition. To build stronger cooperatives, and particularly cooperative federations, inter-cooperative society dividend income has been made tax deductible. So, under the new tax regime, provided it is further distributed
to members. So if the federal cooperative is going to pass the dividend further down to its members, under the new tax regime, this treatment will be offered. Furthermore, a 3-year tax exemption has been granted to dividend income received by notified National Cooperative Federation. All this is going to help small members in the cooperative societies. And similar treatment is being given by Indian fishing vessels in the exclusive economic zone or on the high seas. They will now be completely free of customs duty. So we want to facilitate first and enforce the law, if necessary, much later. That will simplify lives for cooperatives, fishermen, individuals, and so on. Sir, on the cesses and surcharges, sir, every session we have this question of why should cesses be collected, why should surcharges be collected, and because it remains outside of the divisible pool, it's not doing justice to the states. So the constitution makers knew what they are doing, and we all pay respects to them. There is a provision for levying cesses and surcharges which is given to the central government. We are using a provision which is legitimately provided by the central government. Now add that also into the divisible pool. No, there is a provision for us to use it. We will use it. Just as there are several provisions given to the states to levy tax on certain items which has nothing to do with the divisible pool. Do we question that? No. And therefore, repeated allegation that you're collecting cesses and surcharges, it should actually be going, oh, sorry. Please read the Constitution again. We are allowed to do it, and we are doing a legitimate thing. But having received it, having collected it, are we not spending it only on the states, providing hospitals, schools, and laying the roads? In fact, I have said this every time, I'm saying it now, again, more than what is collected as cesses and surcharge is what we spend under schemes to the states. I'll just go reading the numbers, and I hope the members will understand those collected cesses and surcharges are not lying with us. It's actually going to the states. Sir, Samagra Shiksha midday meal scheme, implemented through state governments, financed through the Health and Education Cess, National Food Security Act, center bears the bulk of the cost, states distribute. National Health Mission, even in the recent supplementary demand for grants, which is passed in this House only a few days ago, 11,627 crores was transferred to PM Swasthya Swaraksha Nidhi to meet NHM expenditure. So resources from many cesses are 100% transferred to states. In fact, if it was part of the divisible pool, they would only get 41% of it. So I want to underline the fact that they are getting, in fact, 105% utilization has happened. We spend more than what we collect. Example, in the last 6-year period, 2019 se lekar 2024-25, the cumulative utilization of cesses has exceeded the collection. Kitna collect hua, kitna unko beja gaya. 15.14 lakh crores were collected. Kitna beja gaya? 15.97 lakh crores have been sent to the states under various schemes. So more than what is collected under cesses and surcharges is being spent, and I think repeatedly raising doubts about you put it in the divisible pool, not realizing not 100% will reach you, only 41 will reach you, is just making a lot of noise without understanding the details. Similarly, sir, health and education says 74,000 crores extra has been spent over and above what has been collected under cesses and education and health cess. What was collected, sir?
7.03 lakh crore was collected, and that is between 2014-15 to 26-27. Against this, the total utilization stands at 7.77 lakh crore, 7.3003, almost just 7, is gone up to 7.77 lakh crores, 74,000 crores extra. I think these replies should dispel the doubt about cess and surcharges. Sir, again, a very important point which was raised by Dr. Amar Singh. Data centers lack requirements for localization, employment and technology transfer. So giving them tax holidays is not good at all, is the observation of Dr. Amar Singh. I want to highlight, sir, the 26-27 budget has designed its tax holidays with structural conditionalities and complementary skilling initiatives to ensure domestic value creation happens. The tax holiday until 2047 is available only when the foreign cloud provider utilizes data center services located in India, meaning the physical infrastructure must be built and operated domestically. This guarantees that construction, operation, maintenance operations, and also the jobs largely stay local. And also all sales to Indian users must be routed through an Indian reseller entity, creating an entire ecosystem of Indian system integrators, managed service providers, and telecom partners who capture value and employment locally. So this is absolutely clear, and therefore this tax holiday is going to bring in investment, keep them here, create jobs here, and utilize data services here, and then also export. So it's not as if this is all for somebody from outside and nothing for us. Even the safe harbor rule given in the finance bill ensures genuine Indian operations. The 15% safe harbor margin on cost for resident Indian entities providing data center services to related foreign companies ensures that Indian operations are not hollow shells, but retain meaningful profit and build genuine technical capability. So this guarantees that Indian entities are adequately and compensated for real work performed by local professionals. So Dr. Amar Singh should remove that doubt from his mind. In fact, one more point that I would add, sir, $70 billion in data center already underway for investment, and India's cloud capacity projected to grow 4x or probably 5x by 2030. The sheer volume of construction, cooling infrastructure, power management, cyber security, and network operations demanded will generate lakhs of direct and indirect jobs in India. So I can't find Honorable Member Arun Nehru. Probably I don't need to respond to him, but I was shocked when he said GST rate decision because it's an important question on GST, sir. And for the benefit of the rest of the members also, I will say a few things. Because he says the GST cut was done in September 25, which was intended to create economic buoyancy and increase spending. It did not work as expected. I'm shocked at this observation, particularly coming from a member of parliament from Tamil Nadu, because retail passenger vehicle sales jumped 26.1, the highest ever sales for any February month since after the GST has come in. The Chennai Sriperumbudur Varagadam automobile corridor, stretching 60 kilometers through Kanchipuram and Tiruvallur,
districts, that is called the Detroit of Asia. By this increase in passenger vehicle sales, this region is going to benefit. And didn't the member realize that rural PV sales surged 34%, passenger vehicle sales surged 34%, and urban surged 21%. Second, he also said, sir, I continue my reply, two-wheeler sales rose 25% after September GST Council's decision. Again, Royal Enfield state-of-the-art manufacturing facility is at Varagadam, which is in Tamil Nadu. The jobs are going to be created there because of the increased demand. The motor companies which are in Hosur and Sri Perumbudur are all earning, and they are doing overtime shifts for their workers. This is not going to be unnoticed. As its flagship company, sir, with 28 assembly lines capable of producing up to 4 million bikes a year, that's located in Tamil Nadu. And this has benefited them by the increase and surge in the demand as a result of GST reduction. Similarly, every Jupiter scooty, every Apache bike, and every classic 350 motorcycle which is sold is being bought across India's villages, and that comes from this honorable member's own state. Madurai, again, a production center for tractors, 36.4% increase in tractor purchases. I'm sure the member has just sort of uttered something on my face to say, oh no, nothing happened after GST. I wish he just goes back. And in fact, cement purchase has gone up. Cement production itself has gone up by 9.3%. And my team was surprised but they said, ma'am, Ariyalur is just next door to Honorable Member's Perambalur constituency. Just next to his constituency, cement production has gone up by 9.3%, and Shri Arun Nehruji didn't even know anything about it. And GST collections, ma'am, sir, in December 2025, 6.1% year-on-year increase, that is post the September reduction. January 2026, 6.2% year-on-year growth. February 2026, 8.1% growth year-on-year. And for the current year, 25-26, it's gone to 8.3% growth. So the facts are very different from what he has said, and therefore I would want the member to recognize. And I went further to see how much Tamil Nadu has got out of this GST growth. Sir, December 2025, 8% growth in Tamil Nadu's GST revenue. January 2026, 5% growth after the correction in GST. February 2026, post-settlement of SGST for Tamil Nadu, the revenues have grown 18% year-on-year. Tamil Nadu GST has benefited them post the September reform GST 2.0. So the collection is going up, and the state has benefited by getting more because of the cut in the rate. So again, I'm sorry to concentrate on this one because it's very important to know that some of the allegations, some of the complaints are just sheer baseless. One of the accusations was the government introduced की जाती है। श्रीमान सुनीलाल गरासिया जी। ये लीजिए। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से
सरकार का ध्यान धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से शुरू की गई थी। यह महत्वाकांक्षी अभियान, जिसमें 79,156 करोड़ रुपयों के परिव्यय के साथ देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों के 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गांवों को कवर करते हुए लगभग 5 करोड़ जनजातीय नागरिकों के समग्र विकास का लक्ष्य रखा है। 17 मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों से 25 योजनाओं के माध्यम से सामाजिक अवरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने का प्रयास सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन एवं 25 नए विद्यालयों का शिलान्यास, साथ ही पीएम जनमन के अंतर्गत सड़कों, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं छात्राओं जैसी परियोजनाओं का शुभारंभ जनजातीय क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भी बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय, विशेषकर दक्षिण जिलों जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ में निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संपर्क, पेयजल एवं आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करने की अत्यंत आवश्यकता है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस अभियान के अंतर्गत राजस्थान के जनजाति बहुल क्षेत्रों का प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाए तथा उनके त्वरित प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए, ताकि राज्य के जनजातीय समुदायों को इस महत्वाकांक्षी योजना का पूर्ण लाभ मिल सके। धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, पुरी से चलकर आनंद विहार तक जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस 12,875, 12,876 का उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के अंतर्गत मुगरा बादशाहपुर में ठहराव के संबंध में महोदय, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय रेल मंत्री जी के प्रयास से आज पूरे देश में रेलवे का काम आईने की तरह झलक रहा है। सरकार वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से जनता का दिल जीत लिया है, परंतु हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि विगत 40 वर्षों से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से जुड़े हजारों की तादाद में लोग बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न जिलों में सरकारी तथा प्राइवेट नौकरियां और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। पुरी से चलकर आनंद विहार को जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस का शुभ उद्घाटन 40 वर्ष पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा किया गया था। उसी दिन से जौनपुर जिले के रहने वाले लोगों की मांग रही कि उक्त रेलगाड़ी को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के अंतर्गत मुगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर रोका जाए। यह ट्रेन जौनपुर जिले से गुजरती है, लेकिन लोगों का दुर्भाग्य है कि यह ट्रेन जौनपुर जिले के किसी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती है। जौनपुर जिले के लोगों उड़ीसा के पुरी, भुवनेश्वर, कटक, भद्रक, बालेश्वर में रहते हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल के खड़गपुर, हावड़ा इत्यादि जिलों में भी रहते हैं। इसी तरह झारखंड के पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम समेत चाईबासा इत्यादि इलाके में रहते हैं। इसी तरह बिहार के विभिन्न इलाकों में जौनपुर के लोग रहते चले आ रहे हैं। ये लोग साल में एक बार, 2 बार और कई बार अपने पूर्वजों के गांव जौनपुर को लौटते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इन लोगों को या तो बनारस या फिर पंडित दीनदयाल स्टेशन उतरना पड़ता है। वहां से जनता ट्रेन या फिर पंजाब मेल पर सवार होकर ये लोग अपने पूरे परिवार के साथ जौनपुर जिले के विभिन्न गांवों तक पहुंचते हैं, जिसके चलते इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महोदय, यदि नीलांचल एक्सप्रेस को मात्र 2 मिनट के लिए मुगरा बादशाहपुर स्टेशन पर ठहराव किया जाए तो जौनपुर जिले के रहने वाले देश के इन 4 राज्यों में जहां से रेलगाड़ी गुजरती है उनके जीवन में भी 4 चांद लग जाएगा। जौनपुर जिले के 5वां या 6वां पीढ़ी देश के इन 4 राज्यों में तो रहती है, लेकिन आज तक किसी सरकार ने इनके गंभीर समस्या के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। आज
आशा और विश्वास दोनों परिलक्षित हो रहा है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करती हूं कि नीलांचल एक्सप्रेस का 2 मिनट का ठहराव मुगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर किया जाए। ऐसा हो जाने से जनमानस को बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आज मैं आपका ध्यान धार्मिक शिक्षा की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। भारतीय संविधान की धारा 14 समानता का वादा करती है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अनुच्छेद 29-30 के कारण व्यवहारिक असमानता पैदा हो गई है। आज संवैधानिक व्यवस्था अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30(1) के तहत अपनी पसंद के संस्थान चलाने और धार्मिक शिक्षा देने की पूर्ण स्वायत्ता प्रदान करती है। ये इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हिंदू समाज को इसी मौलिक अधिकार से व्यवहारिक रूप से वंचित रखा गया है। यह आपत्तिजनक है। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम से अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट प्राप्त है, जबकि हिंदू स्कूलों पर ये प्रशासनिक और आर्थिक बोझ अनिवार्य रूप से थोपे जाते हैं। इसी मतभेद के कारण 1980 के दशक में रामकृष्ण मिशन ने पश्चिम बंगाल में अपने स्कूलों को राज्य सरकार के हस्तक्षेप से बचाने के लिए अल्पसंख्यक दर्जा मांगा था। हालांकि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि वे हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है और इसलिए अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आर्य समाज संचालित देवी संस्थान और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को अपने संस्थानों को सरकारी हस्तक्षेप से बचाने के लिए स्वयं को हिंदू से अलग या अल्पसंख्यक घोषित करने का असफल प्रयास किया गया। धार्मिक ग्रंथों के मामले में भी गहरा असंतुलन है। जहां सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे कुरान और मिशनरी बाइबल की शिक्षा दे सकते हैं, वहीं हिंदू संचालित स्कूलों को वेदों या गीता के शिक्षण के लिए धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर उन्हें यह कह दिया जाता है कि सरकारी अनुदान लेने पर वे ऐसा नहीं कर सकते। मेरे वक्तव्य का आशय अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई सुविधा का विरोध न होकर उनकी ही भांति हिंदू शैक्षिक संस्थाओं को अधिकार दिए जाने से है। माननीय सभापति महोदय, अतः समय की मांग है एक देश एक विधान के अंतर्गत शिक्षा में संस्थागत स्वायत्तता सबके लिए हो। अनुच्छेद 29 और 30 में संशोधन कर अल्पसंख्यक शब्द के स्थान पर सभी नागरिकों को शामिल किया जाए। धार्मिक शिक्षा पर प्रत्येक भारतीय का समान अधिकार होना चाहिए, यही धर्म है। शिक्षा के क्षेत्र में समानता, न्याय और संतुलन सुनिश्चित किया जाए ताकि संविधान की मूल भावना सुदृढ़ हो सके। महोदय, यही सच्चे अर्थों में न्याय है, यही संविधान की आत्मा है और यही राष्ट्र के समावेशी विकास का मार्ग है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। धर्म के आधार पर विभिन्नता और मतभेद ये स्वीकार नहीं हो सकता। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस विषय पर चिंतनशील व्यवस्था लागू की जाए। श्रीमान डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। सभापति जी, आपका आभार। मेरा विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से गरीब परिवार के लोगों को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था और वो लागू भी हुआ था। आज की तारीख में स्थिति ये है कि बाजार में दवा 50 रुपये और 500 रुपये के अंतर से मिल रही है। आर्थिक शोषण हो रहा है ये, लेकिन इसका कारण नियमन की कमी। मैं एक बात और उठाना चाहता हूँ कि साल्ट जब एक है तो एक ही साल्ट की एक दवा एक गोली की कीमत 10 रुपये और एक गोली की कीमत 50 रुपये क्यों? काम साल्ट करता है, कीमत नहीं करती। जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत नर्सिंग होम में इलाज कराने जो लोग जाते हैं, वहाँ के चिकित्सक ब्रांडेड दवाई लिखकर और उसमें आयुष्मान योजना का जो राशि है उसमें से छलापहरण करने का काम करते हैं। मेरा ये निवेदन है, एक ही साल्ट और एक ही उसकी कीमत एक की जाए, कंपनियों की मनमानी पर पूर्ण विराम लगे और मरीज को उचित मूल्य पर दवा मिले। इसके लिए सरकार के पास मान्यवर अधिकार भी है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर भी है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो सरकारी संस्था है, दवाओं की कीमत और उनकी मॉनिटरिंग करती है। मूल नियंत्रण के अन्य पहलू भी हैं। नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन के आधार पर जरूरी दवाओं को चिन्हित करके उनके मूल्य को भी नियंत्रित किया जाता है। मान्यवर, मेरा ये आग्रह है, केंद्र सरकार के पास
दवाओं के मूल्य नियंत्रित करने के लिए कानूनी, नीतिगत और प्रशासनिक तीनों अधिकार हैं, तो फिर सरकार की आयुष्मान भारत योजना को पलीता लगाने के लिए जो नर्सिंग होमों से ब्रांडेड दवाएं महंगी हैं और आयुष्मान भारत योजना के पैसे में से कटौती अधिक हो रही है, इसको रोका जाना चाहिए। क्योंकि जन औषधि की कोई दवा किसी नर्सिंग होम में नहीं देते हैं। गरीब को जो सरकार की जो मंशा थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उस मंशा को पलीता लगाने का काम इन कंपनियों से हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इस संबंध में आग्रह करता हूँ। श्रीमती पुला देवी नेतम जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में आवश्यक रेल सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में महोदय, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों को सुदृढ़ रेल नेटवर्क से जोड़ने हेतु पेंड्रा रोड, अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, घसोर, लखनऊ, गोटेगांव, श्रीधाम नई रेल लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। यह रेल मार्ग अमरकंटक, नर्मदा क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ क्षेत्रीय विकास को गति देगा तथा इटारसी जंक्शन के माध्यम से दिल्ली एवं बम्बई जैसे महानगरों से बेहतर रेल संपर्क सुनिश्चित करेगा। महोदय, इसके अतिरिक्त बिलासपुर को CTCE प्लान 2030 में शामिल किया जाए। रायपुर सिकंदराबाद 12,771-72 एवं नागपुर बम्बई दुरंतो 12,290 का विस्तार बिलासपुर तक किया जाए। कोरबा बीकानेर एक्सप्रेस का संचालन शीघ्र प्रारंभ किया जाए। कोरबा स्टेशन की तैयार पिट लाइन को तत्काल चालू करने और कोरबा नई दिल्ली के मध्य नई सीधी ट्रेन की भी आवश्यकता है। अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि इन लंबी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे क्षेत्र का पूरा विकास संभव हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्रीमती रेखा शर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, सर मैं आज सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहती हूँ। केयर गिविंग इकोनॉमी और उसमें महिलाओं की भूमिका जो दिखाई कम देती है, लेकिन देश की असली फाउंडेशन है। सर आज हम विमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने मिशन शक्ति, पोषण 2.0, सक्षम आंगनवाड़ी जैसे प्रोग्राम्स के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। लेकिन सर एक पहलू ऐसा है जो पॉलिसी से ज़्यादा सोशल माइंडसेट से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे ने भी स्पष्ट किया है कि हमारी महिलाएं डुअल बर्डन उठा रही हैं, घर की देखभाल भी और बाहर काम भी। महोदय, यह केवल इकोनॉमिक इशू नहीं है, यह सोच का विषय है। आज भी केयर गिविंग को महिलाओं का नेचुरल ड्यूटी माना जाता है, ना कि वैल्यूएबल वर्क के रूप में। हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और लाखों महिलाएं इस देश की बैकबोन हैं। दे आर बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। लेकिन सवाल यह है, क्या समाज के रूप में हम उनके काम को वह सम्मान देते हैं या उनके जिसके वो हकदार हैं? सर गवर्नमेंट अपने स्तर पर लगातार एफर्ट्स कर रही है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम, चाइल्ड केयर सपोर्ट, विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स, सब पर काम हो रहा है। लेकिन जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक इन एफर्ट्स को फुल इम्पैक्ट नहीं देखा जाएगा। सर मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देना चाहती हूँ। परिवारों में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर गिविंग को बढ़ावा देना होगा। केयर वर्क को वैल्यू और रिस्पेक्ट देनी होगी। आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सिस्टम्स को और स्ट्रेंथन करना होगा। केयर इकोनॉमी को एक डिग्निफाइड और फॉर्मल सेक्टर के रूप में देखना होगा। माननीय सभापति महोदय, जब हम महिलाओं को वर्कफोर्स का हिस्सा बनाने की बात करते हैं और उन्हें भी ब्रेड अर्नर के रूप में देखना चाहते हैं,
तो यह उतना ही आवश्यक है कि पुरुष घर पर बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल में बराबरी के भागीदार बने। यही संतुलन है, यही समानता है और यही प्रगति का रास्ता भी है। धन्यवाद सर। श्रीमान बाग वेंकट सत्यनारायण गारू। Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving me the opportunity. Let me start by observations basing upon one famous Telugu poet from Andhra Pradesh. The words which has been uttered by him is, "Ye dese megina, endukalidina, pogadara nee talli bhumi bharatini, nilupara nee jati nindu gauramu." The meaning of is, whoever the citizen of India, wherever he steps, he has to praise his motherland and he has to keep the decorum and dignity to a maximum extent. But what actually happening today is, the elected representatives who has been taken the oath under the 3rd schedule of the Constitution, bearing true faith and allegiance to the sovereignty and integrity of India, they were almost all acting against the systems when they were abroad on the foreign soil. A person who has been elected from the elected member, especially I would bring the attention to this House regarding to the Congress leader who has been abroad, making a defamatory statement. Anything is objection. Please take this. India. If anything is objection, I will see that it is getting explained. I will look into it if anything is objection. Please stick to your. Yes, please stick to your subject. Please. Where the Constitution, where the democracy is dead, and the Constitution, so making an appeal to the international community, defending the nation's heritage, defending the nation's prestige, I draw the attention to the House. The People's Representation Act in this regard should be amended. The person who should make such kind of comments, he should be declared as disqualified from contesting in the elections and should be banned from the House. I draw the attention to the House to bring certain amendments on the People's Representation Act. If it is objectionable, I will expunge it. Through the concerned House, sir. So these are the observations which are. Please stick to your subject, please. Yes, yes. I will look into it. So far as these were taking it advantage, many of the disciples of the concerned members, they are making the remarks through the social media, defaming the Indian dignity and decorum across the world, creating as if something is happening in India which is against the democracy, which is against the Constitution, and they are asking the international anti-social elements to intervene into the Indian structure and Indian Constitution. So basically these things, I brought the attention to the House to bring certain amendments to the People's Representation Act through you to the concerned government. Very good. Dr. Sikandar Kumar ji, I will look into it. Sir, my topic. You all take your seat, then only I will allow LOP. When you are standing, I am not going to allow LOP to speak. You have to go back to your seat and take your seat, then only I will allow. I write to... No, I am not ordering. Every time they are coming here and they are pressurizing the chair. That is not correct. No, why they are coming? They can raise their voice from their seat. It is a practice from that side. That is... So, yeah. Sir, see, it is 0-1. It is irrelevant to talk about Congress party in this, in his statement. So why he is talking? What is his intention? Who is behind the name? So we condemn this and it should be expunged. I will look into it. I will do the needful. But I already assured you. I am telling I am looking into it and I am do the needful. Sir, please take your seat. Sir, 1 minute, sir. Sir, you have given him permission under 0 hour for concern over increasing instances of influential personalities living abroad. And he's talking about a member of the Lok Sabha. It is against the subject. He's violated your subject. I already told you. You have given him permission. That is what our living abroad. Why you are living abroad.
Now, Honorable Leader of the House, you want to respond? Please take your मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो माननीय सदस्य ने कहा और जो सब्जेक्ट के बारे में कहा, लिविंग अब्रॉड के बारे में, विषय ये है कि हमारे नेता और हमारे लोग विदेश की धरती पर जाकर भारत की संस्थाओं के बारे में प्रश्न उठाते हैं, उस पर उसने कंसर्न शो किया है। लेकिन सच्चाई ये है, जो चीज संवैधानिक और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अंतर्गत नहीं आता है वो आप जरूर एक्सपेंस कीजिए, लेकिन दे नो वेयर द शू पिंचेस, इनको मालूम है कि तकलीफ कहां हो रही है, और तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि वो सच्चाई है। Now, Dr. Sikandar Kumar ji, please. Honorable sir, please. I write We today cannot discuss to bring like to the this. Please notice take your of seat. the I am House looking at it. a matter I am of assuming you I am looking important at it. for the youth of the state of Himachal Pradesh. Garge ji, I am assuring you, I will look into it. I will look into your request. Education to consider upgrading. Please take your seat. I will look into your request. If anything is objectionable, I will expunge it. HPU has been the premier seat of higher learning for the Himalayan region. However, to meet the evolving educational challenges of the 21st century and to ensure regional parity, this transition is now an absolute necessity. Please take your seat. I will look into it. I will look into it. I am telling I am looking at it. I will look into it. The subject. Himachal Pradesh currently hosts 2 central universities. In contrast, Himachal's existing central university in Dera is geographically inaccessible Please take your seat. tribal belts of Kinnaur, Lahaul Spiti and Upper Simla. HPU Simla remains the only accessible hub for these high altitude regions. Himachal Pradesh University currently manages the academic future of over 1.5 lakh students and oversees more than 150 affiliated colleges. The administrative and financial burden of such a vast network is becoming increasingly difficult for the state government to sustain. Central status would provide the institutional framework required to manage this volume efficiently. Due to the sheer limited physical space, HPU faces a significant budgetary deficit. Upgrading it to a central university would ensure 100% funding through the UGC, enabling modernization of laboratories and research facilities and filling of critical faculty vacancies under central pay scales. Establishment of specialized centers for Himalayan ecology, disaster management and glaciology. The lack of a national institute of eminence in the state capital forces our brightest students to migrate to Delhi or Chandigarh. Elevating HPU will provide world-class education at their doorstep, fostering local talent for national development. Speaker, sir, in light of the National Education Policy 2020, which emphasizes equitable access to high-quality education and aim for an Atmanirbhar Himachal, we must first empower its primary seat of learning. I once again request the Ministry of Education to initiate the process of upgrading at University Simla to a central university to bring it at par with the educational standards seen in Jammu and Kashmir and other Himalayan regions. Thank you. Shriman Sajat Ahmed Kichlu ji. ऑनरेबल चेयरमैन साहब शुक्रिया। मैं जम्मू कश्मीर के 2 अहम रीजन्स चिनाब और पीर पंचाल की बात मुअज़्ज़ज़ ऐवान में रखना चाहता हूँ। दोनों रीजन्स पसमानदा पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में फैले हुए हैं। चिनाब रीजन जिसमें किश्तवाड़, डोडा और रामबन के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, चिनाब की कुल आबादी तकरीबन 15 लाख के करीब है और तकरीबन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। चिनाब एक पहाड़ी रीजन है और इसी तरह पीर पंचाल रीजन में राजौरी और पुंछ के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जहां की आबादी तकरीबन 17 लाख के करीब है और ये रीजन भी तकरीबन 8,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। चिनाब रीजन आज पूरे मुल्क के लिए हाइड्रो पावर का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है और वहाँ पावर प्रोजेक्ट के जरिए कई हज़ार मेगावाट बिजली जो है वो पैदा हो रही है।
और मजीद कई पावर प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है। लेकिन जब हम ज़मीनी हालात को देखते हैं, चुनाव जहां से हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा होती है, वहां कई गांव ऐसे हैं जो आज भी बिजली से महरूम हैं। हमारे कई इलाके ऐसे हैं जहां सेकेंडरी लेवल की तालीम से हमारे बच्चे आज भी महरूम हैं। हमारे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है और हमारी सड़कों का वो हाल है कि हर रोज़ कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में मासूम लोगों की जानें जाती हैं। जनाब वाला, पिछले 13 बरस में ना ही कोई नया स्कूल खोला गया है और ना ही कोई अस्पताल खोला गया है। हमारे रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है। चुनाव और पीर पंचाल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जबकि हुकूमत की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो हर रीजन को यकसा तरक्की के लिए उनको तरक्की के मौके फराहम करें। जनाब वाला, आज चुनाव और पीर पंचाल के लोग ये डिमांड करते हैं कि वो उनको हिल डेवलपमेंट काउंसिल का दर्जा दिया जाए। और जनाब वाला, हमारे मुल्क में आईनी तौर पर पहाड़ी और दूर दराज इलाकों के लिए की खुसूसी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए कई मिसालें कायम की गई हैं। आसाम, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट की कई जगहों पर हिल डेवलपमेंट काउंसिल दिए जाने के बाद ही तरक्की मुमकिन हुई है। इसी तरह लेह और कारगिल में हिल डेवलपमेंट बनने के बाद ही तरक्की और फैसला साजी मुमकिन हुई है। जनाब वाला, मैं आपकी वसादत से हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करता हूँ कि चुनाव रीजन और पीर पंचाल रीजन को हिल डेवलपमेंट काउंसिल देकर वहाँ के लोगों की उस जायज़ मांग को पूरा किया जाए। ये इकदाम सिर्फ चुनाव और पीर पंचाल रीजन की नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को श्रीमान सुभाषिष कुंडिया जी मुस्तकबिल के लिए जय जगन्नाथ। Thank you, Chairman sir, for giving me the opportunity to raise a matter of great national importance regarding the establishment of a dedicated yoga university in Puri, Odisha. सबसे पहले उत्कल दिवस के अवसर में मेरे तरफ से और ओडिशा वासी के तरफ से आपको और सभी मान्यवर सांसद को मैं शुभेच्छा और अभिनंदन ज्ञापन करता हूं। सर, पुरी इज नॉट just a city, it is one of the India's most revered spiritual center. This sacred land has for centuries nurtured traditions of spirituality, discipline and historic living that resonate deeply with the philosophy of yoga, sir. India has contributed immensely to the world in science, medicine, culture and heritage, and one of its greatest gifts is yoga. Practiced since ancient times, yoga has now spread across the globe and emerged as a powerful means of promoting physical health, mental well-being and inner balance, truly reflecting the idea that health is wealth, sir. Yoga today enjoys global recognition, particularly after the adoption of the International Day of Yoga. However, to sustain this momentum, there is a need to strengthen research, expand academic engagement, and encourage greater participation of students and teachers, sir. There are about 25 yoga universities and more than 430 yoga colleges in our country. And Odisha, which has been one of the pioneers in maintaining the Indian knowledge system, is in need to have one university which can help in spreading the knowledge and popularity of yoga. Sir, establishing such an institution in Puri would strengthen India's soft power, promote wellness tourism, generate employment, and create a global center for yogic learning, sir. Sir, this university would also serve as a center for scientific inquiry, integrating sports medicine, mental health, and lifestyle disease management. I urge the government to take immediate steps to establish a yoga university in Puri befitting its spiritual heritage and national importance. If yoga is India's message to the world, Puri must become its global classroom. Jai Jagannath, Bande Utkal Janani. Srimati P.T. Usha ji. Chairman sir, I rise today with a deep sense of responsibility to speak about community that has preserved our heritage with devotion, discipline and silent sacrifice, the performance of Teyyam.
Coming from Kerala, I have closely witnessed the spirit behind the Sacred Heart. In regions like Kannur, Kasaragod and Kozhikode, Theyyam is not merely a performance. It is a faith, it is an identity and living tradition passed down through generations. But behind these vibrant costumes and divine rituals lies filled with the struggle. Most Theyyam artists belong to economically weaker sections and their livelihood depends on short seasonal window. For the rest of the year, they face uncertainty, financial hardship, lack of healthcare and limited opportunities for their families. As someone who has risen from humble beginnings, I understand the value of support, opportunity and dignity. These artists deserve not sympathy, but security, recognition and respect for the noble endeavor they undertake with devotion. The time has come to move beyond towards and take meaningful action. I humbly urge the government to consider a dedicated welfare fund for Theyyam performers, a monthly pension scheme for aged and retired artists, off-season financial assistance to ensure livelihood stability, comprehensive health insurance, considering the physical risks they endure, educational support for their children, including opportunities for higher education and entrepreneurship. These are not merely proposals, they are essential intervention to protect a living cultural heritage of our nation. At the same time, I would like to emphasize that similar traditional and folk artists across different states of India who preserve their unique cultural expressions with equal dedication face the same challenges of financial insecurity, lack of social protection and limited recognition. As we move forward in this Amritkal towards building a Vikasit Bharat by 2047 under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, it is our collective responsibility to ensure that development is not only economic but also cultural, where every artist, every tradition and every voice valued and protected. In this context, I would like to recall a timeless Sanskrit verse, Sanskriti Rashtrasya Atma. Culture is the soul of nation. Honorable Chairman, sir, at this moment I would also like to remember Sorgiya Anup Nittur from Nadapuram in Kozhikode, a gifted Theyyam artist of Malabar who tragically lost his life in the Western Ghats while striving to protect nature. His life reminds us that these artists are not merely performers. They are guardians of culture, protectors of nature, and symbols of resilience. Let their sacrifice not go unnoticed. Thank you, sir. श्रीमान मुजिबुल्लाह खान जी। आज उत्कल दिवस हमारा है। उत्कल दिवस के अवसर पर आप बोलने का मौका दिए अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, इतिहास में कुछ नाम लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जो इतिहास लिखते हैं, और वो नाम है बीजू पटनायक का। बीजू बाबू जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, कटक में एक ब्रिटिश एयरवेज का विमान उतरा था। वो जाके विमान को जैसा छू दिए, पुलिस वाला कोई डंडा मारा उनको। बीजू बाबू ने कहा, तू मेरे को डंडा मारा, मैं यही प्लेन को उड़ा के दिखाऊंगा, और वो अपना जिद पूरा करके पायलट बने अध्यक्ष महोदय। वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनका कलिंगा एयरलाइंस था, पहला कलिंगा एयरलाइंस भारतवर्ष में, और एयरलाइंस किसी का नहीं, कलिंगा एयरलाइंस था, प्राइवेट एयरलाइंस। लेकिन बीजू बाबू एक ऐसे राजनेता थे, अपना एयरलाइंस को बिक्री कर दिए, अपना इंडस्ट्रीज को बिक्री कर दिए और राजनीति कर रहे हैं। आजकल के राजनेता का हिसाब में नहीं है। बीजू पटनायक अपना सब बेच के राजनीति कर रहे हैं। बीजू बाबू महात्मा गांधी के जब बुलावा आया, असहयोग आंदोलन, ये सब आंदोलन जब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, वो राजनीति में गए और स्वाधीनता सेनानी में भाग लिए, स्वाधीनता संग्राम में भाग लिए। जब ब्रिटिश एयरवेज के पायलट थे, हमारे स्वाधीनता सेनानियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाके पहुंचाया करते थे। जब इंडोनेशिया का मुसीबत आया, वो इंडोनेशिया का नेता शाहरियार को वहां से उठा के लाए, वो जान जोखिम में डाल के उठा के लाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त रशियन हमारे देश का मित्र है, उनको भी मदद किए। जब हमारा देश स्वाधीन हुआ, उसके बाद जब पाकिस्तान घुसपैठी हमारे देश में घुसने का कोशिश किए, तो वही बीजू पटनायक थे जो अपने प्लेन में खुद पंजाब रेजिमेंट को श्रीनगर में ले जाके उतारे अध्यक्ष महोदय। इसी के कारण आज हमारा देश सर ऊंचा करके कहता है कि कश्मीर हमारा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे नेता को जो स्वाधीनता सेनानी थे,
जो बहुत बड़े नेता थे, जिनके निधन के बाद 3 दिन देश का झंडा उनके ऊपर बिछाया गया था, रशिया, इंडोनेशिया और भारतवर्ष का, ऐसे नेता को आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं इस सदन से, हमारे उड़ीसा के मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे भाई हैं, उनसे निवेदन करता हूं, अब सरकार को बोल के कम से कम इतना तो करा दीजिए। बिजू बाबू को भारत रत्न का हक है, पूरा हक है। अध्यक्ष महोदय, मेरा डिमांड है, जब मैं पहली बार आया था, पहला और 0 आवर बोला था, तब भी ये डिमांड किया था, और मेरा आखिरी 0 आवर में भी यही डिमांड कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से। जय बिरसा, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आज एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर बोलने के लिए आप मुझे अनुमति दिया। जो हमारा भारत के नेशनल ट्राइबल लीडर, ग्रेट फ्रीडम फाइटर, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करता हूं। महोदय, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ और 1875 से 1900 तक, 9 जून 1900 तक, वो 25 साल की उम्र में ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी, उलगुलान का टकरा दिया था हमारे भारत देश में। वो प्रथम आदिवासी नेता थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ और जमींदारी शोषण और बेटी बेगारी के नाम पर जो जबरदस्ती श्रम के खिलाफ ऐतिहासिक उलगुलान दिया, महाविद्रोह का नेतृत्व लिया। और उनका आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये आदिवासी की जमी, जल, जंगल की सुरक्षा, आदिवासी की भाषा, बोली, धर्म, संस्कृति की सुरक्षा, आदिवासी की कस्टम, ट्रेडिशन की सुरक्षा, उसके लिए भगवान बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ी। उसके नेतृत्व में सारे आदिवासी, सबर हो, गौंड, मुंडा, भूमिज, सब एकजुट हुए। वो बिरसा मुंडा ने आदिवासियों की आत्मसम्मान जगाया और उसका जो उलगुलान था, आबुआ दिसुम आबुआ राज, आवर लैंड आवर रूल, आबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना, एंड ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम एंड एस्टेब्लिश इंडिजिनस सेल्फ रूल, आवर लैंड आवर गवर्नेंस, ये बिरसा मुंडा का उलगुलान था महोदय। तो ऐसे क्रांतिकारी नेता हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा, उसको आज तक मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया। इसीलिए वो जो बिरसा मुंडा 20 साल की उम्र में 1895 से 1900, ये 5 साल में उसका जो लड़ाई थी, उसका जो आंदोलन था, उसका जो विद्रोह था, वो ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था। तो महोदय, उसका बिरसा मुंडा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1908 को छोट नागपुर टेनेंसी एक्ट किया। श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे आज शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। आज देश में लगातार बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत का अत्यंत गंभीर मुद्दा मैं यहाँ उठाना चाहती हूँ। आम नागरिक, विशेषकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग अभूतपूर्व आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों पर लगातार वृद्धि हो रही है। दाल, सब्जियां, तेल, दूध जैसी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं आम आदमी के पहुंच से बाहर हो रही है। इसके साथ ही रसोई गैस के दामों की वृद्धि ने घरेलू बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों ने परिवहन लागत बढ़ाई है, जिसका सीधा असर हर एक वस्तु के दाम पर होता है। स्थिति यह है कि आम परिवार क्या स्थिर है, लेकिन खर्च लगातार बढ़ा जा रहा है। लोगों को अपनी बचत खत्म करनी पड़ रही है। कई परिवार कर्ज लेने के लिए मजबूर हो रहा है। यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता को ये बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए हमें मजबूर होकर आपको यहाँ बोलना पड़ता है।
दूसरी ओर बेरोजगारी की स्थिति भी अत्यंत चिंताजनक है। युवा वर्ग जो देश का भविष्य है, रोजगार के लिए भटक रहा है। शिक्षित युवा भी उचित अवसरों के अभाव से बेरोजगार है या फिर अस्थायी या कम वेतन वाले कार्य करने को मजबूर होते हैं। रोजगार के अवसरों में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है, जिसका निराशा और असुरक्षा का माहौल बना जा रहा है। सर, हाल ही में हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने कल ही बोला केरल में कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। ये जब बाहर के देश की बात करते हैं, मैं यहाँ देश में जो उन्होंने बोला उसके लिए उनका जिक्र आकर्षित करना चाहती हूँ। उन्होंने बोला कि केरल में जाके कि भूचाल आने वाला है देश में। इसी तरह से उन्होंने कोरोना महामारी के लिए भी चेतावनी दी थी। उसी तरह उन्होंने नोटबंदी के टाइम पे भी बोला था, न केवल वहाँ पर, लेकिन जब गलत जीएसटी लागू किया तो भी उन्होंने बोला था। उनके तरफ गंभीरता से नहीं लिया गया। तब राहुल जी को गंभीरता से नहीं लिया गया और सिर्फ कटाक्ष करने के लिए अगर उनका नाम लेते हैं तो हम उसका घोर निंदा करते हैं। मैं एक आग्रह करती हूँ अंत में, पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय और राज्य करों में कमी करके परिवहन के लागत घटाई जाए, जिसमें वस्तुओं के दाम कम हो। दाल, खाद्य तेल, सब्जियां जैसी वस्तुओं का बफर स्टॉक माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों की स्थगन की सूचना प्राप्त हुई है। श्री मुरारी लाल मीणा, वीरेंद्र सिंह, श्री मनीष तिवारी जी, डॉक्टर प्रशांत यादव पडोले, राजेश रंजन, के राधाकृष्णन, एबी इडन, के सुरेश, बेनी बैनन, एडवोकेट के जार्सी जॉर्ज, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, एम के राघवन, हनुमान बेनीवाल, सोगत राय। आपका नाम तो लेना ही पड़ेगा ना, आप सबसे वरिष्ठ नेता हैं सुरेश जी, वेरी इंपॉर्टेंट। हंगामा नहीं करते तो देता। मैंने कहा था कि हंगामा मत करो, आपको
12 बजे शून्यकाल में जवाब दूंगा, लेकिन मणिकम टेगोर जी ने कहा कि हम तो मैंने आज स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी है। सदन में सबको मौका मिले, पर्याप्त अवसर मिले, लेकिन अब मैं जो देख रहा हूं, जो सदस्य केवल बोलने आते हैं और बोलने के बाद चले जाते हैं, मैं नोट कर रहा हूं, उनको मौका नहीं मिलेगा। निशिकांत जी सबसे लंबे बैठते हैं। क्या कह रहे हैं आपके लिए कि सदन भी स्थगित आप ही कराते हैं। सबको मौका मिलेगा, सदन आप सबका है। सदन चर्चा, संवाद, सहमति असहमति का हमारा लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था है और इसमें विचारों के दृष्टिकोण सबके मत आते हैं, उतना ही लोकतंत्र सशक्त होता है और देश आगे बढ़ता है। इसलिए सबको मौका मिलेगा। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यवली की सूची नंबर क्रम संख्या 2 के आगे मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आइटम नंबर 3 श्री रवनीत सिंह बिट्टू। Respected Speaker Sahab, with your kind permission, I raise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Thank you, sir. तो ये बिट्टू आपका सरनेम लिखा हुआ है कि रवनीत सिंह ही है? लिखा हुआ है सर। लिखा हुआ है। आइटम नंबर 4 श्री जगदम्बा पाल जी। इस उम्र में जगदम्बा पाल जी 75 वर्ष की उम्र में सबसे सक्रिय सदस्य है ना। धन्यवाद। अरे क्या तो तालियां बजा रहे हैं आपके लिए। सर, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2025-26 के प्रतिवेदन संख्या 39, 40, 41, 42, 43 और 44 के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण को प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री जगदम्बा पाल जी। With your kind permission, sir, I rise to lay on the table a statement showing the final action taken by the government and the recommendations contained in the reports of the Public Accounts Committee as listed against my name at serial number 5 in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 6 किसी भी विषय पे कभी बुला लो। हाँ, और एक और सदस्य है जो किसी विषय पे किसी बुला लो लिख के लाएगा सही। आइटम नंबर 6 श्री रिस्पेक्टेड हर्ष मल्होत्रा। विषय की जानकारी भी नहीं होती तो भी बोलता है। Respected sir, with your permission, I rise to correct the parts A to D given in the answers to unstarred question number 1088 in the Lok Sabha on the 5th February 2026 regarding Ganga Expressway. आइटम नंबर 6A नित्यानंद राय। नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। नित्यानंद जी मेरे मित्र पर अटेंशन रहा करो। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुनर्स्थापित करें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक प्रस्थापित करता हूँ। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 8 श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं। वित्त अधिनियम 2002 की धारा 147 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 3 खा के अनुसरण में यह सभा दिनांक 26 मार्च 2026 की अधिसूचना संख्या 7/2026 केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जिसका आशय वित्त अधिनियम 2002 की 8वीं अनुसूची का संशोधन करना है, ताकि एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF HS 2710 पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जा सके और ATF पर 50 रुपया प्रति लीटर की दर निर्धारित की जा सके, का द्वार अनुमोदित करती है। बोलिए जावेद जी। सर, ये जो 50 रुपया बढ़ाने की बात है सर, ये इसके बहुत गंभीर रिपरकशंस होंगे प्राइसेस पे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर इस पे डिबेट हो। शुरू से हमने 9 तारीख से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ये जो वॉर हो रही है बड़ी गंभीर समस्या ला रही है सर। क्यों में 2 लोग अभी तक मर चुके हैं सर, LPG की कमी हो रही है। तो इस पे अगर चर्चा करने का मौका दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। 2 घंटा ओके सर, 2 घंटा आप दे देंगे तो सबकी बातें आ जाएंगी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में सांविधिक संकल्प स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने से पहले यदि सदन की सहमति हो तो इस पर 1 घंटा चर्चा कर लें। 2 घंटे 2 घंटे कर लेते हैं। आजकल मणिकम जी ने संभाल रखा ना मोर्चा, इसलिए 1 घंटा करते हैं, फिर आगे देखते हैं। आगे देख लेंगे, 2 घंटे कर देते हैं। सदन की सहमति 2 घंटे की है तो 2 घंटे कर देते हैं। सदन तो सर्वसम्मति से चलता है। माननीय मंत्री जी। गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। मणिकम जी बोलना चाहते हैं आप भी कोई विषय बोल लेते हो। Sir, Honorable Speaker, sir, I rise today on the behalf of Indian National Congress to speak for the people of Andhra Pradesh, a state that has waited with patience, dignity and hope and justice that is long overdue. At the very outset, sir, let me be very clear. We support this bill and affirms Amaravati as the capital of Andhra Pradesh. A state cannot progress without certainty. A governance cannot function without a fixed center. Investment cannot flow without clarity. But, sir, while we support the bill, we must also speak the full truth, sir. The bifurcation under the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 fundamentally altered the economic structure of the state. Telangana retained Hyderabad, a thriving economic hub, and Andhra Pradesh has to get a capital, a strong institutions and revenue gathering infrastructure. It had to rebuild from this level, sir, and that's why Parliament made binding commitments. What the law promised, the Reorganization Act promised. Under Section 94, sir, the centre shall provide special financial support for the capital. It shall provide tax incentives for industrialization. Sir, it will not provide loans, it will provide for special support.
it shall support backward regions. These are all not political statements, sir. These are all legal obligations. Both the parties, as well as the Indian National Congress Party, as well as BJP, has accepted in that time that we stand by that obligations. Reality today, sir, more than a decade later, where is the full funding of Amaravati? Where are the tax incentives? Where is the industrial push? Instead, we see delay, dilution, and neglect. Why Amaravati matters, sir? Amaravati is not just a capital, sir. It is the aspirations of crores. Farmers gave land, people trusted the system. The state believed in parliament. Amaravati must be built not in fragments, sir, but a world-class capital. Sir, I want to remind this house of Mrs. Indira Gandhi. She built institution that transformed Andhra Pradesh. In Vizag, strengthening of Vizag Port Trust, establishment of RINL, industrial base creation. In Vijayawada, irrigation support for Prakasham Brigade, agriculture growth, trade and connectivity. In Tirupati, strengthening of TD, expansion of Sri Venkateswara University and pilgrimage infrastructure. Sir, after Indiraji, another leader who carried forward the legacy was Dr. Manmohan Singh and Dr. Y.S. Rajshekar Reddy. Their governance rooted in inclusive development and welfare with infrastructure. In Visakhapatnam, Dr. Reddy, in YSR's time, expansion of industrial corridors, strengthening of port-led government, boost to IT and pharma sectors, infrastructure growth, and that made Vizag a modern urban hub. In Vijayawada, massive push to irrigation under Jalal Yagam projects, stabilization of Krishna Delta agriculture, strengthening of road and railway connectivity, urban development, and enhanced its commercial importance. And in Tirupati, expansion of pilgrimage infrastructure, development of roads and public facilities. Sir, now it seeks boost to tourism, support to education and health institutions. But beyond these cities, sir, Dr. YSR's contribution, greatest contribution was Jal Yagalam, a large-scale irrigation projects, Arogyashri, healthcare access for poor, free reimbursement of fees for empowering the youth. YSR proved that development must be inclusive and not selective. The contrast today, sir, the Congress vision was clear: build institutions, invest in infrastructure, empower people. Today we see announcement without delivery, promises without funding, plans without execution, sir. Special category status, the core demand still is pending, sir. The biggest injustice remains the denial of special category status, which was promised in the parliament, assured by the then Prime Minister in the floor of the House. Special category status means higher central funding, tax incentives, industrial growth, job creation. Without that, Andhra Pradesh is competing unfairly with other states, sir. Impact on people. Because of the denial, industries are hesitant, youth migrates, growth slows, inequality rises, sir. This is not just a policy failure, this is injustice, sir. Our position, let me be very clear, we support Amaravati as a capital, but we will not remain silent on injustice to Andhra Pradesh. Our demands remain: 1. Full funding of Amaravati as national project. 2. Implementation of Section 94 in letter and spirit. 3. Immediate grant of special status, category status to Andhra Pradesh. 4. Industrial incentives and industrial investments. Final words, sir. Andhra Pradesh trusted this parliament, sir. It gave up its capital. It accepted bifurcation. It believed in promises. Now it seeks justice, sir. Let Amaravati rises like Vizag or Hyderabad. Let development flows like Bangalore prospered. Let growth expand to Tirupati, Vijayawada and Vizag, sir. And let the union government act with the same commitment shown by those previous prime ministers, sir. We support this bill, but we demand accountability, we demand justice, we demand special category status, sir. Thank you, sir. Very good. P. Chandrasekhar. आपकी लोकसभा भी अमरावती है ना? ये लोकसभा अमरावती है. Sir, today I would like to speak in Telugu, sir, my native language, because this is a historic and an emotional moment for all
ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్. సభాధ్యక్షులకు, సహచర సభ్యులకు ఈ ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాన్ని ఉత్కంఠంతో, ఉద్విగ్నంతో వీక్షిస్తున్నటువంటి అశేష తెలుగు ప్రజానీకానికి, మా అమరావతి ఆత్మ బంధువులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఆంధ్రుల కలల రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తూ అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఏకైక రాజధాని అని ప్రస్తావిస్తూ దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా రాజధానిని నిర్మించే ఈ చారిత్రక ఘట్టంలో అమరావతి బిడ్డగా ఈ సభలో ప్రసంగించటం నాకు అదృష్టంగాను గౌరవంగాను భావిస్తున్నాను. ముందుగా తరతరాలుగా సాగు చేస్తున్న భూమిని రాజధాని నిర్మాణం కోసం త్యాగం చేసిన రైతన్నలకు వందలాది రోజుల దీక్షతో శాంతియుత ఉద్యమం చేసిన మహిళామ తల్లులకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సార్, కృష్ణానది ఒడ్డున, ఆంధ్రప్రదేశ్ నడిబొడ్డున ఉత్తర దక్షిణ ప్రాంతాలకు సమాన దూరంలో 3000 సంవత్సరాల నాగరికతకు నిదర్శనం ఈ అమరావతి. శాతవాహనుల సామ్రాజ్యానికి సాక్ష్యం ఈ అమరావతి. సంస్కృతి, శాంతి, విజ్ఞానానికి యుగయుగాల నిలయం ఈ అమరావతి. బౌద్ధ స్తూపాలు, శిల్పాలు, శాసనాలతో విరాజిల్లినటువంటి పవిత్ర భూమి ఈ అమరావతి. అలాంటి అద్భుతమైన ప్రాంతాన్ని ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా, ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగని విధంగా, ఎవరిని నొప్పించకుండా, ఎవరిని కదిలించకుండా 60 రోజులలో 29,000 రైతుల స్వచ్ఛంద భాగస్వామ్యంతో 34,000 ఎకరాల భూమిని సేకరించి అమరావతి అభివృద్ధికి అంకురార్పణ చేసినటువంటి శక్తి, వ్యక్తి, నమ్మకం మా ముఖ్యమంత్రి శ్రీ గౌరవ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. సార్, ఈ నమ్మకం ఒక్క రోజుతో వచ్చినటువంటి నమ్మకం కాదు. 40 సంవత్సరాలుగా ఒక సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రయాణంలో ఇటుక పేర్చుకుంటూ పొద్దున లెగిసిన దగ్గర నుంచి పండుకునే వరకు ప్రజా సంక్షేమమే పరమావధిగా తన పూర్తి జీవితాన్ని త్యాగం చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తిపై ఉన్నటువంటి నమ్మకమే ఈ అమరావతి. సార్, ఆ వ్యక్తిని నమ్మి, రాష్ట్ర హామీని నమ్మి ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని వస్తుందని తమ పూర్వీకుల జీవనాధారాన్ని అక్కడ రైతులు వదులుకున్నారు. సార్, 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ జరిగినటువంటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసి ఊరు తిరిగి ఈ ప్రాంతం చిన్న ప్రాంతం, ఇక్కడ 3 రాజధానులు సరిపోవు, ఈ అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంకా అద్భుతంగా ముందుకు తీసుకువెళ్తానని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చారు. సార్, అయితే అలాంటి మహాయజ్ఞాన్ని అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత అధికార వికేంద్రీకరణ పేరుతో 3 ముక్కల రాజధాని అనే పేరుతో ప్రజలను మభ్యపెట్టి 5 సంవత్సరాల అమూల్యమైనటువంటి కాలాన్ని, ఆంధ్ర ప్రజల భవిష్యత్తుని కూడా వృధా చేశారు. సార్, 3 ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టారు. సార్, నేను ఇక్కడ చాలా బాధతో కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నాను. ఇది రాజకీయ విమర్శ కాదు. సార్, 29,000 మంది రైతులకు జరిగినటువంటి అన్యాయం, అవమానం గురించి మాట్లాడాలి. సార్, ఆ రైతులని పెయిడ్ ఆర్టిస్టులని పిలిచారు. సార్, ఈ సభలో ప్రస్తావించలేని వ్యాఖ్యలతో మహిళలను ఇబ్బందులకు గురి చేశారు. వారిని చూసి నవ్వారు. అమరావతిని మర్చిపోమ్మన్నారు. 30-40 సంవత్సరాలు తన భూమిలో పంటలు పండించిన రైతులు వారి గ్రామాల్లో తిరగటానికి ఐడి కార్డులు చూపించమన్నారు. సార్, 144 సెక్షన్ అమలు చేసి వారి స్వేచ్ఛను అడ్డుకున్నారు. సార్, ఈ బాధ ఇక్కడితో ఆగలేదు. న్యాయస్థానం నుండి దేవస్థానం వరకు 45 రోజులు మహాపాదయాత్రలో రైతులను అమానుషమైనటువంటి హింసకు గురి చేశారు. మేకులతో ఉన్నటువంటి లాఠీలతో వారిని కొట్టారు. సార్, గర్భిణీ మహిళలపై బూట్ల కాళ్లతో తన్నారు. ఆఖరికి మహిళా దినోత్సవం రోజున ఆలయానికి వెళ్ళినటువంటి మహిళలపై కూడా దాడి చేశారు. సార్, వారి భోజనంలో ఇసుక వేశారు.
అయినా కూడా వారు ఎక్కడా కూడా వెనకడుగు వేయలేదు. రోడ్లను శుభ్రం చేసి వీధుల్లోనే భోజనం చేశారు సార్. ఆఖరికి ప్రశ్నించిన మీడియాని కూడా వారిపై కేసులు పెట్టారు. ఇది సార్, ఇది 1631 రోజులు జరిగినటువంటి అమరావతి వ్యధ కథ అని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. అయితే ఆ రోజు వారు ఆ తల్లుల కన్నీళ్లే ఈరోజు ఈ చట్టానికి పునాది రాళ్లుగా మారుతున్నాయని వారు గ్రహించలేకపోయారు సార్. ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వాన్ని కానీ అప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారిని కానీ ఈ చరిత్ర ఎప్పటికీ మర్చిపోదు సార్. ఈరోజు ఒక రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే రాజధాని అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది సార్. కర్ణాటక ప్రాంతంలో బెంగళూరు అనేది 50% ఆర్థిక వాటాను, తమిళనాడులో చెన్నై 40% ఆర్థిక వాటాను, తెలంగాణలో హైదరాబాద్ 55% ఆర్థిక వాటాను అందిస్తూ కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నారు సార్. అదే ఆంధ్రప్రదేశ్కు మీ రాజధాని ఏది అంటే చెప్పుకోలేని అవమానంతో గత ప్రభుత్వంలో ఆంధ్రలో ప్రజలు జీవించారు సార్. ఇప్పుడు నిర్మించబోయేటువంటి అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రధాన కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకొని రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఒక గ్రోత్ ఇంజిన్ గా కూడా మారబోతోంది సార్. సాధారణంగా అభివృద్ధి అంటే భూసేకరణ పరిహారం మాత్రమే. आप भी ध्यान रखना जो सदन के सदस्य नहीं हो तो आप पूर्व के विषय को नाम मत लो और रख दो. आप भी मत लेना, ये भी नहीं लेंगे. चलिए. సార్, కానీ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక పేద రైతుని భాగస్వామ్యం చేసి ఆర్థిక అభివృద్ధిలో వారిని కూడా ముందుకు తీసుకువెళ్ళేటువంటి మార్గం ఈ అమరావతి దేశానికి చూపించింది సార్. 2014 ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ఆ రోజు రాష్ట్రానికి ఒకే రాజధాని ఉండాలని నిర్దేశించింది సార్. అయితే ఆ సమయంలో ఆ రాజధాని ప్రాంత పేర్కొనకపోవటం వల్ల చట్టపరమైనటువంటి అనిస్థితి రాష్ట్రంలో రాజకీయ అస్థిరతకు దారితీసింది. ఈ విషయంపై హైకోర్టుకి రాజధాని రైతులు వెళ్ళినప్పుడు 2022లో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఫుల్ బెంచ్ ఒక స్పష్టమైన తీర్పునిచ్చింది. రాష్ట్ర రాజధాని నిర్ణయించటం లేదా మార్చటం వంటి అధికారాలు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ పరిధిలోకి రావని, ఆ అధికారం కేవలం పార్లమెంటుకు మాత్రమే ఉందని స్పష్టం చేసింది. దాని ఆధారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కేబినెట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి అని ఏకంగా తీర్మానం చేసింది. అధ్యక్ష, పెట్టుబడి మరియు అభివృద్ధి అనేది ఒక కీలకమైన అంశంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. సర్టనిటీ, స్టెబిలిటీ అనేది కావాలి. పెట్టుబడిదారులు గందరగోళంలో పెట్టుబడి పెట్టరు. బ్యాంకులు, అంతర్జాతీయ సంస్థలు రాజకీయ అస్థిరత్వానికి రుణాలు ఇవ్వవు సార్. ఈరోజు దాదాపు 56,000 కోట్ల రూపాయలతో 91 అత్యంత ముఖ్యమైన మౌలికమైన ప్రాజెక్టులు అమరావతి నిర్మాణంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి సార్. హడ్కోలో 11,000 కోట్ల రూపాయల రుణం, ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిపి 15,000 కోట్ల రూపాయల సహాయాన్ని ఈరోజు అందిస్తూ ఉన్నాయి సార్. అదేవిధంగా క్వాంటమ్ వ్యాలీతో చరిత్రకు అమరావతి స్వాగతం పలుకుతుంది సార్. ఇవన్నీ జరిగినప్పటికీ అందరి మనసులో ఒకే ఒక ప్రశ్న, అమరావతి శాశ్వత రాజధానిగా ఉంటుందా అనేది ఉండేది సార్. అయితే ఈ చట్ట సవరణతో ఆ అనిశ్చితి తగ్గి అభివృద్ధి వేగం జరగబోతా ఉంది. రాజధానులు అనేది ఎన్నికల కోసం కాదు సార్, తరతరాల కోసం నిర్మించబడతాయి. ప్రభుత్వాలు మారినా కూడా విధానాలు ఏకపక్షంగా మారకూడదు. ఈ విధంగా ప్రభుత్వాలు ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే ప్రజల పట్ల కానీ, పార్లమెంటు పట్ల కానీ, ప్రజాప్రతినిధుల పట్ల కానీ ఒక విశ్వాసం వస్తుంది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన విధంగా నేను అనేక మంది వ్యక్తులకు కృతజ్ఞతలు తెలపాలి సార్. మొట్టమొదటిసారిగా గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానికి కేంద్ర మద్దతు ఇవ్వాలన్న ఆయన హామీపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంది. మోదీ గారు ఇచ్చిన మాట నిలబెడతారని గత 12 సంవత్సరాలుగా ఎన్నోసార్లు నిరూపించబడింది. అదే ఈరోజు ఆ విశ్వాసం మరొక్కసారి రుజువైంది సార్. రెండవది, మా ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమరావతి ఆయన ఆశయం, ఆయన కళ, ఆయన ధ్యేయం. రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో రైతులను భాగస్వాములుగా మార్చిన ఆయన దూరదృష్టి చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. ల్యాండ్ పూలింగ్ విధానం, ప్రపంచ స్థాయి ప్రణాళిక, ఇవన్నీ వారి నాయకత్వానికి నిదర్శనం సార్. ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా,
ఎన్ని పరీక్షలు ఎదురైనా అమరావతి అనే స్వప్నాన్ని ఒక్క క్షణం కూడా పట్టు వదలని సంకల్పం ఆయనది సార్. మూడవ వ్యక్తి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తన గళంతో తన శక్తితో ప్రజా ఉద్యమ స్ఫూర్తిని నింపి కూటమి ఐక్యతకు తెలుగు ప్రజల అభివృద్ధికి కంకణబద్ధుడైనటువంటి నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సార్. ఈ ముగ్గురి కలయిక అమరావతి ఆశయానికి ఒక శక్తి, తెలుగు వారి భవిష్యత్తుకు ఒక భరోసా సార్. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకువచ్చిన మరొక ముఖ్యమైనటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు అమిత్ షా గారికి, అదేవిధంగా వెనక ఉండి ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి మా యువ నాయకులు నారా లోకేష్ గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు సార్. అదేవిధంగా ఇందులో ఇంకొక వ్యక్తిని కూడా మనం ప్రస్తావించాలి సార్. అమరావతిని అణిచివేయాలని, ఆపివేయాలని ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నం సామాన్యమైనది కాదు సార్. జేసీబీలతో, జైళ్లతో భయపెట్టి కూల్చివేతలు సాగించి ఆయన చేసిన రాజకీయ విధ్వంసం కూడా ఒక చరిత్రే సార్. ఆయన అణిచివేత వల్లే ఈరోజు రైతుల గుండెల్లో అమరావతి ఒక ఉద్యమ అగ్నిగా రగులుతూ ఉంది. ఆయన చేసిన అడ్డంకుల వల్లే ఈ రాజధాని ప్రాముఖ్యత దేశమంతా కూడా మారుమోగిపోయింది. ఆయన సృష్టించిన అస్థిరత వల్లే నేడు పార్లమెంటు సాక్షిగా అమరావతికి తిరుగులేని చట్టబద్ధత కల్పించాల్సిన అవసరం కూడా ఏర్పడించింది. వారు సృష్టించిన అడ్డంకులే ఈ అమరావతి పురోగతికి పునాదులయ్యాయి సార్. ఆఖరిగా పొట్టి శ్రీరాములు త్యాగంతో పుట్టినటువంటి రాష్ట్రం మా ఆంధ్ర రాష్ట్రం సార్. రైతుల త్యాగంతో రూపుదిద్దుకుంటున్నటువంటి రాజధాని మా అమరావతి సార్. ఆత్మగౌరవ పునాదులపై తెలుగు జాతిని మేల్కొల్పిన అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు వంటి చరిత్ర మా తెలుగు చరిత్ర సార్. ఆంధ్రులు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అక్కడ అభివృద్ధి వికసిస్తుంది. తమిళనాడు నుంచి విడిపోయి కర్నూలు వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోజున హైదరాబాద్ని కామన్ క్యాపిటల్గా అందరం డెవలప్ చేసుకుంటామంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ నగరాన్ని ప్రపంచ పటంలో నిలపడంలో తెలుగువారు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు సార్. చెన్నైలో పరిశ్రమలకు బలం తెలుగువారు ఇచ్చారు. బెంగళూరు, పూణేల్లో సాంకేతిక విప్లవానికి తెలుగువారు ముద్ర వేశారు. ఆఖరికి అమెరికాలో కూడా అభివృద్ధికి తెలుగువారు తోడ్పడుతూ ఉన్నారు సార్. చరిత్రలో ఇదే సంకల్పం, ఇదే ఐక్యత, ఇదే ప్రగతి పదం కూడా అమరావతి నిర్మాణానికి ఒక పునాది కాబోతా ఉంది సార్. ఆ రోజుల్లో పొట్టి శ్రీరాములు గారు 58 రోజులతో దీక్ష చేసి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఏర్పరిచిన, అదేవిధంగా 1631 రోజులు ఈరోజు రైతులు రోడ్డెక్కి నిరాహార దీక్ష చేసిన తిరిగి లేచి నిర్మించగలిగే జాతి తెలుగు జాతి సార్. కాబట్టి ఇలాంటి చారిత్రక ఘట్టానికి, చట్టానికి మద్దతు తెలుపుతూ అమరావతి నిర్మాణంలో భాగస్వాములైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ I earnestly request that this bill be passed unanimously and with one voice. Jai Hind, Jai Andhra Pradesh, Jai Amaravati. Thank you. Shri CM Ramesh. Thank you, Honorable Speaker, sir. I am grateful to you for permitting me to speak on this very, very important bill for Andhra Pradesh. Sir, I take this opportunity to express my deep sense gratitude on behalf of the people of Andhra Pradesh to Honorable Pradhan Mantri Narendra Modi ji, Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji, and our Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu and Deputy Chief Minister Pawan Kalyan ji for making me 12 years dream of people of Andhra Pradesh reality by giving us a new capital, that is people's capital, green capital. Sir, capital does not mean mere buildings. It is a respect. It is a symbol of sovereignty. It is a strategic location. It is the primary seat of governance. Administration, operational efficiency, and now center. And it is a desire of future generation. Prati Telugu Vadi Gunde Chappudu, sir. Honorable Speaker, sir, this is the first time in the history of independent India that a bill introduced in a parliament to make a particular area as the capital of particular state. It has never happened in the parliament history. Sir, for this credit goes to our beloved Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Home Minister Sri Amit Shah ji and Chandrababu Naidu, Pawan Kalyan. I am thankful to all of them for the core of my heart. Sir,
I also to submit here that the Andhra Pradesh BJP also passed a resolution declaring that Amaravati is the capital of Andhra Pradesh. This resolution has been passed, not now, sir, in 2015. After that, again in 19, when they are destroying the capital, again we passed the resolution and we made agitation on that issue, sir. Sir, I also to submit here that the AP BJP has passed the resolution. Sir, it is a bill which gives a capital of Andhra Pradesh. It is a bill which gives legal backing to the new capital of Amaravati. Sir, it is a bill which declares that henceforth Amaravati is the sole permanent capital of Andhra Pradesh. Sir, this is a bill which stops every speculation, every move, every onslaught on the new capital Amaravati by any future regime. With this bill, no one can move Andhra Pradesh a new capital even 1 inch. And this bill does not allow anyone to play Moodu Mukkalata with a new capital of Amaravati. Sir, ఇప్పటి నుంచి పులివెందుల ఎమ్మెల్యే ఊసరవెల్లి రాజకీయాలు చేయలేరు, మూడు ముక్కలాట ఆడలేరు. అమరావతి భూములు ఇచ్చిన రైతుల Please, sir, after agreeing for new capital, if anything objects, Pulvendala MLA changed his color. Himalayan brought a bill to create 3 capitals for Andhra Pradesh. Every single party, every citizen of Andhra Pradesh opposed it. Sir, 29,000 farmers who given 34,000 acres of land for capital stated dharna for 1,631 days. Can anywhere in the world do we have 3 capitals? Pulvendala MLA Jagan hell-bent to destroy capital Amaravati, and he started this from Praja Vedika. Now, with this bill, no one can propound such illogical, irrational, and illogical proposals of 3 capitals. Sir, State Assembly lo ఒక చారిత్రాత్మక సుదీర్ఘ చర్చ అనంతరం 5 కోట్ల మంది ప్రజల కలల రాజధాని అయిన అమరావతిని మార్చి 28వ తేదీ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలోని సెక్షన్ 5 సబ్ సెక్షన్ 2లో అట్ అమరావతి అనే పదాలను చేర్చాలని ఈ తీర్మానం భారత ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసింది. దాని ఫలితమే ఈ బిల్లు ఉభయ సభలలో ఆమోదం పొంది గౌరవ రాష్ట్రపతి గారు నోటిఫై చేసిన వెంటనే అమరావతికి రాజ్యాంగ హోదా లభిస్తుంది. కొత్త రాజధాని నిర్మాణం 2028 ఆగస్టు నాటికి పూర్తి చేయాలని కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ తీర్మానించింది. ఈ సందర్భంగా కొత్త రాజధాని నిర్మాణం పూర్తి అయిన వెంటనే ప్రధానమంత్రి గారిని దీన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా నేను ఈ పార్లమెంట్ సభ నుంచి అభ్యర్థిస్తున్నాను. సార్, ఎందుకు మేము అమరావతిని రాజధానిగా చేయదలుచుకున్నాం? ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్కు రాజధాని లేదు. రాజధాని లేని కారణంగా పెట్టుబడిదారులు నమ్మకం కలిగించలేకపోతున్నాం. అందుకే అమరావతిని రాజధానిగా చేయడం మూలంగా వారికి నమ్మకం కలుగుతుంది. పెట్టుబడులు వస్తాయి, ఉద్యోగాలు వస్తాయి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు విస్తరించవచ్చు, రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుంది, మరి దేశానికే తలమానికంగా మారుతుంది. దట్ ఈస్ వై వీ వాంట్ ఏ పర్మనెంట్ క్యాపిటల్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సార్, ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ దేహమైతే అమరావతి గుండకాయ మరియు ఆత్మ లాంటిది. సార్,
వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటని అడిగింది పోయిన సభలలో. ఐ విల్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. తెలంగాణ హ్యావ్ ఎ ఓన్ రెవెన్యూ 2024-25 1,40,000 crores, and only in Hyderabad there is a 75% capital is coming from Hyderabad city, sir. But where Andhra we have to go, sir? One side for Tamil Nadu there is a Chennai, another Bangalore, Karnataka there is a Bangalore, other side Kerala there is a Cochin, Hyderabad. All capitals are there. For Andhra Pradesh there is no capital because there is urbanization, more urbanization population, their per capita income is more. Andhra Pradesh only we are based on agriculture income, sir. That is the reason our Honorable Prime Minister and Chandrababu Naidu, Pawan Kalyanji, Lokesh Garu, all they planned for this Amaravati capital, world-class capital, sir. Once world-class capital will come, automatically revenue generation will go up. Then we can do many developments, we can do many welfare schemes. That is our government, this double engine Sarkar government aim, sir. These people, what they did 5 years, how to destroy. This capital comes, name will go to Narendra Modi ji, name will go to Chandrababu Naidu. That is the reason. That is the reason only. That is the reason only they destroyed the capital, sir. How they destroyed, sir? Mithun sir, your chance is coming. You can speak. ప్రభుత్వాలు వస్తాయి పోతాయి, సార్. Nothing objection, సార్. ప్రభుత్వాలు వస్తాయి పోతాయి. ఎవరైనా కానీ ఒక ప్రభుత్వంలో చేసిన పనిని దాన్ని కొనసాగించవచ్చు, ఇంకా మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలంటే దాన్ని ఇంకా బాగా చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ సార్ ఈ అమరావతి క్యాపిటల్లో 10,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు పార్లమెంటు నుంచి మట్టి తీసుకొని వచ్చి పవిత్ర నదీ జలాలు తీసుకొని వచ్చి అక్కడ ఫౌండేషన్ చేస్తే, పార్లమెంట్ నుంచి మట్టి తీసుకొని వచ్చారంటే ఏమని, పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరి ఆమోగ్య యోగంతో మహా పవిత్రమైన నదుల నుంచి నీరు తీసుకొని వచ్చారంటే ఈ క్యాపిటల్ అంత అమరావతి దేవతల రాజధాని, అంత పవిత్రమైనది. ఆ పవిత్రమైన క్యాపిటల్కి మన ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చి ఫౌండేషన్ వేస్తే అక్కడ ఏం చేశారు సార్? ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రోడ్లు వేస్తే ఆ రోడ్లలో ఉండే కంకర, ఆ రోడ్లలో ఉండే స్టీలు, ఆ రోడ్లలో ఉండే వస్తువులన్నీ పైపులు, పైప్ లైన్లు ఇవన్నీ తీసుకుపోయి అమ్ముకున్నారంటే కేవలం ఇంత దుర్భాగ్యం ఎక్కడ ఉండదు సార్. మనము చూసాం సార్ చరిత్రలో, రాజుల కాలంలో కూడా కొంతమంది చాలా రాజులు విచిత్రంగా ప్రవర్తించిన రాజులు కూడా చూసాం. ఇంత విచిత్రంగా ప్రవర్తించిన ప్రభుత్వాన్ని మనం ఎక్కడా దేశంలో చూడం సార్, చూడలేము కూడా సార్. అందుకే సార్ ఇటువంటి బిల్లులు తీసుకురావాలి సార్. ఎందుకంటే సార్ నేను చూసా మహిళలు అక్కడ, మహిళలు న్యాయస్థానం నుంచి దేవస్థానం వరకని ఒక న్యాయబద్ధంగా గాంధీయతవాదంలో వాళ్ళు పాదయాత్ర చేస్తే అడుగు అడుగునా సార్ వారికి భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మేము మద్దతు తెలిపేదానికి నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో నేను వెళ్తే సార్ అక్కడ నా పైన కూడా మా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల పైన కూడా కేసు బుక్ చేశారు సార్. ఆ కేసు ఇప్పటికి కూడా నా పైన ఇంకా ఉంది సార్. నేను ఎలక్షన్ అఫిడవిట్లో కూడా ఆ కేసు వివరాలు ఇచ్చాను సార్. అంటే ఒక న్యాయబద్ధంగా చేస్తే అక్కడ పాదయాత్ర సార్, ఎక్కడ పెద్ద ఏమి కూడా ఎక్కడ అల్లరి లేదు, ఏం లేదు. మహిళల పాదయాత్ర సార్ చరిత్రలో మనం చూసాం. ఎక్కడైనా మహిళల్ని కించపరుస్తే ఆ ప్రభుత్వాలు కానీ ఆ రాజులు కానీ ఇంతవరకు చరిత్రలో బాగుపడింది లేదు సార్. దాని ఫలితమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈరోజు 94% స్ట్రైక్ రేటు ఈ కూటమికి వచ్చిందంటే వారు 5 సంవత్సరాలలో చేసిన దౌర్భాగ్యాలు, దౌర్జన్యాలు, దోపిడీలు సార్. ప్రభుత్వం ఇస్తే చేసేదానికి లిక్కర్ వ్యాపారం చేసేదానికి కాదు సార్, భూములు దోచుకునేదానికి కాదు సార్, ఇచ్చాల విడిగా మైనింగ్ మాఫియా చేసేదానికి కాదు సార్. ప్రజలకు మంచి పనులు చేసేదానికి చేయకుండా ఒక రాజు ఎందుకంటే సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాలి సార్. ఇక్కడ ఏదైతే హైదరాబాద్లో సైబరాబాద్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో అప్పుడు సార్ ఎకరా 2 లక్షల రూపాయలు ఉంది సార్. ఈరోజు దాని తర్వాత వాళ్ళ ప్రభుత్వాలు మారినా కూడా ఆ డెవలప్మెంట్ కంటిన్యూ అయితే సార్ ఈరోజు గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు సార్
200 కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడ భూమి విలువ పలుకుతుంది సార్. ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు అమరావతి క్యాపిటల్ ఉంది సార్. అమరావతి క్యాపిటల్లో ప్రభుత్వము ఒక్క రూపాయి కూడా పెట్టకుండా 33,000 ఎకరాలు 29,000 మంది రైతులు 2 నెలల కాలంలోనే ఇచ్చారంటే ప్రపంచ చరిత్రలో కూడా ఎక్కడ లేదు సార్ ఇటువంటిది. ఫస్ట్ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైతులు ఈ డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ పైన నమ్మకంతో ల్యాండ్ ఇచ్చారు. ల్యాండ్ ఇచ్చిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ చేసి ఆ డెవలప్మెంట్లో రైతులకు 25% ఇస్తే సార్ అప్పుడు ఉండే విలువ ఎంత, ఇప్పుడు ఉండే విలువ ఎంత, అంత మాత్రం ఇంకిత జ్ఞానం లేకుండా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేసింది 5 సంవత్సరాలు. అంటే ఈరోజు 5 సంవత్సరాల వల్ల సార్ మేము 50 సంవత్సరాలు ఎన్నికపోయినాం సార్. దానికి బాధ్యులు ఎవరు సార్? దానికి బాధ్యులు ఎవరు? వారు కాదా? వారికి అసలు ఈరోజు అరే ఏ బిల్ మే క్యా బాత్ కరేగా, आपका डिसीजन बोलो, ये बिल में क्या बात करेगा, आपका डिसीजन क्या है? आप अमरावती वो आंध्र प्रदेश असेंबली में आप क्या बोला? आप गवर्नमेंट के आने के बाद क्या बोला? क्या है? कलर चेंजिंग करेगा? क्या है कलर चेंजिंग करेगा? people are watching this one. Andhra Pradesh 5 crore people are watching today because of our prime minister is there today. Prime Minister is there today. That is the reason our capital is coming. Andhra is developing. Andhra is developing. See the steel plant, what they did. See the steel plant, what you did. See the Polavaram, what they did. See the Polavaram today, what we did. If you see the Andhra Pradesh development, sir, I can say proudly today, in my Anakapalli Parliament constituency, today 5 lakh crore investment has come, sir. Why it has come? Because of double engine Sarkar. Believe on our Prime Minister Narendra Modi ji. What happened 5 years? 5 years there is any single investment happened? Today our capital is coming, our industries are coming, our revenue generation are increasing, our all irrigation project, Polavaram, everything development is coming. Sir, in this house, I am telling you, they insulted women. In the history, if anybody insulted women, never in the history, not coming 5 years, 10 years, 30 years, this Kotami government, this alliance government, under the leadership of Narendra Modi ji, this government will continue in Andhra Pradesh 30 years. And I am requesting, sir, Midhunji, sir, you will get the chance to reply. You will get the chance to respond. Please, Baiti. Please be seated. Sir, no, you will get. Sir, now I will challenge to Jagan Mohan Reddy and his YSR party MPs to clear their stand on the new capital of Andhra Pradesh. మీరు ఒకవేళ సపోర్ట్ చేయకపోతే జగన్ మరియు వైఎస్ఆర్సీపీ అమరావతి ద్రోహిగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్రోహులుగా నిలిచిపోతారు. చరిత్రలో మళ్ళీ మీరు మిగలరు అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు సార్. వాళ్ళు ఈ బిల్లుకు సమర్థిస్తూ జరిగిన 5 సంవత్సరాలు జరిగిన దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు క్షమాపణ కూడా చెప్పాలని ఈ పార్లమెంటు సాక్షిగా వారిని నేను వేడుకుంటున్నాను సార్. అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఆల్ పార్టీస్ ఇన్ ఇండియా, ఇన్ దిస్ పార్లమెంట్, every party, every leader, every member has to support this bill. This is and once again I am thankful to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Amit Shah ji, Chandrababu Naidu ji, Pawan Kalyan ji, Lokesh ji. Thank you very much. Next speaker, Sri PV Midhun Reddy ji. Now you can respond to the questions. Thank you, sir. Sir, this bill is regarding AP Reorganization Act. I would have been very happy if the members who spoke earlier to me spoke about special category status which was promised on this very floor of the House. I would also have been happy if they spoke about the funds for Polavaram project. Now in the recent budget they said the Polavaram project is being restricted to 41.15, which translates to 30,000 crore loss. I would have been happy had they spoken about Polavaram project. Sir, they are already, the central government has filed an affidavit in 2020 saying it's prerogative of the state
that selection of the capital will be. Sir, but whatever, sir, we have our concerns. I would like to raise our concerns in this bill, sir. We want them incorporated in this bill. The first thing is, sir, Amaravati is being built on the lands of farmers, sir. Sir, 34,000 acres has been given by farmers for land pooling. They have not taken 1 rupee. They have not taken any benefit, and they gave it, sir. They were promised completely developed plots, sir. In 2015, they were promised developed plots that they'll be given in 2 years. And they were also promised that free education for their children. They were also promised housing schemes so that they can rebuild their houses and various other promises, sir. But what happened, sir, in those 5 years, 5,000 crores only was spent on Amaravati, sir, from 2014 to 2019. It is on record, sir. And not 1 rupee was given, and not one plot has been shown, sir. The present government is in power for the past 7 years. They were in power for 7 years, sir. Not one plot was given, sir. Not one plot. It is really pathetic. And the farmers are protesting right now, sir. Recently, in a government meeting, one farmer by name Rama Rao, sir, he expressed his deep anguish, sir. He said, my life is ruined. I believe the government, I gave my lands. What is my situation right now? My children are getting affected. My families are getting affected. And he lost his life in that meeting, sir. It is fact. It is there in the news also we can see. Sir, I will tell you, sir, not one plot also was given. It is only shown on paper, and whenever they go, even Mr. Pemasani was speaking, sir. He was talking about farmers. In his very meeting, they have protested, and he said, I will get you arrested if you raise your voice. This is what has happened, sir. Sir, they are not bothered about the farmers of the state. They are not bothered about the farmers. Please. Not 1 rupee. Sir, we demand that, we demand, Vysar Congress Party demands that give a specific date when you are going to hand over the plots to the farmers. When are you going to deliver the other benefits to the farmers? We want this incorporated in the bill. Just the name Amaravati is not enough, sir. We want the benefits to the farmers. We want the plots in a particular date and particular timeline. When are you going to give these plots to the farmers? That should be incorporated in the bill. Otherwise, there is no meaning to this bill, sir. Sir, we also want to know what is the area required for building Amaravati, sir. Right now, they have taken 34,000 acres from, this is very important, sir. I want the House also to understand what is happening in Amaravati. They have taken 34,000 acres from farmers, 20,000 government land, 54,000 acres the government is having it in its hold, sir. They want to go for a second phase for 1,75,000 acres more. That is there in the master plan. Sir, I would like to know, the existing area of Amaravati is 217 square meters, sir. Sir, I would like to quote an example. Sir, Kolkata is a very beautiful city, sir. The area of Kolkata is just 51,000 acres. It has a history of hundreds of years. The area of NMDC, New Delhi Municipal Corporation, is 10,500 acres only. Sir, it has taken years and years or decades and decades to build to this level, sir. You already have 54,000 acres, and it's going to cost a lot of money. According to the plan, what they have submitted, it's going to cost at least more than 2 crores, sir. And where are you going to get this money? Sir, we want a clarity in this bill. How much land are you going to take for Amaravati? How much are you going to spend? This has to be incorporated, sir. It can't be like it is going to happen till infinity and you're going to pump all the money here. We want a clarity. It should be clearly mentioned how much area you are going to take and when are you going to develop this 54,000 acres? Are you going to build a city bigger than Kolkata right now? Is it possible to put money immediately and build bigger than 50,000 acres? Why are you going for the additional land acquisition? What is the need to go for additional land acquisition? That is our question, sir. Where are you going to get? Sir, recently, just 2 days back, Mr. Chandrababu Naidu, who is our CM, spoke, sir. He said, we don't have money. The money is what we are getting in the state is enough only for salaries. And we are borrowing money to give for schemes. Sir, is there a clarity how they are going to spend for this balance 50,000 acres and the balance 50,000 or 1,75,000 they are going to acquire? Is there any meaning to acquisition, what they are going to get more? Already farmers are dying, sir, because they are not getting their plots. They are not able to sell them. They are not able to use it. Sir, how is it justified to go for more land acquisition is our question. Sir, and sir,
if you see how much they have spent, Chandrababu Naidu was in power from 2014 to 19. He is talking of lakhs of crores. He was in absolute power, part of the NDA. He spent only 5,000 crores in that 5 years. And now, in these 2 years, they have been in government. They have given 5,000 mobilization advance and 7,000 crores worth of bills for the works they have carried out, sir. How is it justified? How is it justified that they are going to execute in the next 3 years? It's not going to happen, sir. With this rate, what is going to happen? They don't have have no clue where they are going to get the money. This is a diversion tactic from what is happening in the state. The state is in heavy debt, sir. Sir, in the 5 years YCP was in power, we borrowed 3,30,000 crores. In 2 years, TDP is in power. They have borrowed more than 3,36,000 crores. This is the reply from the parliament. This is not what I am talking, sir. So what is happening? Where are they going to get the money for Amaravati? And sir, what is more glaring? I am going to come to Mr. Ramesh's topic. What is more glaring, sir? I will give you an example, sir. In Delhi, in New Delhi, the MP quarters of the government buildings is costing 4,000 by the PWD. Sir, the material cost is high here. Sir, I want the House to please listen to this important point. It is costing 4,000 per SFT. PWD department, we have collected the data. I am ready to place the data on the table of the House, sir. 4,000 rupees plus is the cost. All the aggregates are high. The sand is high. The crusher thing is high. Everything is high, sir. And what is happening, sir? In Amaravati, they have called tenders for 55,000 crores, sir. I will tell you an example. Per SFT cost for more than 1 crore SFT they have called. Per SFT is 12,000 plus. How can Delhi, the government is doing it, the government here in central government is doing for 4,000 and the same building, same thing with cheaper material they are doing for 12,000 rupees plus. 8,000 rupees is the difference per SFT. It's the highest in the country, sir. It is loot of public money, sir. You see, sir, 1 crore is more than 1 crore SFT. If you're spending 8,000 extra, where is this money going? That is why Mr. Ramesh is shouting, sir. He never opened his mouth for BJP. He is coming here for the contracts, sir. That is why he abused us. Sir, one more thing. Please, sir, please. Sir, that will be I would like to... That will not be on record. Sir, I would like to... Midunji, please. Ramesh, आप बैठे. Please, आप बैठे ना. Please don't make any personal allegation against the members. That will not be on record. No, that is not fair. That is, you can criticize the government. You can criticize the government, not make any allegation against the members. That is not good. That will not be on the record. Please withdraw the comment. Please withdraw the comment. Yeah, that's why. Already the chair has observed. That is not fair on the part of a member making a personal allegation against a member. You can criticize the government, but this is unfortunate. Please withdraw the comment, please. Sir, that will not be on record. Sir. That will not be on record. Sir, need not. Sir, if you think I have made a personal record and it needs to be removed from the records, a personal remark and it needs to be removed from the records, though it is the truth, I totally go with the chair, sir. I totally go with the chair. Yes. Sir. Sir, let me complete. Let me complete. Sir, there is no rule that you can give the same person second time. Sir, when Mr. Chandrababu Naidu swore in as Chief Minister, sir, he spoke of the capital of the state. He officially declared that the area near Tiruvuru will be, as a CM, sir, he made a statement. He officially declared that area near Tiruvuru will be the capital of the state. Sir, he officially made a remark. In the meantime, they bought lands in Amaravati for 5 lakh, 10 lakhs, sir. They bought thousands of acres. Now, Krishna, when your turn comes, you can counter the argument. And after they bought the land, then they shifted the capital to Amaravati. Then he said Amaravati is the capital, sir. This is insider trading. For 5 lakh, 10 lakh rupees, they bought the land, and now it is costing crores. This is the whole concept of Amaravati. That is why he is after this, sir. They are not bothered about Polavaram. They are not bothered about special category status. They are not bothered about the funds of the state. Only they want
ratification for Amaravati. This is not fair, sir. This is not at all. Love Krishna, you can counter when your time comes. Please, sir. Nothing will go on record except the observations sir, they were of talking about 3 capitals, sir. I would like to clarify on this. I want the House also to hear, sir. They are talking about 3 capitals. Sir, they are talking about 3 capitals. I would like to say that it is a concept which they need to understand. It is not pumping the whole money of the state into one place. The whole state needs to be distributed. The whole state needs to be decentralized, please. and development should happen throughout the state. That is the concept of it, sir. The BJP officially put a Rayalaseema statement, sir. They made a statement in Rayalaseema saying that Kurnool will be the second capital. Then after alliance, they went. It is officially on record, sir. It is on record. It is on record, sir. Then they went there. Sir, I would like to say that, sir, there are countries. There is South Africa. There is Netherlands. There is Georgia. There are various countries in the world which follow this policy, sir. They have a capital, but they want to develop the other places also. So they have a multiple capital things, and if they are not able to understand this whole thing of developing the whole state, then we can't do anything, sir, because they are so their focus is so much centered around the lands in Amaravati, so they can't understand this concept of developing the whole state, sir. This just putting the name and bringing it to Parliament is of no use, sir. We want our concerns, the farmers' interest to be protected. The amount in this bill, the amount what we require for Amaravati, the land, what you are going to do, what is your plan with definite timelines. And we want this camp to be proud, sir. This bill in this present state is no use to the people of our state. So we oppose this because we oppose this bill in the present form. Though we are not against Amaravati or any other part in the state, we are against this bill in this present form, sir. We are against this bill in this present form, and we are going to make a walkout, sir, because this bill is hopeless and there's nothing in this. Thank you. Shri Dharmendra Yadav ji. धन्यवाद सभापति जी। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव एक सेकंड बैठ Ramesh ji, he has made a personal observation. He has made a personal allegation against you. I have already ruled that will not be on the record. A matter which is not on record, why should you counter? And also he has also withdrawn it. Please. No need of a personal explanation because that is unfair. The chair has already ruled and he has also withdrawn. So there is no need of any explanation, a matter which is not on record. Yes, धर्मेंद्र यादव जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, आज सदन में अचानक ही आया आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026। यद्यपि बेहतर होता पहले से नोटिफाइड होता तो और व्यापक चिंतन करने का भी समय होता, मौका होता, लेकिन ये जिस रूप में भी बिल आया, मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं। सभापति जी, समर्थन तो करता हूं, लेकिन समर्थन के साथ साथ कुछ सवाल हैं। हमारी पार्टी का सवाल है आंध्रा के साथियों से, विशेषकर टीडीपी और एनडीए के लोग जो सत्ता चला रहे हैं या जिन्होंने विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया है। बहुत स्वाभाविक तौर पर आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम स्वाभाविक राजधानी के तौर पर डेवलप हो रहा था, और अगर उस स्वाभाविक राजधानी को आपने स्वीकार किया होता तो आज जो बहुत सारी चर्चा चल रही कि इतनी जमीन की जरूरत पड़ रही है, इतने खर्चे की जरूरत पड़ रही है, इतने लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, अगर आंध्रा के साथियों ने, वहां की सरकार ने ये फैसला लिया होता तो आज ना तो इतनी किसानों की जमीन की जरूरत पड़ती, न इतना पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती जो कर्ज लेके आपको लेना पड़ रहा है, शायद नहीं पड़ती अगर आप लोग विशाखापट्टनम डेवलप करते। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं देश का हर राज्य विकसित हो, और स्वाभाविक है राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए बिना स्थायी राजधानी के कोई व्यवस्था चल नहीं सकती।
इसलिए देर से ही सही एक स्थायी राजधानी की जो पहल की है उसका हम अपनी पार्टी की ओर से पूरा का पूरा समर्थन करते हैं। सभापति जी, जहां हम समर्थन करते हैं वहीं सवाल बहुत गंभीर हैं। जैसा कि टीडीपी के साथियों ने भी कहा, बीजेपी की तरफ से भी सीएम रमेश जी ने कहा कि इतने किसानों ने अपनी जमीन दे दी, किसानों ने जमीन दी, ये किसानों का बड़प्पन है। लेकिन जमीन लेने से पहले सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो 2013 का भूमि अधिनियम पास हुआ इसी सदन से, क्या 4 गुना मुआवजा आपने किसानों को दिया है? क्या उसके साथ मुआवजा दिया? एक अगर दिया है अच्छी बात है, हम आंध्रा के किसानों के हितों की बात कर रहे हैं। मुआवजा किसानों को पूरा मिले, उसके साथ साथ जो रहने की जो कंडीशन है प्लॉट मिलने की वो पूरा मिले। ये हमारी लैंड पुलिंग तो बड़े लोग करते हैं, किसानों को क्या मिल जाएगा हम भी जानते हैं। बड़े बड़े लोग लैंड पुलिंग करके सरकार को देते हैं, किसानों को मिलना चाहिए। ये मेरी पार्टी की तरफ से मांग है। अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं दे रहे हैं तो इस पर आप विचार कर लेना। दूसरा सभापति जी, सीएम रमेश जी ने कहा कि उनके अपने क्षेत्र में 5 लाख करोड़ के एमओयू और इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सीएम रमेश जी ने कहा उनके अपने क्षेत्र में, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कहीं यूपी जैसा ना आए। सही बात है। यूपी में क्या हुआ सभापति जी, 15,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए और 15 लाख करोड़ के, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं 1500 करोड़ भी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। अभी माननीय सभापति जी इसी महीने, मार्च के महीने में जो कंपनी 2025 में बनी, जिस कंपनी की नेटवर्थ केवल 50 लाख है, उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 करोड़ का एमओयू यूपी की सरकार ने साइन किया है। ये इन्वेस्टमेंट कहीं यूपी जैसा ना है, ये आंध्रा के लोगों आप लोग ख्याल रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जानकारी है, आप अपने जवाब में दे देना, जानकारी है मुझे पूरी। इसे आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, जहां 54,000 करोड़ एकड़ लैंड आप लैंड परचेज कर रहे हैं। दूसरी बात, जिसके नाम पे पूरे देश का चुनाव लड़ा गया, महीनों पहले महीनों बाद तक 24 घंटे लाइव चलाया गया है। राम मंदिर के निर्माण को अयोध्या में आरडी अवधेश जी बैठे हैं, अयोध्या के किसानों तक को उनको जायज मुआवजा नहीं दिया गया है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ हो रहा है, बैठे टीडीपी के साथी, पुराने गठबंधन के साथी रहे, ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहीं भाजपा की संगत में जाके आंध्रा के किसानों के साथ ये आप न करना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। इसलिए सभापति जी, जहां ये इन्वेस्टमेंट का सवाल है, और हां आंध्रा के साथी पप्पू जी ने कहा जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ है, सावधान रहना। उधर जो कोई भी गया है, साइकिल वालों इधर आ जाओ, उधर जो कोई भी गया उसका बुरा हाल हुआ है। बैठे हैं हमारे शिंदे साहब भी बैठे हैं, नीतीश जी की भी पार्टी के लोग बैठे हैं। आंध्रा के लोगों, आप लोग अलर्ट रहना, ये हमारी आपसे मांग है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी साहब से 2 मिनट बात करूंगा, ज्यादा नहीं। विशेष दर्जा राज्य तमिलनाडु, आंध्रा का जो विशेष राज्य का दर्जा है, मैं अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, श्रद्धेय नेताजी ने छोटे राज्यों की स्थापना का हमेशा विरोध किया है, और सैद्धांतिक तौर पर उन्होंने कहा है कि जब राज्य छोटे हो जाते हैं तो कटोरा लेके केंद्र के सामने उन्हें खड़ा होना पड़ता है, कभी वो अपने दम पर राज्य का विकास नहीं कर पाते। जैसा आंध्रा के लोग चर्चा कर रहे हैं, राजधानी गठित करने के लिए कटोरा लेके केंद्र सरकार के सामने खड़े। उत्तराखंड के लोगों का विकास कैसे हो पाया वो हम जानते हैं। शुरुआत में केंद्र सरकार राज्य गठन के साथ तमाम तरीके की रियायतें दे देते हैं, टैक्स फ्री, इस तरह का औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, और 10 साल से ज्यादा किसी राज्य को सुविधाएं केंद्र देता नहीं है, और अंततोगत्वा उस राज्य के विकास पर बहुत
असर पड़ता है। इसलिए सभापति जी, मैं सदैव नेताजी की जो सोच रही है उस सोच का मैं समर्थन करते हुए मैं पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूं, ये छोटे राज्यों की चर्चा, छोटे राज्यों की सोच, छोटे राज्यों की मांग से दूर रहें। जितना राज्य बड़ा होगा, जितना संसाधन होंगे, जितना उनके पास मैन पावर से लेके तमाम चीजें होंगी, उतना ही राज्य आत्मनिर्भर होगा। केंद्र पर उसकी निर्भरता कम से कम होगी। इसलिए आज चूंकि आंध्रा के लोगों की मांग है और ये हमारे पुराने सहयोगी रहे और हमें उम्मीद है इसी 18वीं लोकसभा में फिर से एक बार हमारे सहयोगी बनेंगे और इसलिए इनको जो विशेष राज्य की मांग है, उस विशेष राज्य की जो मांग है उसका हम समर्थन करते हैं और केंद्र के मंत्रियों से कहेंगे केवल बैसाखी लेके विशेष राज्य की भाषण न दो। बिहार के लोगों के साथ भी यही किया आपने। आज तक विशेष राज्य नहीं बना पप्पू भाई आपका बिहार, लेकिन नीतीश जी को झांसे में लेके विशेष राज्य का दर्जा देके जो बिहार के साथ किया, आंध्रा के साथ भी अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। इसलिए इस भाषण के माध्यम से, इस वक्तव्य के माध्यम से देश के सभी दलों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में ना आइए और जो किसानों की जो जमीनें गई हैं उनका भरपूर मुआवजा दीजिए। जहां अगर राज्य और राजधानी का कहीं आप लाभ की बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, तो उस लाभ का अगर कोई सबसे पहला हकदार है, किसी का हक है, तो वो किसानों का है आंध्रा के। इसलिए आंध्रा के किसानों को भरपूर सुविधाएं दो, ये हमारी आपसे अपील है। एक बार फिर अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से इस बिल का आंध्रा की जनता के हित में, आंध्रा के लोगों की तरक्की के लिए मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री आर रघुराम रेड्डी जी। Thank you, Chairman, sir. We have no problem with the reorganization bill, sir. The Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 included several assurances and commitments for Telangana to address development, institutional and resource concerns post-bifurcation, sir. Key promises were as follows: institutional and educational support, NIT, IIM, IISER, and a central university in Telangana, sir. Development of existing institutions to national standards, sir. Support for an industrial corridor. Development of Hyderabad as an IT hub, sir. It's already a very huge IT infrastructure area, sir. Assistance for backward regional development, particularly in districts like Adilabad, Mahabubnagar, and Khammam, sir. Bayaram steel plant was promised to be restored, sir, under Section 93, sir. Irrigation and water resources, sir. Constitution of Krishna and Godavari river management boards in both states, sir. Majority of Krishna and Godavari flow through Telangana, sir. National status for Palmur Rangareddy, sir. In the power sector, sir, continuation of power purchase agreement, sir. And also, sir, financial assistance for backward districts under Section 94(2), sir, has not been fulfilled, sir. Revenue and financial support, sir. Support for urban and rural infrastructure. We are a landlocked state, sir. We have no problem with our brothers and sisters in Andhra Pradesh getting additional funds in the budget, sir. But in the same line, Telangana also will request additional funds, sir, for regional ring road. At least 3 airports, sir. The Honorable Minister is here, sir. He has been good enough to give an airport in Warangal, sir. We request for another 2 airports, sir. One in Kottagudem, sir, and one in Adilabad, sir. Peddapalli, sir. Moosi River project, sir. Regional ring road and KTPS, sir, which is a very large thermal power station now, sir, needs another 825 megawatts, sir. This needs to be restored, sir, to its original glory, sir. Sir, in the second amendment, 4 Gram Panchayats went into Andhra Pradesh, sir. They are neither here nor there, sir. This is in Bhadrachalam assembly segment, sir. I would request them to consider that these 4 Gram Panchayats be restored back to Telangana, sir. These assurances remain central to the ongoing policy and parliamentary discussions regarding their implementations, status and adequacy, sir. I request my Andhra Pradesh brothers and sisters not to consider this splitting of the state as a black day, sir, but a great day for the development of both the states, sir. Yes. Let's both get funds, sir. Let them also support us in getting funds, sir, which were not given in this budget, sir. Let the government understand that this budget needs to be given for our development also, sir.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Next speaker, Madam Srimati D. Purandeswari Ji. Sir, thank you, Honorable Chair. Telugadelayanna desambu Telugu. Telugu valla bunda Telugu kanda. Ellan rupula nerga basadi desa bhashalandu Telugu lessa. With deep respect and regard to my own mother language, sir. But since I have members of parliament from the northern parliament constituencies as well, I would seek to progress further in English. Sir, today I rise with great humility and responsibility, sir, not merely as a member of this august house, but also as the proud daughter of the state of Andhra Pradesh, echoing the voices of 5 crore people, including the farmers and women of my state. Sir, what I place before this house today is simply not about a city or a town, but it is about sacrifice, about constitutional fairness, and about the moral duty of the Indian state. So when AP was bifurcated, or Andhra Pradesh was bifurcated in 2014, sir, leaving Hyderabad, the joint capital of the newly formed state of Telangana as well as the residual state of Andhra Pradesh needed a new administrative center. Amaravati, sir, keeping in mind its spiritual, its historical, as well as its religious significance in mind, was actually identified to be the capital of our state. Sir, Telangana began its journey with Hyderabad as the capital, sir, which was ready, functional, and globally recognized, but Andhra Pradesh did not have a capital, neither did it have a secretariat, an assembly, or administrative ecosystem. Sir, on the 8th of February 2014, sir, that should be considered a black day in the annals of Indian parliamentary history, because it was on that day, sir, that the doors were shut, the cameras were shut down, there was no healthy discussion, but yet a state was bifurcated on the floor of the house, sir. The people of Andhra Pradesh, the 5 crore people of Andhra Pradesh, they accepted the loss peacefully and constitutionally, keeping the nation's interest in mind. That quiet dignity, sir, laid the emotional foundation for our capital, Amaravati. There were 3 states, sir. I would like to remind the House that in the year 2000, when one of the greatest statesmen of our country, Shri Atal Bihari Vajpayee ji, was the Prime Minister of our country, 3 states were formed, sir: Jharkhand, Chhattisgarh, and Uttarakhand. And all of them, sir, they did get as their hereditary a capital, or for that matter, an area was identified to be the capital of the state. But Andhra was subjected to deep humiliation, and this was probably the first state in the entire history, sir, where a state was created with a residual state was left, sir, with no capital at all. Sir, there was absolutely no coercion, and just one call by the center, sir, it had seen 29,000 farmers come forward to contribute, or rather give up 34,000 hectares of 34,000 acres of fertile land, sir, for construction of capital Amaravati. Therefore, Amaravati, sir, is not a mere transaction, but it is a social covenant. And today, probably that is why Amaravati will be remembered in history, sir, as India's first people capital, built not by coercion, but built by belief, sir. Sir, when the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, was in Andhra Pradesh and he laid the foundation stone for Amaravati in 2015, that was a moment of reassurance to a wounded state. Sir, it was an assurance from the nation directly to the state of Andhra Pradesh. In 1953, sir, the state of Andhra Pradesh was formed based on linguistic identity. Fighting discrimination against the Teluguites in the then Madras presidency, there was a demand for a creation of a special linguistic-based state, sir. And it was late Shri Potti Shri Ramal Garu's sacrifice, sir, which probably led to his death and had also led to the formation of the state. Sir, it should be remembered here today that sacrifice, it had laid the moral and emotional foundation of the state of Andhra Pradesh. However, sir, the bifurcation that had happened on 18th of February 2014,
The bifurcation was not against any kind of injustice to the other part of the state, but was driven by sheer and pure political gains by the then Congress-led UPA government, sir. Unlike the earlier movement rooted in sacrifice and political aspiration, the bifurcation, sir, was carried out in a manner that raises serious constitutional, moral, as well as ethical concerns. Sir, between the years 2019 to 2024, Andhra Pradesh had seen a period of deep uncertainty regarding the capital, sir, which was the result of the absolute thoughtless and mindless decision of multi-capitals taken by the then YSRCP government. Sir, despite the then LOP in the state of Andhra Pradesh, on the floor of the assembly, accepting to the establishment of Amaravati as the capital, and despite him reiterating that if not 34,000 acres, 50,000 acres should be taken to create a futuristic, wonderful, beautiful capital for the state of Andhra Pradesh, it was he who changed his words, sir, and brought onto the scene the multi-capitals with their stated objectives of decentralized development. So my question here would be, would simply the establishment of a capital bring in the much needed development to a state? So we know fairly well that for the development of a state, we need to instill confidence in investors, we need to welcome investments, and we also need to ensure that the required logistical and infrastructural needs are actually put in place. However, sir, what we saw in the previous 5 years' rule of YSRCP was simply a depletion of all of this, and the entire machinery of YSRCP was deemed or steeped in land and in sand as well as liquor mafia, sir. Sir, most painfully, those who had sacrificed the land were left with, sir, just another 5-6 minutes, sir. No, please. Sir, the farmers, sir, they agitated for over 1,600 days, sir. It included both men and women, and the humiliation that they were subjugated to has been mentioned by my colleagues, sir. Cases were filed against them under the SC/ST Atrocity Act. Women were actually, pregnant women were pulled out, they were kicked in the stomach, sir, and the annadatas or the farmers, sir, they were handcuffed, and there were many, all of them have been outlined by them, sir. But here, sir, as a woman member of this house, I say with great restraint and responsibility that when peaceful women protesters are met with force, democracy must pause and must introspect. Sir, there is no specific mention of a capital in the Constitution, sir, but under Article 239AA, dealing with Delhi, sir, there was a mention. But however, sir, the reorganization bill speaks through Section 5 and Section 6 of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 that was passed by this House. It speaks about the capital, sir. And therefore, sir, if there has to be any change in the capital, it will and must have to come back to the Parliament for its, just 2 minutes, sir. It must come back to the House for its ratification. So furthermore, the central government, sir, despite it not being part of it, the central government had provided its entire support to the capital, sir. It could be the 1,500 crores that it gave for the development of infrastructure in the CRDA. It could be the 20,000 crores for the outer ring road, the 29,000 crores for connecting Rayalaseema Anantapuram with the Amaravati, sir. Polavaram being given the national project status, where the 7 mandals which were residually left behind in Telangana were again brought back to Andhra Pradesh. Otherwise, Polavaram dream would not have been realized. It could also be the support, sir. I was listening to Manikam Thakurji, and he was mentioning that there's no support being given to the capital Amaravati. So may I remind my honorable colleagues, sir, that through HUDCO, 11,400 crores have been given, and again, along with the World Bank, the center has also given 15,000 crores for the capital, sir. Special category status was never made part of the bill, even by the UPA government at that point of a time. But the present government, sir, the NDA government at the center, has been giving its full support, sir. Sir, in conclusion, since paucity of time, you've been reminding me that my time is over. Sir, Andhra Pradesh, sir, today is...
is why we are here to seek statutory recognition for Amaravati, sir, is not political but on moral and constitutional grounds. Sir, statutory protection for Amaravati is really essential because no state would have to lose its capital for the second time. No farmer, being whether a man or woman, should fear no policy reversal. Investors need certainty and not shifting of capitals, and a reorganized state, sir, it deserves stability and experiment. No, sir, please. in conclusion, sir, I would like to only say that Andhra Pradesh today is seeking no privilege, sir. It seeks certainty. It is not asking for politics, sir, but it is asking for justice. It is not asking for sympathy, sir, but it is asking for the faith of the farmers, be it men or women, to be honored in law and policy. Let Amaravati, sir, be remembered today not as a dispute but a lesson that when citizens trust the state will protect that trust. I urge this august house, sir, to stand with the state of Andhra Pradesh so that Amaravati stands forever a stable, lawful and proud capital, and as a testament of how India honors sacrifice. Sir, I was listening to Samajwadi Party, Dharmendra ji, and he stood up and said that we would support Amaravati, sir. Maybe he said that he spoke about the farmers, which is accepted in true spirit. However, sir, it is quite unfortunate to see the YSRCP parliament members walk out, sir, and not wanting to vote for Amaravati. Thank you, sir. Thank you very much, Sri Aravind Savanji. माननीय चेयरमैन सर, आज आंध्र प्रदेश के just 2-3 minutes अमरावती को राजधानी का just 2-3 minutes beg pardon just 2-3 minutes because we have to conclude the discussion by 2 o'clock. I am not able to hear you, sir. No, we have to conclude the debate by 2. Yes, okay, I'll be in 5 minutes, sir. I won't much more, sir. आज आंध्र प्रदेश के अमरावती की राजधानी का स्टेटस देने का बिल लाया, उसका मैं सहे दिल से स्वागत करता हूँ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हमारी बहन पुरंदेश्वरी जी डॉक्टर बात कर रही थी, तो पुरंदेश्वरी जी मुझे उसकी याद आई, आपके चुनाव क्षेत्र से डॉक्टर बाबू आए थे चुनकर तेलुगु देशम पार्टी से, और ये मेरे मित्र राम बाबू आज हमारे मंत्री है। हम सभी एक थे उस वक्त, सत्ता पक्ष के साथ में थे, और वो दर्द मैंने और चेयर ने दोनों भी देखा है। 5 बरस तक खेलते रहे आपके साथ में। ये हर वक्त खड़े रह के बोलते थे कि स्पेशल स्टेटस दे दो। वो स्पेशल स्टेटस देने के लिए आपकी पार्टी ने इतना समय लिया है, वो भी ध्यान में रखना, क्योंकि वो तो बेचारे बहुत तड़पते रहे। वो तड़पते रहे 5 बरस तक। I have not yielded, sir. I have not yielded. The fact, I am telling you the fact. I am telling you the fact. The fact is that Chandrababu Naidu was very eager. I mean, मुझे याद है उस बात की। आज हम लोग उनको भी भूल रहे TRS को, जिन्होंने इसका विभाजन किया। वो जो कानून बनाया गया उस वक्त हम लोग नहीं थे, लेकिन विभाजन के बाद में जब हम चुनकर आए तो तेलुगु देशम पार्टी और शिवसेना पार्टी were together with the BJP party. We were in alliance, and they were demanding for 5 years. I was listening the same demand कि भैया हमें स्पेशल स्टेटस दे दो, हमें स्पेशल स्टेटस दे दो। आखिर तक नहीं हुआ। आज पता नहीं, चलो देर आए दुरुस्त आए, आपके सरकार के मन में आया है, अच्छी बात है, उसका स्वागत करता हूँ। स्वागत करते समय मैंने कुछ स्पीचेस भी सुने हैं। हमने देखा है कि जब राज्य बनता है तो राजधानी होनी चाहिए। वो तो 3 राजधानियां बनी थी। अच्छा हुआ आपने अमरावती को सिलेक्ट कर दिया। मैं जानता हूँ कि माननीय चंद्रबाबू नायडू जी के लिए ड्रीम है, सपना है, और वो सपना साकार करने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक ऐसी बने राजधानी कि पूरा विश्व से देखे कि अमरावती हमारे राज्य में भी एक जिला है महाराष्ट्र में, उसका नाम भी अमरावती है। तो मैं चाहता हूँ अमरावती खूबसूरत बने, लेकिन खूबसूरत बनते समय यह न सोचे। सर, मैं बहुत एक मन से रिक्वेस्ट करता हूँ, आजकल जो रिवेंजफुल एक्शन का ड्रामा है ना, वो बंद करना चाहिए। इसकी सरकार आई तो पिछले वाली सरकार को तकलीफ दे दो। ये क्या, इन्होंने भी बर्दाश्त किया 5 बरस, अब ये आ गए तो उनको तकलीफ चालू है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नो वेंजियंस एट ऑल। Yes. So we should think of it. What for we are fighting? We wanted a capital. We wanted to deliver goods to the people of the state. People want the capital. People want the secretariat and all those things. The infrastructure, they required it. And for that, 1 minute, sir. Within 1 minute, sir, आपने
28,181 हमारे किसानों की लैंड ली है। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, जिन किसानों की जमीन ली उनको मुआवजा, उनका घर, उनकी नौकरी, उनको आपको विश्वास दिलाना चाहिए। यहाँ ये कहते हैं विकसित भारत, और विश्वास भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास अमरावती में हो, मेरी शुभकामना है। लेकिन ये सबका विकास करते समय झगड़े बंद करूं, क्योंकि यहाँ पर हम और आप तेलुगु है, दोनों भी एक है, तो एक दूसरे के ऊपर वेंजेंस एक्शन चलती है। दैट इज नॉट गुड फॉर यू। आई सपोर्ट द बिल एंड वेलकम द अमरावती टू बिकम अ ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द कंट्री। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. Thank you. Vamsi. Sir, thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, thank you, sir, for giving me this opportunity. It's a very important issue that we need to raise. Sir, 1969 kelli edaithe Telangana agitation nadichindo, appudu Kaka Venkateswamy garu kuda bullet gayaలను kuda lekka cheyakunda అనేక మంది తెలంగాణ కోసం కొట్లాడతామని చెప్పి తెలంగాణ నీళ్లు నిధులు నియామకాలు ఏదైతే మాకు అన్యాయం జరుగుతుందని ఏదైతే విషయం ఉండేనో సార్, దాని మీద కంకణం కట్టుకొని తెలంగాణ యువతకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి ఏదైతే తెలంగాణ కోసం కొట్లాడినామో సార్, ఈ రోజుటి వరకు ఏదైతే రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లా మాకు ఏదైతే ప్రామిసులు చేసినారో దాని మీద అన్యాయం జరుగుతూనే ఉన్నదని చెప్పి ఈరోజు నేను చెప్పదలుచుకుంటున్నా సార్. ఉదాహరణకి నీళ్ళ గురించి వస్తే కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్, గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంటు ఏదైతే ఇప్పుడు బంకచెర్ల ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నారు సార్, దాదాపు 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు ఆ ప్రాజెక్టు కేటాయిస్తున్నారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ కానీ వస్తే దాదాపు 200 TMCs తెలంగాణకి హక్కు ప్రకారం ఏదైతే నీళ్లు రావాల్సిందో అది డైవర్ట్ అయిపోతుంది సార్. నార్త్ తెలంగాణ ప్రాంతం, నేను ఎక్కడికెళ్ళి వస్తానో పెద్దపల్లి నార్త్ తెలంగాణ ఏరియా మొత్తము డ్రౌట్ ప్రోన్ అవుతుంది సార్. ఈ విషయాన్ని నేను రికార్డులో పెట్టదలుచుకుంటున్నా సార్. అదేవిధంగా కేవలము చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆంధ్రాని ఏదైతే డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ ఏదైతే అంటున్నారో వాళ్ళకు మద్దతు తెలపాలని చెప్పి ఈ ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నారు. కానీ గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఈ విషయాలు వాళ్ళకు గుర్తు రాలేదు, వాళ్ళ కోసం ఏమీ చేయలేదని చెప్పి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది సార్. మీరు ఎయిర్పోర్ట్స్ కోసం వస్తే రామ్మోహన్ నాయుడు గారు కూడా ఉన్నారు. ఎయిర్పోర్ట్స్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి దాదాపు 7 నుంచి 9 ఎయిర్పోర్ట్లు ఉన్నాయి సార్, కానీ తెలంగాణలో కేవలం ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్నది సార్. ఈ విషయం మీద కూడా మీరు అందరు గమనించాలి. ఎందుకు తెలంగాణకి ఇట్లా అన్యాయం చేస్తున్నారు? మా పెద్దపల్లి కూడా ఎయిర్పోర్ట్ అడిగినాం సార్, దాన్ని కూడా ఇప్పటివరకు ముందుకు సాగలేదని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం సార్. మరొక ముఖ్యమైన విషయము రైల్వేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా సార్, thousands of crores రైల్వేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆంధ్రప్రదేశ్కి కేటాయిస్తున్నారు సార్, కానీ మా తెలంగాణకి కేవలం 100 కోట్ల ప్రాజెక్టులు, చిన్న ప్రాజెక్టులు ఇస్తున్నారు సార్. కంప్లీట్లీ అన్యాయంగా ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది సార్. మళ్ళీ పోలవరం ప్రాజెక్టు కట్టిన తర్వాత బ్యాక్ వాటర్ ఇష్యూస్ మా దగ్గర ఫినిషింగ్ సార్. బ్యాక్ వాటర్ ఇష్యూస్ దాదాపు 2 లక్షల మందికి కొత్తగూడెంలో, భద్రాచలంలో బ్యాక్ వాటర్ ఇష్యూస్ వలన వాళ్ళ జీవితాలే డేంజర్లు ఉన్నాయి సార్. ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ మాకు ఒక కరకట్ట కట్టి వాళ్ళకి కొంచెం సేఫ్టీ ఇవ్వాలి సార్. మళ్ళీ ఇప్పుడే చెప్పినట్టు బయారం స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నది సార్. ఆంధ్ర నుంచి పవర్ బిల్స్ దాదాపు 20,000 కోట్ల రూపాయల పవర్ బిల్లు ఇప్పటికి కూడా తెలంగాణకు బకాయి ఉన్నది సార్. అది ఇమ్మీడియట్గా వారు రిలీజ్ చేయాలా. RFCL యూరియా క్రైసిస్ తెలంగాణకు వస్తుంది కానీ ఆంధ్రాకు వస్తలేదు సార్. తెలంగాణ రైతాంగం నష్టం జరుగుతుందని చెప్పి రికార్డు మీద చెప్పాలి సార్. ఐఎమ్ జస్ట్ ఫినిషింగ్ సార్. ఇండస్ట్రియల్ లాస్ట్ పాయింట్ సార్, ఇండస్ట్రియల్ కారిడారు ఇంకా లేటెస్ట్గా సెమీకండక్టర్ ఫెసిలిటీ ఏదైతే మాకు గ్రాంట్ చేసిందో అది కూడా అక్కడ తీసుకుపోయినారు. జై హింద్, జై తెలంగాణ. Shri Bajrang Sumen. Bajrang Suni. Thank you. Just 2-3 minutes. Speaker sir. Yes, 3-4 minutes. No, 2-3 minutes. Yeah, please. No, please. Yes. We have to finish it by 2 o'clock. मी आज आदरणीय माझे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, माझ्या पार्टीच्या नेत्या सुप्रियाताई सुळे यांचे आभार मानतो की यांच्यामुळं मला आज या विधेयकावर बोलायची संधी मिळाली. आज लोकसभेमध्ये सादर होणारा आंध्र प्रदेश पुनर्रचना सुधारक विधेयक 2026 हे अमरावतीला आंध्र प्रदेशाची राजधानी म्हणून अधिकृतपणे घोषित करेल आणि सध्या सुरू असलेली ग्रीनफील्ड राजधानी शहर प्रकल्पाला वैधानिकरित्या अधिष्ठान प्रदान करेल. साहेब, आंध्र प्रदेशाला सुद्धा संतांची भूमी, महापुरुषांची भूमी, ज्या पद्धतीने आमच्या महाराष्ट्राला वारसा आहे
श्री छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, त्याचबरोबर यशवंतरावजी चव्हाण, बाळासाहेबजी ठाकरे, गोपीनाथरावजी मुंडे आणि माझे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांचा. त्याप्रमाणेच आंध्र प्रदेशात सुद्धा स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून औलरामजी सीताराम राजू, त्याचबरोबर या देशाचा स्वाभिमान तिरंगा ज्याचं डिझाईन ज्यांनी केलं असे पिंगल व्यंकय्या, त्याचबरोबर या सदनाचे जास्त काळ राहिलेले सदस्य एन.जी. रंगा, त्याचबरोबर या सभागृहाचे स्पीकर म्हणून ज्यांनी काम केलं असं बालयोगीस, त्याचबरोबर आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री म्हणून एन.टी. रामारावजी, चंद्रबाबू नायडूजी, वाय शेखर रेड्डीजी, या सर्वांची भूमी आंध्र प्रदेश आहे. या सर्वांच्या योगदानानं 2013 मध्ये आंध्र प्रदेशाची निर्मिती तेलंगणा राज्याची निर्मिती आंध्र प्रदेशातून झाली. 13 वर्षाच्या नंतर आज हे बिल या सभागृहात आलं. त्याच्यामुळे सरकारचं मी अभिनंदन करणार आहे आणि माझ्या पार्टीच्या वतीनं आमचं या बिलाला समर्थन आहे. पण मी एकच 2 गोष्टी सांगणार आहे. आंध्र प्रदेशामध्ये अमरावती शहराला राज्यस्थानीचा दर्जा देण्यासाठी, भौतिक सुविधा उभारणीसाठी 30,000 एकर जमीन ज्या शेतकऱ्यांनी दिली त्या शेतकऱ्यांसाठी खरं धन्यवाद दिला पाहिजे. त्या शेतकऱ्यांनी देत असताना या सर्व गोष्टीवर बोलताना शेतकऱ्यांनी जी जमीन दिली त्या जमिनीच्या बाबतीत त्या शेतकऱ्यांना न्याय दिला पाहिजे. आणि आता या बिलावर बोलताना आता आमचे मित्र माझे सीएम रमेश, परत आमचे माझे मित्र आहेत जे कृष्णाजी, श्रीनिवास रेड्डी, सर्वजण या बिलाला समर्थन करतात. एस बालसौरी जी. थँक्यू स्पीकर सर. एस बालसौरी जी. एस कंक्लूड करो. एक सेंटेंस से माझी एक विनंती शेवटची की ज्या पद्धतीनं या शेतकऱ्यांनी जमीन दिली, या शेतकऱ्यांना वेगळ्या पद्धतीनं जे मोबदला आंध्र सरकार देणार आहे तशाच पद्धतीवर माझ्या महाराष्ट्रातील पुणे शहरामध्ये मगरपट्टा सुद्धा अशाच पद्धतीनं बनला. त्या शेतकऱ्यांचा सुद्धा आभार मानला पाहिजे. त्याचं एक मॉडेल म्हणून बनला. त्या पद्धतीने या शेतकऱ्यांना आपण द्याल अशी अपेक्षा करतो. थँक्यू स्पीकर सर. I would like to speak in my mother tongue Telugu sir. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అమరావతిని శాశ్వత రాజధానిగా గుర్తించి దానికి చట్టబద్ధత కల్పించడం ఈ బిల్లు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. దీనికి మా జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరపున, పార్లమెంటు సభ్యుడిగా జనసేన పార్టీ మా ఎంపీల తరపున ఆంధ్రప్రదేశ్కి రాజధాని ఎప్పటికీ ఒకే రాజధాని, అది అమరావతి అని చెప్పేసి మా పూర్తి సంపూర్ణ మద్దతు ఈ బిల్లుకి తెలియజేస్తున్నాము అధ్యక్ష. ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజధాని ఎక్కడా ఉండాలనేటువంటి విషయం మీద గత ప్రభుత్వం చేంజ్ చేసి చాలా ఇబ్బందులు కలిగజేసింది. అంతకుముందు ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్లియర్గా అమరావతి రాజధాని అని చెప్పి డిక్లేర్ చేశారు. ఆ తర్వాత మొన్న జరిగినటువంటి కూటమి ఎలక్షన్స్లో 2004లో కూటమి తరపున జనసేన పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ, బీజేపీ కలిసి పోటీ చేసి ఎన్నికల్లో మేము ఇచ్చినటువంటి ప్రామిసుల్లో ప్రధానమైనటువంటి హామీ, మేము అధికారంలోకి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజధాని అమరావతి అని చెప్పాం. ప్రజలందరూ దాన్ని నమ్మారు, విశ్వసించారు. మరి మాకు 175 అసెంబ్లీ సీట్లకు గాను 164 మంచి మెజార్టీ ఇచ్చి వాళ్ళకి కేవలం 11 మాత్రమే ఇచ్చి కూటమిని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చారు. జనసేన పార్టీని గురించి ఒక్క నిమిషం చెప్పాలంటే, మేము కంటెస్ట్ చేసినటువంటి 21 అసెంబ్లీకి 21 గెలిచాం, 2 పార్లమెంట్కి 2 గెలిచాం. మేము మరి హైయెస్ట్ స్ట్రైక్ రేట్ తోటి మరి దీన్ని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చాం. అయితే వాళ్ళు వైజాగ్ అన్నటువంటి విషయాన్ని ప్రస్తావించినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ముఖ్య విషయం కూడా చెప్పాలి అధ్యక్ష. వైజాగ్లో మా పార్టీ అంటే మా కూటమి తరఫున పోటీ చేసినటువంటి భరత్ గారు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు వైసీపీ వాళ్ళు ఏదైతే వైజాగ్ అని చెప్పారో దాన్ని కాదు అని చెప్పి మా పార్టీ అభ్యర్థికి 5,04,000 మెజార్టీ ఇవ్వటం, అది పూర్తిగా అమరావతి రాజధాని అని చెప్పటం అనే దానికి ఒక నిదర్శనం అధ్యక్ష.
ఇటువంటి పూర్తి సంపూర్ణ మద్దతు ఉన్నటువంటి ప్రజల మద్దతు ఉన్నటువంటి అమరావతిని ఎప్పుడు అమరావతి క్యాపిటల్గా ఉంచాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటా ఉన్నా మా పార్టీ తరఫున. అదే రకంగా 2014-16లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో 29,000 మంది రైతులు 34,000 ఎకరాలు 88 రోజుల్లో స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారు. వాళ్ళని మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి అధ్యక్ష. అయితే వాళ్ళకి పెట్టినటువంటి ఇబ్బందులు, రైతులకు పెట్టినటువంటి ఇబ్బందులు, వాళ్ళు దాదాపు 1631 రోజులుగా వాళ్ళు చేసినటువంటి పోరాటానికి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే అనేక మంది చందాలు ఇచ్చి మరి ఆ ఉద్యమానికి సపోర్ట్ చేశారు. సో దాన్ని మరి వాళ్ళు అంచెలంచెలుగా దాన్ని ఉద్యమం చేసి కోట్లు ఖర్చు చేసి ఈరోజు రాజధానిని కాపాడుకోగలిగారంటే అది రైతుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఒక దృఢ సంకల్పం అధ్యక్ష. అదే రకంగా చివరిగా నేను చెప్పదలుచుకుంది, ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త జెఫ్రీ సాక్స్ అభిప్రాయం ప్రకారంగా, ఎందుకంటే ఈ మాట చెప్తున్నానంటే అధ్యక్ష, అమరావతికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటిది మచిలీపట్నం పోర్టు ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ క్యాపిటల్ సిటీ కూడా బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అందుకని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త జెఫ్రీ సాక్స్ అభిప్రాయం ప్రకారంగా ప్రధాన పోర్టుల చుట్టూ ఏర్పడినటువంటి నగరాలు చారిత్రపరంగా ఆర్థిక అభివృద్ధి, వాణిజ్యం మరియు గ్లోబలైజేషన్ ప్రధానంగా ఇంధనంగా నిలుస్తాయి. జెఫ్రీ సాక్స్ అభిప్రాయం ప్రకారంగా సముద్ర వాణిజ్య మార్గాలను సులువుగా చేరుకోవటం మరియు ప్రపంచ వాణిజ్యంలో భాగం కావటం దేశాలు అభివృద్ధి చెందటానికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి. ఇందులో భాగంగా అతి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి పోర్టు మచిలీపట్నం పోర్టు కాబట్టి క్యాపిటల్ సిటీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం అక్కడ ఒక 5,000 ఎకరాలు ల్యాండ్ ఉంది కాబట్టి అన్ని విధాలుగా ఆర్థిక సహాయం చేసి దాన్ని ఇండస్ట్రియల్ హబుల్గా మచిలీపట్నాన్ని మార్చినట్లయితే అనేక మందికి, వేల మందికి అక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి, మరి ఇండస్ట్రియల్గా చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ, చివరిగా విభజన హామీలో ఉన్నటువంటి మరి చట్టంలో ఉన్నటువంటి హామీలు ఎంతవరకు అయితే చేయగలుగుతారో ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చేసి ఇన్సెంటివ్స్గా ఇచ్చినట్లయితే ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా చాలా సంతోషిస్తారని చెప్తూ మరి ఒకసారి ఈ బిల్లుకి జనసేన పార్టీ, పవన్ కళ్యాణ్ మేము సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి जी. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं तेलुगु स्टेट तेलंगाना से आता हूं, इसलिए आपका अनुमति से मैं तेलुगु में बात करना चाहता हूं. మనకందరికీ తెలుసు, సుదీర్ఘమైనటువంటి పోరాటం తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రము విడిపోవడం జరిగింది. ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ 1969లో మరి 369 మంది విద్యార్థులను తుపాకులతో కాల్చి చంపింది జై తెలంగాణ అన్నందుకు. ఆ తర్వాత ఇటీవల జరిగినటువంటి చివరి దశ పోరాటంలో కూడా 1,200 మంది తెలంగాణ ప్రజలు ఆత్మ బలిదానంతో తెలంగాణ వచ్చింది. చివరకు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి 4 కోట్ల మంది ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మెడలు వంచి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నారు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వము లేక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా మరి మనతో విడిపోయినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము తెలంగాణ అన్నదమ్ముల్లాగా ఒక పోటీ తత్వంతో ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణంలో 2 రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండింది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ రోజు వరకు కూడా అమరావతి రాష్ట్ర రాజధాని అని చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి లేకుండా ఈరోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి రావడము, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు మా రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్, మాకు స్టేట్ క్యాపిటల్ లేదు అని చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి రావడము చాలా దురదృష్టకరం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవిస్తున్నాను. అంతేకాకుండా అధ్యక్ష, ఈరోజు బిల్లు మాట్లాడుతూ కొంతమంది కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధించినటువంటి సభ్యులు మాకు ఎయిర్పోర్టు లేదని చెప్తా ఉన్నారు. ఎవరి పాపం అని అడుగుతా ఉన్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 8 ఎయిర్పోర్ట్లు ఉన్నాయంటే ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసింది. మరి ఈరోజు తెలంగాణలో ఒకే ఒక ఎయిర్పోర్టు ఉన్నదంటే మరి ఎవరు పొరపాటు అడుగుతున్నాను. భోగాపురంలో ఇటీవల మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత మరి అద్భుతమైనటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది. విశాఖపట్నంలో ఎయిర్పోర్ట్ గతంలో ఉంది, రాజమండ్రిలో ఉండింది, తిరుపతిలో ఉన్నది, అదేవిధంగా మరి పుట్టపర్తిలో ఉంది, కడపలో ఉంది, కర్నూలులో ఉంది. మరి కనీసము మరి తెలంగాణలో కొత్తగూడెంలో, అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్లో కావాలి, వరంగల్లో కావాలంటే 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండి ల్యాండ్ ఇవ్వలేదు.
వరంగల్ ఎయిర్పోర్టుకు ఈ రోజు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో కూడా వరంగల్ ఎయిర్పోర్టు విషయంలో కానీ, గతంలో ఆదిలాబాద్ విషయంలో కానీ, కొత్తగూడెం విషయంలో కానీ నిర్లక్ష్యం చేసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం ఉన్నన్ని రోజులు తెలంగాణలో రైల్వేల అభివృద్ధి జరగలేదు, రైల్వేలు వెనుకబడిపోయినాయి, జాతీయ రహదారులు అభివృద్ధి జరగలేదు, అనేక రకాలుగా తెలంగాణ వెనుకబడింది. కాబట్టే తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది. ఈరోజు నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అమరావతి రాష్ట్ర రాజధాని కావాలని గత అనేక రోజులుగా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఈరోజు దానికి ఒక సానుకూలమైనటువంటి పరిస్థితి రావడం ఏదవుతుందో చాలా సంతోషమని మనం చేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా అన్నదమ్ముల్లాగా ఈ రెండు రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, వేగవంతమైనటువంటి అభివృద్ధి జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికోసమే ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ రావడం జరిగింది. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వము పూర్తి స్థాయిలో మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అండగా నిలబడింది. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కూడా గత అనేక రోజులుగా వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ కావాలని నేను గతంలో ఉత్తరం రాస్తే అప్పుడున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ యొక్క వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్కి అనుమతి ఇవ్వలేదు. రైల్వేలు పూర్తిగా తెలంగాణ ప్రజలకు రైల్వేలకు పూర్తిగా నష్టం చేసింది గతంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత 42 రైల్వే స్టేషన్లు ఏకకాలంలో పునరభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి ఘనత తెలంగాణలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది. గతంలో ఉన్నటువంటి 2500 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారి ఉంటే ఈ యొక్క నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము గత 11 సంవత్సరాలలో అదనంగా 3000 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారులు సుమారు 1,30,000 కోట్ల రూపాయల ఖర్చు పెట్టి ఈరోజు తెలంగాణలో జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మనం చేస్తా ఉన్నాను, తెలంగాణలో అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇటు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్లక్ష్యం చేసింది. కాబట్టి ఈరోజు ఈ రెండు రాష్ట్రాలలో కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. నేను తెలంగాణ ప్రజల తరఫున ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అమరావతి ఏర్పాటుకు మనస్ఫూర్తిగా మద్దతు ఇస్తా ఉన్నాము. ఖచ్చితంగా అమరావతి కూడా అభివృద్ధి జరగాలి, క్యాపిటల్ కూడా అభివృద్ధి జరగాలి. తెలంగాణ కూడా ఈరోజు గతంలో 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబం దోచుకుంటే ఈరోజు ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ పేరుతో కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణను దోచుకుంటుంది. దీని నుంచి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు జాగృతం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏ లక్ష్యం కోసమైతే తెలంగాణ తెచ్చుకున్నారో 4 కోట్ల మంది ప్రజలు ఆ లక్ష్యం నెరవేరడం లేదు. ఆ రకంగా తెలంగాణలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో అలవాటులాగా తెలంగాణ దోపిడీ చేస్తూ ఉంది. ఈరోజు తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత అప్పుల రాష్ట్రంగా మార్చేశారు. ఎంతో సదుద్దేశంతో తెలంగాణ ప్రజలు పోరాటం చేస్తే ఆ పోరాటం ఈరోజు నవ్వుల పాలు చేసే విధంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ తెలంగాణను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ 2 రాష్ట్రాలు కూడా అన్నదమ్ములాగా అభివృద్ధి జరగాల అవసరం ఉందని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बैठो ना अभी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। आप बैठिएगा प्लीज, आप बोलिए सर। I rise here today to strongly support Amaravati as the rightful capital of Andhra Pradesh. I have seen my friends from TDP fighting for this capital since last 12 years in this parliament. I have seen my friend, now Minister Ram Mohan Naidu also, fighting for the capital of Amaravati, capital of Andhra Pradesh, that is Amaravati. I think this is a very important day in the life of people of Andhra Pradesh, farmers of Andhra Pradesh, जो कई सालों से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और परमानेंट कैपिटल आंध्र प्रदेश को मिलेगा जिससे आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट होगा, अमरावती का डेवलपमेंट होगा, फार्मर्स का डेवलपमेंट होगा। मैं यहाँ पर एक
जो रिलेशन है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये भी यहाँ पर उजागर करना चाहूँगा। जो कृष्णा नदी है वो हमारे महाराष्ट्र महाबलेश्वर, जो मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ से शुरुआत होती है और वो जाकर कनकदुर्गा के फुट हिल्स में विजयवाड़ा, वहाँ पर जाके खत्म होती है और समंदर को जाकर मिलती है। मुझे लगता है ये रिलेशन जो है ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का कई सालों से है। छत्रपति शिवाजी महाराज भी 1670 में श्री शैलम गए थे दर्शन लेने के लिए और उसी श्री शैलम में शिवाजी स्मृति केंद्र भी वहां पर बना है, वहां पर शिवाजी महाराज जी का मंदिर भी है। इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का जो रिलेशन है उसे उजागर करने के लिए मेरे सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सपोर्ट में, सभी आंध्र प्रदेश के लोगों के सपोर्ट में, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये लैंड पुलिंग मॉडल आंध्र प्रदेश में अपनाया गया है ये एक सक्सेसफुल मॉडल होगा, क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र में सिडको में हमने लैंड पुलिंग मॉडल के माध्यम से 12.5% और लेटेस्ट में 22.5% में लोगों को डेवलप लैंड्स फिर से दिए हैं। यही काम जो है अमरावती में होगा। मुझे लगता है कि लोगों ने अपनी लैंड खुद से देना, देखिए डेवलपमेंट में बहुत इसके पहले भी हम लोग ने देखा है कि जबरन लैंड लोग लेते हैं। महाराष्ट्र में भी जब हम लोग ने मुंबई नागपुर हाईवे कॉरिडोर किया तभी हमने लोगों को 4 गुना कंपेंसेशन दिया। लोगों ने खुद आकर वहां पर लैंड दी और 4.5 साल में मुंबई नागपुर हाईवे हम लोग, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब जब MSRDC मिनिस्टर थे उन्होंने ये किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज फिर से हम लोग और चंद्रबाबू जी के नेतृत्व में अमरावती को कैपिटल डेवलप कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा है कि चंद्रबाबू जी का नेतृत्व किस प्रकार से हैदराबाद सिटी को IT हब करके डेवलप किया है। अरे आपके राहुल गांधी से तो अच्छा है चंद्रबाबू नायडू। नहीं, आप समाप्त कीजिए। नहीं, आप कृपया समाप्त कीजिए। प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। IT हब तो लोगों ने पहले ही देखा है कि किस प्रकार से एक डेवलप सिटी होती है। हैदराबाद आज एक मॉडल शहर है, IT हब है। आने वाले समय में अमरावती भी उसी तरीके का एक डेवलप शहर, एक डेवलप कैपिटल बन के उभरेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैं फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उसी के साथ में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी को बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। आंध्र प्रदेश के सभी जनताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज, और अभिनंदन भी करता हूँ कि आज एक ऐतिहासिक दिन आज आंध्र प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी श्री नित्यानंद राय जी। माननीय महोदय, आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 1 अप्रैल 2026 को इस सम्मानित सदन के समक्ष रखा गया है और इसमें 2 घंटा तक चर्चा की गई और 13 माननीय सांसदों ने अपने महत्वपूर्ण विचार यहाँ व्यक्त किए हैं। और आज सदन में विचार व्यक्त के संबंध में मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि इस विधेयक का सबों ने इस अप्रैल के सम्मानित से जो संकल्प रखा गया है, जो आंध्र प्रदेश विधानसभा से यहाँ आया है, उस पर सब लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की है। महोदय, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2004 के अनुसार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 23/4/2015 की अधिसूचना द्वारा अमरावती को राजधानी शहर के रूप में नामित किया। वर्तमान स्थिति में के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 28/3/2026 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारत सरकार से आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को वैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन 2014 की धारा 5 की उपधारा 2 और इसके स्पष्टीकरण में संशोधन करने का अनुरोध किया है। विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि निर्दिष्ट अवधि के
अवसान पर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अमरावती नई राजधानी होगी और अमरावती को एक स्पष्टीकरण दिया गया है। आंध्र प्रदेश की विधानसभा के दिनांक 28/3/2026 के संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी के संबंध में वैधानिक अस्पष्टता का उपबंध करने के लिए दिनांक 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी के रूप में अधिनियम में अमरावती का नाम सम्मिलित करने के लिए उनकी धारा 3 की उपधारा 2 का संशोधन करने का प्रस्ताव है। अतः मैं माननीय सदन से आग्रह करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को पारित कर आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी के संबंध में वैधानिक स्पष्टता सुनिश्चित करने में अपना सहयोग दे। धन्यवाद। माननीय श्री एक ही सेकंड, माननीय श्री मल्लू रवि जी, मैं आपको चांस दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। मल्लू रवि सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी चांस टू स्पीक ऑन दिस बिल सर। बेसिकली वी आर सपोर्टिंग दिस Amaravati bill, but at the same time sir, I would like to request the Honorable Prime Minister to implement the promises given to Telangana also. When it comes to IIM, when it comes to steel factory, when it comes to irrigation project to be taken as one of the national project, and many other things are pending for Telangana, sir. Similar to this bill, I would like our government, particularly our Telangana ministers, to take initiative to get all these things done for Telangana. Sir, 1 minute more. Our Chief Minister Revanth Reddy, after becoming Chief Minister, he has come and met the Civil Aviation Minister number of times, along with all MPs, and represented for more number of airports there in Telangana. But unfortunately, our Honorable Minister from Kishan Reddy Garu is telling that we are not asking. We are also asking the central government that we are ready to give the land also. Not. पप्पू यादव जी, आप बोलिए। मैं इसके नहीं, you made your point, sir. Please sit down. Yes, पप्पू यादव जी बोलिए। मैं खड़ा हूँ। मेरा सिर्फ इसमें इतना है, इसमें दलित, किसान और अनुसूचित जनजाति और जनजाति, इनकी आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा आवश्यक है। मैं चंद्रबाबू नायडू के व्यक्तिगत जीवन के साथ, आज नहीं सर, जब प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी बने थे उसके पहले चंद्रबाबू नायडू के देश के प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस ने लाया। मैं तेलंगाना और इस दोनों राज्य की जो आज व्यक्तिगत सम्मान बढ़े हैं उसमें सोनिया गांधी जी की सबसे बड़ी भूमिका और कांग्रेस की रही, जिसके चलते तेलंगाना और मेरा एक रिक्वेस्ट इतने है कि बिहार को विशेष, माननीय श्रीमती हरीशमती जी, क्योंकि बिहार का बंटवारा हुआ था, बिहार को मिल गया। बोलिए मैडम, आप बोलिएगा। समय इधर इस बिल के हक में मैं खड़ी हूं और आंध्र प्रदेश के वासियों को मैं बधाई देती हूं और इस सारे हाउस को ये बताना चाहूंगी कि आज जहां सारे प्रदेशों के पास अपनी राजधानी है, इकलौता एक पंजाब है जिसके 1966 से, जब से पंजाब के टुकड़े आज तक राजधानी नहीं आए, चाहे 1966 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में चंडीगढ़ हमारी राजधानी हमें दी गई थी, लेकिन आज से 80-60 साल हो गए आज तक। पहले इंदिरा गांधी ने कहा 1970 में कि वो देंगे, उसके पास राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड में 1986 भी चले गए, 70 भी चले गए। నమస్కారం గౌరవ స్పీకర్ గారు మీరు మాట్లాడండి। అప్పలనాయుడు గారు మీరు మాట్లాడండి। నమస్కారం మేడం, అప్పలనాయుడు గారు మీరు మాట్లాడండి। ఈ సభలో నేను మాట్లాడినందుకు కేవలం ఒక బిల్లు గురించి కాదు, ఇది 5 కోట్ల ఆంధ్రుల ఆత్మ గౌరవం గురించి, 29,000 మంది రైతులు త్యాగాల పునాదుల మీద నిర్మిస్తున్న నవ్య ఆంధ్ర భవిష్యత్తు గురించి నేను మాట్లాడుతున్నానని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాను। రైతు అంటే లోకానికి అన్నం పెట్టేవాడు కాదు, నేలను నమ్ముకొని కాపరిగా ఉండి, రైతు భూమి అంటే కేవలం సింటూ ఎకరాల లెక్క కాదు, అది రక్తం పంచుకు పుట్టిన బిడ్డతో సమానం అని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేసుకుంటూ
తల్లికి బిడ్డకు ఉండే పేగు బంధం ఎలాంటిదో రైతుకి మట్టితో ఉండే అనుబంధం అలాంటిదని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాం. నాగలు పెట్టిన పంటలు సాగు చేస్తున్న ఒక రైతు బిడ్డగా నా మనోభావాల్ని తమ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాం. నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణం కోసం భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం నా ఇల్లు నా పొలం ముఖ్యం కాదు, మన రాష్ట్ర ముఖ్యమని చాటి చెప్తూ 33,000 ఎకరాల సస్యమ భూమిని రాజధాని కోసం దానం చేసిన అమరావతిలో త్యాగం ప్రపంచ చరిత్రలో అపూర్వ అద్భుతమని మీ ద్వారా మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి సభ్యుల కోసం దేశం మొత్తం ఈ రోజు అమరావతికి మద్దతు తెలిపితే జగన్మోహన్ రెడ్డి సభ్యులు ఆనాడు అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి బెంగళూరు ప్యాలెస్ నిద్రపోయాడు. ఈ రోజు దేశం మొత్తం సభ్యులు 140 కోట్ల ప్రజానీకం వేదికైన ఈ పార్లమెంట్ లో అమరావతి తీర్మానం జరుగుతుంటే పార్లమెంట్ వైసీపీ సభ్యులు ఈ రోజు వాకౌట్ చేశారు. ఎంత దుర్మార్గమైన చర్య చూడండి. అమరావతి రైతులు ఈ రోజు త్యాగం చేసి ఈ రోజు అమరావతి రైతులు దేవతల రాజధాని అమరావతిని వైసీపీ నాయకులు ఎంతో అవమానం చేశారు. సుశానం అన్నారు, అమరావతికి చాలా అవమానం చేశారు. మా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజానీకానికి తరపున ఈ రోజు అమరావతి మద్దతు తెలిపిన ప్రజానీకానికి రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए. మీరు దయచేసి కూర్చోండి. प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है. अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी. प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. खंड 2 विधेयक का अंग बना. प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने. मंत्री अब यह प्रस्ताव करे कि विधेयक को पारित किए जाए. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए. प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ. आइटम नंबर 9 जन विश्वास विधेयक 2026. माननीय मंत्री जी. Honorable Speaker, sir, I move that the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026 be taken into consideration. This bill seeks to enhance the ease of doing business and ease of living by decriminalizing minor offences. It proposes to amend 79 central acts administered by 23 ministries. Honorable Minister would like to speak further. You can speak, sir. I think we can open it up for discussions. I will conclude at the end. माननीय श्री चेवला किरण कुमार रेड्डी जी. Honorable Speaker, sir, thank you for giving me this opportunity. I stand here today to speak on. I stand here today to speak on hypocrisy of Jan Vishwas Bill 2026, which speaks of
discriminalizing multiple laws, but in reality is actually normalizing corruption, fraud, and corporate non-compliance. Speaker, sir, this bill that public trust, but the bill betrays it. It's bluntly asking us to trade justice for revenue and accountability with administrative convenience. In the name of reform, what the bill is actually handling us is simply receipt of mistakes. We are told that the financial trade of justice is a good idea because it will encourage ease of doing business in the country. But let me tell you, sir, the government decision to remove punishment across multiple laws is no less than a disaster in the making. The biggest concern I would like to flag is the serious threat to the women's safety that this bill presents, especially at the time when every woman in the country deserves stronger protection, not weaker laws. Under the Railways Act, Section 145, dealing with the drunken and disorderly behavior on trains, currently carries only 24 hours of imprisonment, which is laughable, inadequate, which we see daily incidents of harassment faced by women passengers. And also Section 147 on trespassing into railway properties carry only 3 months, which should be at least 6 months, because the railway security is a matter of both national safety and women's protection. And also Section 162 that protects the women reserved compartments from male intrusions must strictly imprisonment, but this is not a mere rule of violation. It is a question of every woman's dignity and right to safe travel. There are also the bill has removed the necessary deterrents required for ensuring public health and safety also. Previously, provisions of Drugs and Cosmetics Act were meant to ensure that the profit-making incentives do not come to the cost of public health. Now, this government has removed imprisonment for those who manufacture and sell fake medicines and fraudulent cosmetics. This is at a time when illegal factories are already operating without licenses and duplicating the product. Rackets are running openly in many of the cities in India. Reducing the punishment from imprisonment to mere 1 lakh fine is not a reform. It is an open invitation to endanger the health of every ordinary Indian who cannot tell a genuine product from a dangerous or fake product. So it is completely bizarre that the Section 51, which is also one of the sections in Disaster Management Act, this government has shockingly reduced the punishment for obstructing disaster relief operations also. A crime that previously carried an imprisonment up to 1 year, up to 2 years at least, when the lives were lost, has now been cut down to merely 6 months and 1 year respectively, approximately. So I ask this House, what logic explains putting our citizens' lives under threat? Under rising environmental risk and climate change threats, this government believes that obstructing rescue operations with 1 year punishment is sufficient. Sir, this is not reform, this is administrative surrender, and I oppose it completely. Under Section 15 of Petroleum and Mineral Pipeline Act 1962, this government upped the minimum punishment for pipeline sabotage, damage and illegal interference. Earlier, this crime carried a minimum 10 years, extendable to life imprisonment or even death. But now the punishment has reduced to minimum of just 5 years, sir. Pipelines carry the energy that powers this nation, and any sabotage or illegal interference is not a minor offense, but a direct attack on the national infrastructure and public safety. I therefore demand the original provisions be fully restored, because when you reduce the punishment for crimes against national infrastructure, you are not easing business, sir. You are allowing harm to this country. Sir, farmers and artisans, from one of the strongest backbone of this country, as my constituency, Bongir, at the time when these sections are already facing grave economic and environmental distress, instead of providing better support from the government, this bill has done the complete opposite. It has removed the imprisonment from the Cattle Trespassing Act, meaning powerful individuals who repeatedly destroy a small farmer's standing crops will now face nothing more than a small fine. For our farmers, the destruction of even one harvest can mean starvation. And the existing law is only protection. So the government has now stripped our farmers from this safety too.
This injustice has been done against our handloom weavers also. By removing imprisonment from the Handloom Reservation Act, the government is asking us to allow large manufacturers to freely flood the market with fake machine-made products at just 10,000 rupees fine, wiping out the livelihood of thousands of artisans. Our belief of the farmers and traditional craftsmen of my constituency, state and nation, I protest against the government move from rule of law to rule of fines. I would therefore like to conclude, Honorable Speaker, sir, that this reform is asking us to support the systematic dismantling of the fear of law. It is asking us to accept the money in the exchange of fake medicines that poison our children, to pipeline sabotage that threatens national security, to disaster relief being obstructed without consequences, to farmers and the weavers left defenseless against exploitation. By removing imprisonment across 21 laws, it is replacing the iron hand of justice with a cash box, telling every fraudster, every saboteur, every exploiter in this country, if you have money, you have nothing to fear. So, sir, this is what it is. This law has to be rethink about, and because the 21 laws they have erased the punishment. So this is my input. So thank you very much for giving me. माननीय श्री तेजस्वी सूर्या जी. Thank you for this opportunity. At the very outset, I want to express my gratitude and congratulations to Prime Minister Narendra Modi for bringing this massive decriminalization exercise, which is the largest in independent India's history. In one legislation, the government is decriminalizing 1,000 plus minor offenses. Perhaps this is a model for rest of the world to follow. Speaker, sir, I would also want to thank and congratulate the minister in charge for this exercise, Shri Piyush Goyal ji, who led this effort along with his team by literally burning the midnight oil and identifying across 78 different legislations minor offenses which were procedural errors, which were regulatory incongruencies, which were a hindrance to doing business in India, which had contributed to India's regulatory cholesterol. I would want to congratulate his team for the marvelous exercise that they have done by bringing in the Jan Vishwas bill, which is not just a story in numbers, but is most importantly an indication of the philosophical shift that the government has taken. From avishwas to Vishwas, from suspicion to trust, from regulator to facilitator. And this is the foundation of building a Viksit Bharat. Speaker, sir, the Prime Minister and our leadership gave me the opportunity to be the chairman of the select committee that went into details of the Jan Vishwas bill. And we had the good fortune of assisting the Parliament in framing this law in a more comprehensive manner. When I was given this responsibility, I met the Honorable Prime Minister and I took his guidance. And when I requested him as to what his specific input would be on how the committee should approach this work, the Prime Minister said only one sentence, and I want to recall that with a lot of gratitude. He said, Bharat ab sirf chalega nahi, Bharat daudega. And all those provisions, all those obsolete, archaic legislations which have caged India's entrepreneurial spirit, usko dhoond ke nikalna hai, expand the scope of the committee, identify as many provisions as possible, and in one go, we must decriminalize as many minor offenses as possible so that the ease of doing business and ease of living for our citizens is enhanced. मुझे आज ये कहते हुए अत्यंत गर्व है, अध्यक्ष जी,
कि कमिटी के सभी सदस्य, I was just hearing to the speaker from the Congress saying that they opposed this bill tooth and nail, but there were many members of the Congress party in the select committee. Every single provision, every single recommendation of the select committee has been done in a unanimous manner. Every single person, irrespective of the political complexion, has supported the recommendations we have made. Adhyakshji, the original bill had 17 acts covering 10 ministries with a total of 355 provisions. As per the Prime Minister's guidance to enhance the comprehensive nature of this bill, to help the common man, the common citizen in ease of living, we enhanced the scope of the exercise. And today, the government has brought a total of 689 provisions across 78 legislations, resulting in the removal of 1,000 plus criminal offences. This is the largest decriminalized exercise in the independent India's history. Adhyakshji, I want to very briefly mention what are the provisions that we have handled here. The speaker from the Congress party mentioned that this is going to enhance corruption, this is administrative surrender, and so on and so forth. But the philosophy behind introducing these minor offenses, making even procedural errors into criminal prosecution-worthy crimes, had literally crippled the country's entrepreneurial spirit. And this philosophy had left nobody. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष जी. एक एक्ट था कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871. 155 years old एक्ट था ये, ब्रिटिश के जमाने का एक्ट. एंड व्हाट डज दिस डीक्रिमिनलाइज? अगर किसी एक किसान के गाय उनके जानबूझ के नहीं देखते हुए, विदाउट हिज नॉलेज, वो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टी पे चले जाते, then he was subjected to imprisonment. ये इस प्रकार के एंटी फार्मर लेजिस्लेशन 155 ईयर से भारत के स्टैट्यूट बुक्स में था. और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान को मदद करने के लिए इसको हमने डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, उनको ताकत दे रहे हैं. ये छोटे छोटे ऑफेंसेस थे. ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के किसी को कर रहे थे या इसमें कुछ दुरुद्देश्य था या क्रिमिनल इंटेंट था, बट दे हैड ब्रॉट दिस काइंड ऑफ प्रोविजंस. अध्यक्ष जी, असम में, वेस्ट बंगाल में लाखों करोड़ों संख्या में चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं. अगर चाय बागान के कर्मचारी लेडजर में, अकाउंटिंग में कुछ गलती की, 10 डालने के जगह में उन्होंने 11 डाल दिए, तो उनको 3 महीने का सजा था. ये छोटे छोटे गलतियां, प्रोसीजरल एरर्स, क्लरिकल एरर्स, इसके लिए जेल भेजने का प्रावधान था, उसको हम खत्म कर रहे हैं. अध्यक्ष जी, आज आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, बड़े संख्या में वहां कॉयर की इंडस्ट्री है और वहां प्रॉन के सेलिंग का भी एक बड़ा इंडस्ट्री है, फिशिंग का. बट अंडर द एम्पीडा एक्ट एंड अंडर द कॉयर इंडस्ट्री एक्ट, फ्रिवलस प्रोसीजरल एरर्स वर अट्रैक्टिंग 6 months, 1 year, 2 years of imprisonment. This was always keeping our small farmers, fishermen, under the fear of prosecution. इसको हम चेंज कर रहे हैं, and we are giving them empowerment and strength. And पेटेंट एक्ट में अगर कोई टेक्नोलॉजिस्ट है, इनोवेशन कर रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग हिज पेटेंट, इफ देयर इज एनी प्रोसीजरल एरर, ही वुड बी फेसिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. सो ये जो कांग्रेस की, ब्रिटिश की मानसिकता थी 70 साल की, ये किसी को नहीं छोड़े थे. छोटे किसान से लेकर छोटे दुकानदार तक, छोटे उद्यमी से लेकर बड़े व्यापारी तक, और लैब में काम कर रहे टेक्नोलॉजी इनोवेटर तक, सबको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के डर लगाकर सबको अंदर भेजने का एक प्रोसिक्यूशन का डर, ये इस प्रकार के फिलॉसफी पैदा कर दिए थे. टुडे all these minor offenses are being decriminalized, and an era of faith-based, trust-based, empowerment-based, facilitation-based mechanism is being brought in because of the Jan Vishwas bill. Adhyakshji, along with this, 2 important dimensions of ease of living is also introduced.
एनडीएमसी में, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पिछले 30 साल से यहां के लोगों का डिमांड था, दिल्ली में 2 प्रकार के प्रॉपर्टी टैक्सेशन होता था। यूनिट बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम ओल्ड दिल्ली में चालू था, बट न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके जो थे वहां दूसरी प्रकार की टैक्सेशन होते थे। And this was a very anomalous situation where one city had 2 different property taxation systems. मैं विशेष रूप में गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। 30 साल के जो मांग दिल्ली के, न्यू दिल्ली निवासियों के जो मांग थे, it is finally been approved and one city one tax का यूनिट एरिया टैक्सेशन आज लागू हो चुका है। इसमें मोटर व्हीकल्स कायदे का भी कुछ इंप्रूवमेंट्स हमने किए हैं। अध्यक्ष जी, यू आर अवेयर दैट इफ देयर इज एन एक्सीडेंट एंड समबडी लूजेस अ लिम्ब और लाइफ, सरकार की ओर से कभी कभार एक्स ग्रेशिया पेमेंट देते हैं, कॉम्पनसेशन देते हैं। अभी तक कानून में यह प्रावधान था कि अगर किसी व्यक्ति को, ये परिवार को सरकार की ओर से एक्स ग्रेशिया पेमेंट अगर मिलेगा तो प्राइवेट कंपनी जो उनको इंश्योरेंस क्लेम देगा उससे वो डिडक्ट हो जाएगा। दिस इज नाउ रिमूव्ड एंड we have amended in such a manner that along with the ex gratia payment that they will receive from government, a full settlement from the insurance company will be provided to those who suffer from an accident. ये आम आदमी के जीवन के आसानी करने का तरीका है। अध्यक्ष जी, छोटे छोटे इस प्रावधानों में बहुत बड़े दिक्कतें होते थे। फॉर एग्जाम्पल, ईज ऑफ लिविंग के जब हम बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ठीक समय पे रिन्यूअल नहीं किए तो उनको इमीडिएटली पकड़ते थे, ये होता था, फाइन होता था। हमने इस प्रावधान के अंदर 1 साल के उनको एक एडिशनल प्रोविजन दे रहे, फॉर 1 एंटायर ईयर before the expiry of his term he can apply for driving license and get it done, and upon expiry for 1 month 30 full days he will have a grace period where the driving license will be valid and he can use it. ऐसे छोटे छोटे प्रावधान, there are hundreds of such provisions अध्यक्ष जी, that is going to enhance the ease of living of the people. But अध्यक्ष जी, जब मैं इस सब बात कर रहा हूं, मैं एक डिस्कशन को थोड़ा ब्रॉड करते हुए, थोड़ा विस्तार करते हुए, मैं एक स्पेसिफिक आरोप जो अपने कांग्रेस के साथी जो आरोप हमने अपने ऊपर लगाए कि ये बिल करप्शन को बढ़ाएगा, ये बिल एडमिनिस्ट्रेटिव सरेंडर है, इसको मैं ठीक से जवाब देना चाहता हूं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, जब हम सेलेक्ट कमेटी में बैठ के 80 से अधिक कानूनों के स्टडी हम कर रहे थे, कमेटी के सभी सदस्यों को यह लगा कि इस देश अगर आज भी पर कैपिटा इनकम में पीछे है, आज भी हम इतने बड़े गरीब पॉपुलेशन को हम देश में हैं, तो इसके पीछे इसी प्रकार के सब चीजों को क्रिमिनलाइज करने का, भारत के एंटरप्रेन्योरियल ताकत को एक प्रकार से शैकल करने की जो सोच थी, वही सबसे बड़ा कारण है। दिस वाज द रियलाइजेशन एंड लर्निंग, एंड आई वांट टू एलैबोरेट ऑन दिस अध्यक्ष जी। देयर आर 26,134 provisions, 36,134 provisions under which a person doing business in India can be jailed. छोटे छोटे प्रोविजंस, अगर आप ठीक से फॉर्म फाइलिंग नहीं किए, यू कैन बी जेल्ड। आपके दुकान के व्हाइट वॉशिंग ठीक से नहीं किए, यू कैन बी जेल्ड। फैक्ट्रीज में ठीक प्रकार के स्पिटून नहीं लगाए, यू कैन बी जेल्ड। जहां जहां आप फाइन के इस्तेमाल कर सकते थे, वार्निंग का इस्तेमाल कर सकते थे, यू स्टार्टेड creating a paranoia, fear of imprisonment among the people who were doing business in India. And this literally crippled the country's economy and the country's entrepreneurial spirit. Adhyaksh ji, how did this 26,000 provisions, more than 69,000 compliances for business, how did this come about? ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये शुरू हो गया. It is not that one day one government made this. This was a colonial legacy.
We inherited the system from the British, and this cage that the Congress party inherited in 1950s from the British, they tightened it further, and what was a maze was converted into a complex labyrinth of complex regulations. I'll give you an example, Adhyaksha. In 1987, 1950s, after the First World War, First War of Indian Independence, after the East India Company came into picture, they introduced multiple legislations that were designed to keep Indian businesses small, to keep Indian businesses dependent and always afraid of prosecution. The purpose, Adhyaksha, I'll conclude in 10 minutes, I have been given 30 minutes time. That was the purpose of the colonial economic policy, to make India a market for British goods and to not empower or strengthen India to manufacture its own goods. This was the design of the economic policy. We got freed politically in 1947. The natural expectation was that pursuant to political freedom, we will also have economic freedom. But the Congress party, and especially the first Prime Minister Nehru, chose a socialist, Nehruvian socialist policy that crippled the industry further and tightened the control of the state over the country's economy. The cage the British had built, the Congress made it larger and it locked it more tightly. Not that this was not opposed. In 1959, Chakravarti Rajgopalachari, who was called the conscience keeper of Mahatma Gandhi, he opposed this command control nature of the Indian economy, and he launched the Swatantra Party only to promote free market enterprise. His advice was not heeded to. So for almost 70 years, which started with Pandit Nehru, which was carried forward by Indira Gandhi, the socialist license quota permit Raj became stronger and stronger in such a manner that it became overarching, it became the mainstay of how the country's economy was run. And this created two very important hindrances and cultural changes in the Indian economy. The first one was that it created an economy of scarcity, and it also made corruption the mainstream. Because if you criminalize even procedural errors, and if you put in place a system where license has to be taken for everything, to start a factory, to expand capacity, to import, to export, and also, despite all of this, if you succeed, if you were given a 97% tax, then you are opening the doors for creating a black economy. You are incentivizing people to break the law. You are incentivizing people to become corrupt. So this was the system that in the last 40, 50 years we saw successively being done. That is how 26,000 plus provisions came about, which had the power of prosecution, launching criminal prosecution for even minor offenses. Now, Adhyakji, you will be surprised to know that at the peak of the license quota permit Raj, there were 29 central labor legislations, 100 state-level legislations. A factory had to maintain 6 separate attendance registries, 10 different accounts for overtime wages, 5 types of records to maintain annual returns. Even law regulated the height of urinals in workers' washrooms, and if it was any different from what was prescribed, the factory owner could be jailed for 6 months. These were the kind of draconian provisions that was there. So there was a culture where if you wanted to produce, you had to get a license. If you wanted to grow, you had to take permission. And if you succeeded, if you earned something, the government would come and take 97% of the earning by imposing the highest penalty and income tax. This was the mainstay of how the country was run. And these are not numbers and statistics. There are stories, there are anecdotes that top Indian business leaders have now commented that are in public domain. I want to quote only 2 of these, which is so ridiculous today looking back at how the country was governed. We all today speak highly of Infosys and Narayan Murthy. Today, Infosys has a market capitalization of 5 lakh crore rupees. It is employing more than 3.5 lakh people. When Infosys was started and Narayan Murthy had to import 1 computer, he had to make a trip to Delhi 40 to 50 times
for importing one computer. He records this pain, and because he could not afford flight tickets then, he would take train journeys, 40, 50 train journeys across 2 days, 3 days just to import one computer. This was how enterprise was shackled. There is another anecdote, Adhyakji, of K.V. Ramani, one of the co-founders of NASSCOM. The RBI had given him permission to travel on a business trip, 2 nights in Frankfurt and 1 night in Paris. His meeting in Paris got rescheduled and he arrived there a night early. He concluded his business, came back to India. The first thing that he encountered was a notice from RBI asking him, why did you spend 2 nights in Paris, 1 night in Amsterdam when we had given you permission for the opposite? This is how our entrepreneurs were attacked. This is how they were curtailed. This is how entrepreneurial ability innate to Indian spirit was curtailed, shackled, but also corruption was increased. And this facilitated, this created, Adhyakji, a culture where Indian businesses could not expand, could not become globally successful models, and this had a direct result on how much employment India could generate and how much wealth India could generate. I want to give an example on what, I want to take the attention of the House to what this command control economy, this license quota permit Raj of the Nehruvian and the Indira Gandhi years cost India and common Indians in terms of economic growth. अध्यक्ष जी, ये 1960 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम, प्लीज कंक्लूड अध्यक्ष जी, आई हैव बीन गिवन टाइम, आई विल टेक अनदर 10 minutes. अध्यक्ष जी, इंडिया's per capita income in 1960 was $82. South Korea's was $94. Near about the same. China's per capita income in 1960 was around $89. India's was 82. We were almost equal in 1960. I want to compare the story of what happened in the next 30 years. Today, South Korea's per capita income is $33,000, 13 times more than India's. China's per capita income is $12,500, 5 times more of India's. If we compare it with Singapore, with Malaysia, they are 38 times, 16 times more. While we kept on languishing, while India became poorer and poorer, these countries galloped forth, marched forth, and became some of the richest countries, miracle economies. And it was possible because the entrepreneurs of that country were respected, wealth creators were respected, and they were not kept under shackles. When J.R.D. Tata met Pandit Nehru, J.R.D. Tata records that when he communicated to the Prime Minister that Indian entrepreneurs and industries were not making profit, the Prime Minister then told him, don't bring the word profit before me, profit is a dirty word. If our wealth creators are not respected, if industrialists are being subjected to this kind of a prosecution and imprisonment threat, how will the country go forward? Adhyakji, there has been no change in the Congress party's mindset from calling profit a dirty word during Nehruji's time to today Rahul Gandhi attacking the industrialists and the wealth creators of this country. There has been no change that has happened. Yes. Adhyakji, I want to bring to your attention, Adhyakji, how the work that we have done in the last 10 years by dismantling all of these things, how India is galloping forward. मैं आता हूं साहब, मैं आता हूं वहां 12 साल में हमने क्या किया मैं बताता हूं आपको. पर उससे पहले अध्यक्ष जी, I want to put it on record what Congress party's Prime Minister
Manmohan Singh, who partly tried to dismantle in 1991 the command control economy, what he himself had to say about the kind of license, quota, permit, inspector Raj that the Congress party's successive governments had created. I want to quote the former Prime Minister. Manmohan Singh ji said that these controls were introduced in the name of introducing greater rationality into the allocation process. But after a period of time, they became instruments of corruption. They became instruments of delay. They became instruments of uncertainty, and the economy simply could not get a clear sense of direction. If you have a rigidly controlled economy, cut off from the rest of the world by infinite protection, nobody has any incentive to increase productivity and to bring in new ideas. Therefore, the license, permit, quota Raj became a great handicap in carrying forward the sustained process of growth. This is not a BJP leader speaking. This is not somebody from the opposition benches when you were ruling speaking. It was your Prime Minister Manmohan Singh who gave the harshest indictment of 70 years of your economic policy planning. Adhyaksh ji, this became the main reason why हर कुछ लेवल पे छोटे-छोटे चीज के लिए, छोटे-छोटे काम के लिए, छोटा परमिशन लेने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए इतना बड़ा करप्शन देश में शुरू होने का कारण यही कल्चर था। अध्यक्ष जी, आपने पूछ रहे थे पिछले 10 साल में हमने क्या किया। पिछले 10 साल में, साहब सुनिए, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी को जनता ने मौका देने के बाद हमने ये फिलोसॉफिकल बदलाव शुरू की। सबसे पहले मोदी जी ने रेड फोर्स से शुरू होकर उन्होंने कहा wealth creators will be respected in this country, industrialists and wealth creators will be equal partners of the country's growth. वहां से फिलॉसफी शुरू हुआ और फिलॉसफी was followed by policy action. मैं बताना चाहता हूं क्या हुआ। अध्यक्ष जी, in the last 10 years, Adhyaksh ji, we have brought multiple reforms in the country's economy. GST was introduced, IBC was brought in. We began the Make in India and the PLI schemes, which have resulted in the creation of millions of jobs. We have removed more than 6,000 provisions that were obsolete and archaic, which had absolutely no role in today's day and age. We also introduced the 4 labor codes, which have greatly rationalized Factories Act, Labor Acts, all of these got modernized. From 2014, 47,000 compliances have been rationalized. 3,700 legal provisions have been decriminalized. More than 1,500 obsolete laws, which have absolutely no bearing in today's age, has been repealed. And as a result of this, India's ease of doing business has jumped from 142nd in 2014 to 63rd today, and I want to congratulate our Prime Minister and Piyush ji for this phenomenal and momentous task that they have done. From 142 to 63, and we have a long way to go, and this decriminalization exercise is a part of this. 17 different taxes, 13 different cesses were merged into one GST, one nation, one taxation. 51 corporate offenses were decriminalized. Closing a company earlier would take 499 days. Now, under the CPACE initiative, it takes about 70 days. The Insolvency Bankruptcy Code has reduced resolution from 4 to 6 years earlier to around 300 days today. Adhyaksh ji, these are the massive changes that we have brought, which is why today India is the 4th largest economy in the world. ऐसा नहीं है कि रातों रात मैजिक बैंड ऐसे चला के इंडिया की इकोनॉमी 4th largest बन गई. It is sheer hard work of the Prime Minister and this government that this has resulted. Adhyaksh ji, I want to conclude by highlighting one very important aspect of why this is most essential and why at this point in time this massive reform is going to have catalyzing effect on the economy for the next 20 years.
Today, Adhyakji, 1.2 crore new workers enter India's workforce every year. By 2030, 1 in every 5 working age people on earth will be Indian. This is the largest demographic opportunity India has. The only way this can be converted into prosperity is if large number of jobs are created. And it cannot be created if our entrepreneurs are shackled, if their entrepreneurial spirit is always threatened with a threat of prosecution. Adhyakji, when Indian entrepreneurs are left free, they flourish. The biggest example of this is the story of the Startup India movement. In 2016, DPIIT had around 500 registered startups. Today, there are over 2 lakh registered startups in India, over 120 unicorns, and more than 22 lakh direct jobs have been created. This is just one example that if you allow Indian entrepreneurs, Indian youth to progress, they will build for India and then they will build for the world. Now, please Adhyakji, try to conclude. Adhyakji, I want to conclude by taking the attention of the House and the country to 4 main leaders in the world who contributed greatly to giving an economic fillip, a new trajectory for their respective countries' economic history. FDR is even today, FD Roosevelt, Franklin D. Roosevelt is still remembered gratefully by Americans for the structural reforms he created in the country. Ronald Reagan is respected with gratitude because of how he created new institutions in America that has stood ground even today. Margaret Thatcher is respected in Britain because she navigated the country in the most difficult of economic times. Deng Xiaoping is remembered gratefully by Chinese today because he opened up their economy and modernized it. Lee Kuan Yew is remembered gratefully by the Singaporeans because he modernized the old port town. Adhyakji, Narendra Modi will be remembered in the coming days as somebody who did for India what FDR, what Ronald Reagan, what Lee Kuan Yew, what Margaret Thatcher together did for their country. This is the foundation of a Viksit Bharat. I want to thank the Prime Minister and I want to thank this government for this extremely important decriminalization exercise, the largest in India's history, which is going to... जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पर बोलने के लिए अवसर दिया। माननीय, यह बिल जो भाषा में है उसके बिल्कुल उसके प्रतिकूल है। सरकार का विश्वास जनता पर बना रहे, ये सरकार का दायित्व है, परंतु जो इसमें देखते हैं अपराध मुक्ति के नाम पर जवाबदेही कमजोर करता है। जबकि सरकार कह रही है कि बिल कॉलोनियल कानूनों को आधुनिक बना रहा है, लेकिन असल में यह सिर्फ जेल की सजा हटाकर छोटे छोटे जुर्माने लगा रहा है। इससे सवाल उठता है, क्या सरकार जवाबदेही खत्म कर रही है? जैसे पशु अतिक्रमण अधिनियम 1871 में गंभीर मामलों को अब सिर्फ 5000 जुर्माने तक सीमित कर दिया गया। यह सुधार नहीं है, बल्कि कानून को हल्का करना है, लोगों में इसका भय खत्म होगा। अच्छा रहता यदि सरकार इसके साथ साथ एक कानून और बना देती कि जो उत्तर प्रदेश में विशेषकर जात, जुबान, लिबास देख करके लोगों की जवानी करने का कानून है, उस पर रोक लगाने का काम करते। जिन लोगों ने जो लोगों की जवानी लंगड़ी की है उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने का प्रावधान सरकार को करना चाहिए था। माननीय, मेरा अनुरोध है कि महत्वपूर्ण कानूनों में डर खत्म करना, जैसे रक्षा कार्य अधिनियम 1903 जैसे कानून में संवेदनशील क्षेत्रों के पास उल्लंघन को अब अपराध की बजाय सिर्फ जुर्माना बना दिया है। इससे हमारी सुरक्षा को खतरा होगा। इसी तरह न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में भी गंभीर मामलों को आपराधिक ढांचे से बाहर किया गया है। इसका मतलब है कानून तोड़ने का डर खत्म है और इससे ऐसे अपराधियों को हौसले बढ़ेंगे और ऐसे अपराध निश्चित रूप से बढ़ेंगे। यह जो बिल है, ये संशोधन है, बिना स्पष्ट सीमा के व्यापक अपराध मुक्ति का यह बिल हर गैर धोखाधड़ी मामले को सिर्फ प्रक्रियात्मक गलती मान रहा है, लेकिन इसकी कोई साफ सीमा इन्होंने तय नहीं की।
कि गलती कितनी है। इसका मतलब है कि जो लोग बार बार नियम तोड़ने के आदी हैं और वो नियम तोड़ेंगे, उनके विरुद्ध भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने वाली। जैसे प्रोबेट समर्पण न करने पर पहले 3 महीने की जेल थी, अब सिर्फ जुर्माना कर दिया। यह सतही सुधार दिखाता है, परंतु असली बदलाव गायब है। जबकि सरकार इसे बड़ा सुधार बता रही है, लेकिन यह सिर्फ ऊपरी बदलाव है। असली समस्या कमजोर नियमों का परिवर्तन, अस्पष्ट नियम और कंप्लायंस की दिक्कतें वैसी की वैसी है। यह सुधार नहीं, केवल नंबर का खेल होगा। और यह वीकर सेक्शन को, जो ताकतवर लोग हैं, जो ताकतवर समूह है, संगठन है, उनके उत्पीड़न का शिकार बनाने में सहायता करेगा। उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी और वो थोड़ा जुर्माना देकर के बचा करेंगे। आजाद भारत में कानूनी गरीब की रक्षा करता है, वीकर की रक्षा कानून करता है। वो कैसे सुरक्षित रहेगा, ये सबसे बड़ी समस्या का एक मामला है। एमएसएमई सेक्टर को जानबूझकर बाहर रखा गया है, जो सबसे बड़ा सवाल या निशान लगाता है। एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 को क्यों बाहर रखा गया? 2025 बिल में इसे शामिल किया गया था, लेकिन अब हटा दिया गया। यह कोई गलती नहीं बल्कि एक राजनीतिक फैसला है। जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, उसी का सुधार से बाहर रखना दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता शीर्षक है जमीनी हकीकत रही। जो एमएसएमई में मजदूर काम करते हैं, सच्चाई यह है कि उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिल पा रहा, ना उन्हें जो न्यूनतम मजदूर की सरकार द्वारा तय की गई जरूरतमंद चीजें हैं, मेडिकल एड है या दूसरे काम है, सुरक्षा के उपकरण, वो भी नहीं मिल पाते। और एक बड़े तबके का जो सब तमाम वीकर सेक्शन से आता है, जो गरीब है, जिसकी आजीविका एमएसएमई से चलती है, एमएसएमई के मालिक सरकार से 10 तरह की छूट लेने के बाद भी मजदूर का शोषण करते हैं। अभी एक बिल आया था मजदूरों का, सरकार का कहना था कि जो लोग अस्थायी प्रवृत्ति के काम पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें अस्थायी माना जाएगा। परंतु मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, 6-6, 7-7 हजार रुपए मिल रहे। एमएसएमई को इससे बाहर कर दिया गया। और सरकार की जो नीति है, ये मजदूर को शोषण करती है और कारपोरेट घरानों को आशीर्वाद देती है, संरक्षण देती है। वो इस बिल में साफ दिखाई देता है। एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए सिर्फ दिखावटी राहत है। सरकार इसे एमएसएमई के लिए बड़ा कदम बता रही है, लेकिन असली समस्या क्रेडिट संकट, भुगतान में देरी, मांग की कमी, नौकरियों गिरावट का कहीं पता नहीं है। सिर्फ जेल हटाने से व्यापार नहीं चलता। यह बिल सतही स्तर को राहत देता, असली सुधार से बचाता है। हमारा अनुरोध है सरकार, एमएसएमई को राहत दीजिए, पर मजदूर का ध्यान भी सरकार को रखना चाहिए। मजदूर का पेट पलेगा तब जाकर के देश चलेगा। मानवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक अनुरोध है। मैं आगाह करना चाहता हूं कि आपने कानून तोड़ने को सस्ता बना दिया। यह भी ऐसी व्यवस्था बन गया है जहां लगता है कि कानून तोड़ना कानून मानने से सस्ता हो जाएगा, और कानून तोड़ने की सजा ना हो करके भय बिन प्रीत ना होए गुसाई, वो भय खत्म करके केवल पैसे में लोगों के सम्मान को खरीदने का काम किया है। छोटे छोटे जुर्माने बड़े कारपोरेट घराने पर क्या भार पड़ेगा उन पर, उनके लिए क्या है, उसके कोई मायने नहीं रखते। यह तो एक गैर कंप्लायंस को इनाम देने वाला काम है। आप कानून तोड़ो, 2 पैसे दो, लोगों के जीवन से खिलवाड़ करो, छुट्टी करो। छोटी बात को गंभीरता से लेना सरकार का दायित्व रहता है। महत्वपूर्ण सेक्टर में परिवर्तन कमजोर है। स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण जैसे सेक्टर में आपराधिक कार्रवाई हटाकर सरकार यह संदेश दे रही है कि उल्लंघन अब इतना गंभीर नहीं। यह सिर्फ कानून नहीं कमजोर करता, बल्कि जनहित को खतरे में डालता है। मानव पर्यावरण खराब होगा, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। हमारा मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पूरी एनसीआर में बल्कि सहारनपुर तक आज ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहां खराब पर्यावरण के चलते लोगों में फेफड़ों की और नेत्रों की बीमारी नहीं फैल रही। उसके साथ ही प्रदूषण के चलते जो तोड़ने पर अब कोई कानून सजा नहीं देगा। कहीं भी मान्यवर, मुझे 2 ही मिनट हुए, मान्यवर, कहीं भी आपके पार्टी से दोनों स्पीकर है जी,
Two more speakers from your party, so please. मान्यवर, मैं अपनी बात कंक्लूड करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कहीं भी कैंसर का इलाज नहीं, हमारे यहाँ कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और आपका किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, और उसके शिकार गरीब लोग होते हैं। और वो सारा का सारा कारण पर्यावरण के खराब होने से है। आप पर्यावरण खराब करने पे भी सजा हटा रहे हैं। सख्ती करनी चाहिए उद्योगों को, उद्योगों के ऊपर आपकी सख्ती होनी चाहिए कि जो आपने नियम बनाए हैं उनका पालन करें। आप उन्हें छूट दे रहे हैं कि आप नियम तोड़िए और 2 पैसे दे दीजिए, राजस्व राजकोष भर दीजिएगा, आदमी की जान की आपको परवाह नहीं है। एक आखिर की बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं, सरकार इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा न दे। आपके इस प्रावधान से निश्चित रूप से इंस्पेक्टर राज की वापसी होगी। यह बिल अधिकारियों को बहुत अधिक ताकत देता है। और जब तक ये कुर्ते वाला है, जब तक पॉलिटिकल आदमी है, तब तक लेजिस्लेशन के लोग हैं, उस समय तक केवल एजुकेशन के लोग ठीक काम करते हैं। और नहीं तो एजुकेशन जब भी कार्यपालिका के लोगों को जब ज्यादा अधिकार मिले हैं, तब उनका अत्याचार बढ़ा है। इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जहाँ आदमी को पकड़ करके थाने में लोग मरते हैं, पुलिस कस्टडी में लोग मर जाते हैं। और मैं दोहराना चाहता हूँ कि किसान का आपने क्या सोचा, किसान का। मानवर, आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आखिरी बात कंक्लूड करो ना। आपने मिलावटी खाद के ऊपर क्या जुर्माना लगाया? आपने जो मिलावटी दवाएं किसान को मिलती हैं, मिलावटी बीज मिलते हैं, वो जो दवाई डालता है वो कीड़े नहीं मारती, किसान को मार देता है। जब वो किसान मर जाता है तो किसान आत्महत्या कर लेता है। धन्यवाद। तुम्हारा मेरा अनुरोध है, गंभीरता से लेकर जनहित में विश्वास करो। मैं जानता हूं कि जन विश्वास तो आप खो चुके। Thank you, sir. Thank you, Speaker, sir, for this opportunity. I'd like to put on record my great honor and satisfaction in participating in this committee meeting. And every meeting that I missed, I felt sad that I'm not able to contribute to those particular acts or subjects that were being debated. I'd also like to appreciate our chairman, Tejasvi Suryaji, for his leadership in the committee and the opportunity given not just to members of the ruling disposition, but all members, including the opposition, who participated very actively in the Jan Vishwas 2 bill. Sir, I want to give you one anecdote before I get into the details of the bill. In one of the committee meetings, one of the people who came to come and present to us, 2 of the members, Mr. Gautam and Mr. Rishi, had written a book called Jailed for Doing Business. And they had identified that in the center and in the state, there are about 26,000 provisions that attract criminal action, of which around 6,000 belong to the center and about 20,000 belong to the state. One would expect that if such a book would come, either the government would ignore or the government would not act as per the opposition. But it is this government that called Mr. Rishi and Mr. Gautam not more than a few weeks after this book was published to come and speak to them and give them the details of what they mean. And they were then taken on as experts to work with the committee that the government had set up under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji. Rajiv Gauba-ji, who was the former CABSEC. In his leadership, focusing on ease of living, ease of doing business, they had started identifying what should we decriminalize, what should we deregulate, how do we improve the ease of doing business. And as Tejasvi ji said, I think a testament to that is India's ease of doing business improving from the ranking improving from 142 globally in 2014 to 63 in 2020. And this Jan Vishwas bill is not the first, sir. Many of the parliament members here in the previous Lok Sabha are aware that Jan Vishwas Act of 2023 had already done this work. About nearly 200 provisions were decriminalized at that point. Even this committee, sir, when we began, we had only 17 acts and about 300 provisions that were going to be decriminalized, deregulated. But during the course of the committee, I think the enthusiasm of the members and the participation and also the proactiveness of the Honorable Minister Piyush Goyal ji and the officers of the ministry, they had increased the scope from 17 to 79 acts and almost 800 provisions. I think all of the members in the committee welcomed it with open hands, because if we're doing something that is going to benefit the nation, benefit citizens, benefit small businesses, not all the members. Sri Bharatji, not all the members. Sir?
All the members have not supported it. All the members of the committee, sir. Oh, okay, okay. I understand, sir. All the members had participated fully. Yes, correct. You are correct. So, and similarly, sir, I think building on this inspiration in our state, Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu ji also has now changed our slogan not just from ease of doing business to speed of doing business. What we can do in 2 years, how can we do it in 3 months, in 6 months? And I think it is this kind of actions that are bringing one of India's largest FDIs, actually the largest FDIs in Indian history to Visakhapatnam, my constituency, sir, Google's largest data center investment, and many more investments, which I will not be talking about today. So these 6,000 offences spread across 420 central laws. Today, Jan Vishwas 2 is decriminalizing, as I said, about 800. But this is a continuous journey, and we will keep getting more and more deeper into this. And there are some things which are very disproportional. So I'll give an example. If you conceal the birth of a child, you're punished with 2 years of imprisonment. That is an offense. But while you're counterfeiting a property mark, the offense is the same. So these are these technical inconsistencies where there is disproportionate punishment proposed for things which don't make sense. So I want to give an example of what incentives, perverse incentives have on society. I had been reading about this. In London, in the UK, they had, I think, a rat problem at some point, and they said, how do we stop this problem? They said, we'll give a penny for every dead rat that you bring to us. This should have led to rats going down in the city, but actually the number of rats in the city went up. What happened is people started rat farms and they started breeding rats so that they can make money on bringing dead rats. So these kinds of incentives that are, or disincentives that are being created by these laws have to be looked at and have to be changed. Today our judiciary is bearing the burden of this, sir. There are 5.49 crore pending criminal cases in this country, and a significant number of these are not necessarily serious crimes. But these minor procedure violations are preventing those who truly deserve justice to not get it and get delayed. So I think it's very welcome, sir. We're very happy that this kind of work is happening and litigation is being reduced, cost is being reduced on society. And I want to ensure that I mention it here, especially to the opposition who have raised some concerns. Just because we are decriminalized something does not mean that we are letting people go. When a fine is being changed to penalty, the fine may have been 500 rupees. Today the penalty is becoming 5,000 rupees. Only the process of it going through the judiciary is being changed. The ministry, through the appropriate offices and appropriate adjudicatory mechanism, is able to identify the wrongdoers and give a penalty which is much swifter. And the fear of criminal action, fear of jail is being removed. But let me also say that if there's any provision that has been proposed to be decriminalized, members of the committee felt that it should not be decriminalized. All of us have stood our ground and ensured that those provisions continue to attract criminal provisions. And where we felt the penalty amounts are disproportionate to the mistake or the crime that is happening, we said that the penalty amounts have to be proportionately increased. I'm thankful that many of the ministries have come back and have changed the value. I want to thank all of the members of the opposition who participated in the committee, vibrantly gave their feedback based on their sectoral experience, based on their regional experiences, and it was very welcome. I think some of the things have also been subsumed into the BNS Act. So it was a moot point. They didn't need to be there in the specific acts because BNS was covering many of these things. So these kinds of efficiencies are very welcome, sir. I'll give another example, sir. Like, for example, in the Drugs and Cosmetics Act, even a small mistake like a packaging error could lead to jail for up to 1 year. That has been replaced by a large monetary penalty. We understand when a large company does this knowingly, but when a small MSME does this unknowingly or due to some employee's error, they should not be penalized disproportionately for such actions. Similarly, in the Motor Vehicles Act or in the Food Safety and Standards Act, many of which impact most of our 140 crore people, we were able to do some major changes, sir, and it gives me a lot of satisfaction that we've been able to do this. So I'll just end with 2 suggestions, sir. One is, sir, in the various acts, there are different kinds of penalties. But if you look at countries like United Kingdom, Australia, what they have done is they have a standardized scale system or graded of penalties, which will make it easy for us, where we have to just say that this is a grade 1 penalty or a grade 2 penalty, becoming very easy for us to implement. And the next, sir, as this Jan Vishwas 2 is now present in the bill, what I recommend is, or I request, that this be a constant body of the parliament which is constantly looking at decriminalizing, deregulating, and not just ending with one committee, because
If you see, sir, we have not just decriminalized or deregulated acts from 100 years ago, we've also done acts that were 5 years old or 7 years old, which means this government is thinking constantly, the act that we've introduced, the provision that we've introduced, is it having the intended outcome or not? If not, then let us look at revising it. Even if it is a bill that we have passed, we should have the vision to improve it and correct it. And lastly, sir, in Andhra Pradesh now, we said it is not the next step. What suggestions to the government, sir, is in the process of digitization over the last 2 decades, what we have done is, if it is an 11-step process in paper, we've made it an 11-step process in the digital thing. But why should it be 11 steps? Why can't it be done in 2 steps? Why can't it be done in 3 steps? Governments, departments need to think about redesigning, rethinking steps, reducing ambiguity, reducing opportunity for rent seeking. I think this will make things so much more easy for doing business and for living in India. Thank you I want to end, sir, by thanking all of the officers, civic society who's come forward with suggestions, fellow MPs in the committee, our chairman Tejasvi Suryaji, our Honorable Minister Piyush Goyalji, and the leadership of our Prime Minister Narendra Modi ji, without whom I think all of this would not have been possible the way it has happened. And I'm grateful for this opportunity to speak on this. Thank you. Thank you. Thank you very much. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज इस गरिमामय सदन में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 के समर्थन में खड़ा हूं। यह विधेयक केवल धाराओं का संशोधन नहीं है अध्यक्ष महोदय, बल्कि भारत की शासन व्यवस्था को भय आधारित से विश्वास आधारित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जन विश्वास 2 इसी श्रृंखला की अगली कड़ी है, जो शासन के मॉडल को कमांड एंड कंट्रोल से बदलकर ट्रस्ट एंड वेरीफाई पर ले आता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश के शासन तंत्र को शक और संदेह की बेड़ियों से मुक्त कर विश्वास और भरोसा के जरिए विकास की धुरी को स्थापित किया है। यह विधेयक उनके विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक जीवंत प्रमाण है। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में देश के लोग पॉलिसी पैरालिसिस और इंस्पेक्टर राज के साये में जी रहे थे, जहां साधारण तकनीकी गलतियों पर भी जेल का प्रावधान था। यह औपनिवेशिक मानसिकता से प्रभावित कानूनों की विरासत थी, जो नागरिकों को भय एवं नियंत्रण में रखने के लिए बनाई गई थी। लेकिन हमारी सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के दर्शन के साथ अब तक 1500 से अधिक अप्रचलित कानूनों को समाप्त किया है और शासन को विश्वास का धुरी पर स्थापित किया है। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की व्यापकता अभूतपूर्व है। इसमें 23 मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले 79 केंद्रीय अधिनियमों को 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इनमें से 717 प्रावधानों को पूरी तरह से डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जबकि 67 प्रावधानों को नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए बदला गया है। कुल मिलाकर 1000 से अधिक अपराधों को तर्कसंगत और गैर आपराधिक बनाया गया है। अब साधारण तकनीकी गलतियों पर जेल नहीं, बल्कि चेतावनी, जुर्माना या ग्रेडेड पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, जो वक्त की पुकार थी और काबिल तारीफ है। जब हम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, RBI एक्ट, नेशनल हाईवेज एक्ट और इंश्योरेंस एक्ट जैसे कानूनों की बात करते हैं, तो हम केवल कागजी बदलाव नहीं कर रहे, बल्कि यह विधेयक उन औपनिवेशिक मानसिकता से प्रभावित प्रावधानों पर भी प्रहार कर रहा है, जिनका उद्देश्य नागरिकों और उद्यमियों को भय और संदेह में रखना था। पहले जिन मामलों में तकनीकी या प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर सलाखों के पीछे जाना पड़ता था, अब उन्हें सिविल पेनल्टी में बदला गया है। पहली गलती पर चेतावनी दी जाएगी, बार बार गलती पर क्रमिक जुर्माना लगाया जाएगा, और यह ग्रेडेड पेनल्टी सिस्टम न केवल न्याय संगत है, बल्कि नागरिकों और व्यापारियों में विश्वास भी पैदा करेगा, साथ ही भविष्य में उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक आम नागरिकों के लिए राहत लेकर आया है। उदाहरण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर 30 दिनों का ग्रेस पीरियड दी जाएगी। बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स वक्त पर भुगतान नहीं करने पर जैसी छोटी गलतियों के लिए केवल चेतावनी या जुर्माना लगेगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर छोटे उल्लंघनों पर भी जेल की जगह जुर्माना का प्रावधान है। यह बदलाव गरीब और मध्यम वर्ग के प्रशासनिक प्रताड़ना से सुरक्षा कवच प्रदान करेगा, साथ ही भ्रष्टाचार पर भी प्रहार करेगा। व्यापार और उद्योग जगत के लिए यह विधेयक एक वरदान साबित होगा। अध्यक्ष महोदय, छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स पर अनावश्यक आपराधिक डर खत्म होगा, अनुपालन बोझ कम होगा, निवेश बढ़ेगा और व्यवसाय करना आसान होगा। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे बढ़कर ईज ऑफ लिविंग भी सुनिश्चित करेगा। कारावास की सजा अध्यक्ष महोदय,
को सिविल पेनल्टी में बदलना यह सुनिश्चित करता है कि हमारे युवा उद्यमी और स्टार्टअप जेल के डर से नहीं बल्कि इनोवेशन के उत्साह में काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, न्यायिक सुधार भी इस विधेयक का महत्वपूर्ण पहलू है। हमारी अदालतों में लंबित मामलों का एक बड़ा हिस्सा छोटे छोटे तकनीकी विवादों का है। इन हजारों मामलों को अदालतों से निकालकर एजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के पास ले जाने से न्यायपालिका की कीमती समय बचेगी। यह कदम न्याय की गति को तेज करेगा और हमारे न्यायाधीश गंभीर अपराधों और संवैधानिक विषयों पर अपनी ऊर्जा केंद्रित कर पाएंगे। यह विधेयक केवल दंड कम करने का नहीं बल्कि संतुलन का भी है। अध्यक्ष महोदय, गंभीर अपराधों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उदाहरण के लिए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा के लिए 40 गुना जुर्माना और हर माह 10% वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा बनी रहे ताकि विकास कार्यों में बाधा न आए। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक स्पष्ट संदेश देता है कि सरकार दंड देने वाला नहीं बल्कि सहयोग करने वाली संस्था है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के विजन को आगे बढ़ाता है। इसके लक्ष्य है कि छोटी गलतियां या तकनीकी चूकों के लिए नागरिकों और उद्यमों को अनावश्यक प्रताड़ना न झेलनी पड़े, अदालतों का बोझ भी कम हो और शासन अधिक भरोसेमंद तथा नागरिक अनुकूल बने। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्र हित में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस ऐतिहासिक सुधार का सर्वसम्मति से समर्थन करें। हमारा संकल्प है एक ऐसा भारत जहां कानून सहायक भी हो, रक्षक भी हो, लेकिन किसी भी हाल में भक्षक न बने। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। श्री अरविंद सविन जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। आज ये जन विश्वास बिल के सुधार पर मैं अपने विचार प्रकट करता हूं। कुछ अच्छी बातें हैं। जेल से बाहर निकलकर हम जुर्माना लगाना चाहते हैं, तो जेल का डर निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे मैं रखूंगा। मुझे मालूम है कम समय रहेगा, इसके लिए पहले ही बता देता हूँ। अब जेल की जब बात आती है आपकी, डर तो होना चाहिए, लेकिन आज अब जेल में इतने लोग हैं जो ट्रायल के नाम पे बरसों से पड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ करते सुधार नहीं है आपके बात में। आप उनको आज भी जमानत नहीं मिल रही है। वांगचू की बात तो आई ध्यान में, अभी भी बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग भी है जेल में। ऐसे लोग सालों साल पड़े सर, जमानत नहीं, जुर्माना तो छोड़ो, जमानत भी नहीं है। तो ये मेरा कहना था कि अगर इतना सुधार ही करना चाहते हो तो जेल ऐसी भरी हुई है जहां से 100 लोग रहना चाहिए और 400 लोग अंदर है रूम में। मतलब इनह्यूमन ट्रीटमेंट इज ऑल्सो गिवन टू दोज पीपल, तो दैट इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड। दूसरी बात है, दवाओं में ये जो अपने बाजार में जो गलत दवाएं मिलती रहती है, पॉल्यूटेड ड्रग्स मिलते रहते हैं, उसके ऊपर भी आप जुर्माना लगाकर छोड़ेंगे तो डर कैसे रहेगा आपको। दूध में जो मिलावट करो, दवाओं में भी मिलावट करो, ऐसी स्थिति पे सिर्फ ये कोई क्लेरिकल एरर नहीं है, दिस अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, और उसके लिए आपके जुर्माना जो रखा है वो गलत लगता है मुझे। बाकी सर और भी मुद्दे, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको लेकर मैं और 2-3 साथ में स्लम एरिया और ये जो बातें जो आती है ना, हमारे पीयूष गोयल साहब नहीं है यहाँ, महाराष्ट्र में SRA है, स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी है, और ऐसी जगह जरा किसी भी, मतलब ये तो बिल्डर के लिए चल रहा है ऐसा लगता है। बिल्डर को क्या है, पैसा भर के निकल जाएगा, गरीब आदमी क्या करेगा। ये तो सोचो आप कि पूरा कमिटी में थे, मुझे मालूम है बहुत विद्वान लोग थे कमिटी में, डिसेंट नोट्स आर देयर, लेकिन व्हाई वी आर डूइंग इट लाइक दिस। SRA की जगह बहुत सारे बिल्डर लोग गलतियां जानबूझकर करते हैं, तकलीफ देते हैं, लोगों को पैसा नहीं देते हैं, किराया नहीं देते, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ती है। आप इतना सा जुर्माना लगे तो उनके लिए तो आसानी है भैया, ये जुर्माना ले लो, छोड़ दो हमें। और ये सब करने वाले कौन है, who are going to impose this penalty? All officers, no judiciary, सारे अधिकारी रहेंगे, तो भ्रष्टाचार के लिए तो बहुत ही सहूलत आपने दे दी है इसमें सर। सर अपने सीमेंट प्रोविडेंट फंड, ये जो विषय है बहुत गंभीर है सर। ये सीफेयरर्स है ना, उसके बारे में मालूम नहीं पड़ता। वो जो सारे सीफेयरर्स है, शिपिंग में काम, मर्चेंट में काम करने वाले, उनकी तनख्वाह डॉलर्स में होती है, और उतना पैसा सामने कंपनी भी देती है,
और जो यूनियन है और सरकार के कुछ लोग मिलकर हाथ जोड़ के मिलकर उनके पैसे हड़प कर रहे हैं, उसके ऊपर भी इसमें प्रावधान आना चाहिए। सीमेंट प्रोविडेंट फंड में उसकी सैलरी कितनी तो पहले पहचान कर लो, उसकी सैलरी गलत बताते हैं, विच इज मोर देन $674, ऐसा इतनी सैलरी है उनकी, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर सबसे बड़ी बात पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट, आई एम रियली एक्सप्रेसिंग माय कंसर्न ऑन इट सर। इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है उसका। अभी पीयूष गोयल जी याद से अब मैं मुंबई की जो जमीन की प्रॉपर्टी है वो ज्यादा से ज्यादा है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की है। अब अंग्रेजों के जमाने में लोग मुंबई शहर में तो 6 आइलैंड थे ना, 6 आइलैंड थे, तो वहां कोई आना नहीं था। टेक्सटाइल की मिल की भी जो हालत है ना, टेक्सटाइल मिल में कामगार नहीं मिलता था, तो उनके लिए मकान बने, भाई घर हमें आपको निवास दे देंगे, तो लोगों को ल्यूर करवाया, हम आपको मुफ्त में निवास दे रहे हैं, आप हमारे टेक्सटाइल मिल में आ जाओ। उसी तरह ये जो एरिया है साउथ मुंबई का वो डेवलप नहीं था सर, तो वहां जो बिल्डिंग बनी वो मुंबई पोर्ट ने लीज पे दे दी, अरविंद साहब को दी, ये अरविंद साहब ने बिल्डिंग बना दी। अब मैं किराया ले रहा हूं उनके पास से, तो लीज की अमाउंट मुझे भरनी है। आज मैं गायब हूं, ओनर ही नहीं है, और लीज के नाम पे आप पता है आपको क्या करे पब्लिक प्रीमाइस। इट इज नॉट अ पब्लिक प्रीमाइस सर, इनफैक्ट ये कोई उनके सरकार के नौकर नहीं रह रहे हो, खरीद कर वहां रहते हैं, किराया देते हैं मुंबई पोर्टर्स को, उनको घर से निकाला गया पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के अंदर। अरे भैया ये प्राइवेट बिल्डिंग है, तुम्हारी जमीन पर बनाई हुई है, वो तुम्हारा कोई नौकर ना आपका कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां। हाँ, पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट सरकार ने खुद बनाई हुई बिल्डिंग है, सरकार का अधिकारी वहां रहता है, वो नहीं जा नहीं रहा, कोई प्राइवेट आदमी घुस गया, उसके लिए मैं समझ सकता हूं। आप भाई इसलिए बोला, आई एम एक्सप्रेसिंग माय सीरियस कंसर्न ऑन इट। The entire Kulaba area is being treated badly by the Mumbai Port Authority by enhancing the rent. इतना किराया बढ़ा देते, कर्मचारी रहता है, बैंक में काम करने वाले रिटायर्ड लोग हैं। अभी एक मेरे पहचान के लोग हैं जिनको घर से निकाला गया, कहां से लाएंगे इतना किराया? आप लगाएंगे 500 रुपए पर मीटर, तो हो गया कितना किराया? तो ये भी आपको ध्यान में, इसलिए पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट में अगर इतना सुधार आप लाने थे ना, तो पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट में सुधार लाने की आवश्यकता है। सर पोर्ट और अंटार्कटिका, बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, पोर्ट और अंटार्कटिका। पोर्ट में मुझे समझ भी नहीं आता है, मुंबई पोर्ट की पेनल्टी है, पोर्ट चल ही नहीं रहे सर, सुधार लाना चाहते हो ना, वार्डवन का सुधार करना चाह रहे हैं, मुंद्रा में कर रहे हो, मुंबई पोर्ट का सुधार कब करोगे? किसने रोका है आपको? आदरणीय गडकरी साहब ने उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बना के उसको डिस्प्ले भी कर दिया था। पूरे पूर्व किनारा जो है हमारा, मुंबई के पूर्व किनारे पे सारी मुंबई पोर्ट की अथॉरिटी है, सब उनकी जमीन है सारी, वो जो किनारा भी उनका ही है। तो उसको सुधार करने के लिए कानून बनाना चाहिए था। डॉक वर्कर्स का कानून मतलब डॉक वर्कर्स रहा, जब धंधा ही नहीं तो डॉक वर्कर्स कहाँ रहे? अभी वही तो एक एनर्जी थी मुंबई शहर की, तो उसके ऊपर भी ध्यान देने की वो कानून उसमें सुधारना चाहिए कि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी का डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं, अगर वो आप कर लेते हो तो इस सुधार का स्वागत करने में मजा आता है। सिर्फ पेनल्टी, गाड़ी ठोक कर गया, पेनल्टी क्या है? मर गया आदमी, पेनल्टी क्या दे रहे हैं उसको? तो ये सारी चीजें हैं सर। इतना ही आखिर में एक पंक्ति खत्म करता हूँ कि मेरा इसमें और एक सुझाव है कि सिर्फ अधिकारियों को आप अधिकार न दीजिए, कॉसी जुडिशियरी कोई अधिकारी रखिए ताकि उनको न्याय मिलेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। श्री राजेश वर्मा जी, सॉरी श्री रविंद्र वेकर। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने देश की दिशा और दशा बदलने वाले इस अत्यंत महत्वपूर्ण जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हमारे देश में कानूनों का एक ऐसा जाल बिछा हुआ था जहां एक छोटी सी तकनीकी गलती, एक फॉर्म भरने में कोई देरी या रजिस्ट्रेशन में एक मामूली चूक के लिए सीधे जेल भेजने का प्रावधान था। एक आम नागरिक या छोटा व्यापारी अपना व्यापार करे या अदालतों का चक्कर काटे। सभापति महोदय, ये विधेयक उस इंस्पेक्टर राज की मानसिकता कर एक बड़ा प्रहार है। इस विधेयक में माध्यम से 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों को 784 प्रावधान में संशोधित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 717 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया जा रहा है। इसका मतलब ये है जब छोटी और
प्रोसीजरल गलतियां के लिए किसी को जेल जाना न पड़े, बल्कि उसे जुर्माना देकर सुधारने का मौका मिलने का ये बिल है। शिवसेना के एक सांसद के रूप में मैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और पूरे महाराष्ट्र की भावना को यह रखना चाहता हूं। मुंबई केवल एक शहर नहीं है, तो ये देश का ग्रोथ इंजन है। मुंबई शहर में फिल्म सिटी है और मनोरंजन जगत का दिल है। पहले कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन में अनजाने में हुई किसी फॉल्स एंट्री के लिए आपराधिक मुकदमे का डर रहता था। इस विधेयक के ऐसे अपराधों का डर हटा दिया है। हमारे रचनात्मक कलाकार और प्रोडक्शन हाउस के लिए बहुत बड़ी राहत है। महाराष्ट्र और विशेष मुंबई पुणे बेल्ट फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब है। इस कानून के तहत पहले कॉस्मेटिक के निर्माण की या बिक्री में किसी छोटे नियम के उल्लंघन पर 1 साल तक की जेल हो सकती थी। अब इस बदलकर 1 लाख रुपए का सिविल जुर्माना कर दिया गया है। ये इसमें का पॉजिटिव पॉइंट है। मुंबई जैसे महानगर में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस बिल में मोटर वाहन अधिनियम का तहत जो 67 संशोधन ईज ऑफ लिविंग डूइंग के लिए किए गए हैं, इसके हमारी आम नागरिकों, टैक्सी चालकों और ट्रांसपोर्टर को वाहन संबंधी अनुपालन कॉम्प्लायंस में बहुत सहूलियतें मिली। सभापति महोदय, मुंबई में हर नुक्कड़, हर व्यापारी है पहले वजन और माप के मापों को मामूली सी गलती पर सीधे भारी जुर्माना और अदालत कार्रवाई करती थी। अब ये विधेयक सुधार नोटिस की व्यवस्था की है। पहली गलती पर व्यापारी को गलती सुधारने का समय दिया गया। सभापति महोदय, मुंबई देश का कॉर्पोरेट औद्योगिक केंद्र है, जहां हजारों कंपनियां हमारे युवा अप्रेंटिस के तौर पर काम सिखाती है। अगर कोई कंपनी जानकारी देने में थोड़ी सी भूल करती है या कोई तकनीक गलतियां होती तो सीधे जुर्माना या आपराधिक मामला बना था। इस बिल के पहली गलती पर सिर्फ सलाह और दूसरी पर चेतावनी का प्रावधान है। सभापति महोदय, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में औद्योगिक और कारखानों का बहुत बड़ा जाल है, जिन्हें निर्बाध बिजली की आवश्यकता होती है। पहले बिजली विभाग से किसी आदेश से गैर अनुमानत पर 3 महीने तक की जेल हो सकती थी। अब इस विधेयक के जेल की सजा को पूरी तरह से हटा दिया है और केवल जुर्माना तय किया है। सभापति महोदय, आज हमारे देश की अदालतों में 3 करोड़ 10 लाख यानी 31 मिलियन से अधिक अपराधी मामले लंबित है। इनमें से लाखों मामले ऐसे ही जिनके तुच्छ में गए कि इन अदालतों का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस विधेयक के तहत निर्णायक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकरणों में यानी अपीलिएट अथॉरिटी की नियुक्ति से छोटे मामले अदालत तक पहुंचने नहीं, इसके अदालत का समय, कीमती समय बच जाएगा और गंभीर अपराध को न्याय जल्दी मिलेगा। अप्रेंटिस एक्ट 1961 जैसे कानून में अब सीधे सजा नहीं होगी। पहली गलती पर एडवाइजरी, दूसरी पर चेतावनी और तीसरी के बाद जुर्माना देना पड़ेगा। सभापति महोदय, जब विदेशी और घरेलू निवेशकों को ये दिखेगा कि भारत में छोटी सी भूल पे चूक के लिए क्रिमिनल लायबिलिटी यानी आपराधिकता देयता नहीं है, तो वे अधिक आत्मविश्वास के साथ यहाँ निवेश करेंगे, जिसमें कॉम्प्लायंट कॉस्ट घटेंगी, विदेशी निवेश बढ़ेंगे और रोजगार के लिए नए अवसर पैदा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं 3 सुझाव देना चाहता हूं। अधिकारियों का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है इसमें, यानी एडजस्टिंग ऑफिसर की नियुक्ति का प्रावधान है। मेरा सुझाव है इन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। यानी खुद को पुराना इंस्पेक्टर समझता था, यानी इंस्पेक्टर राज समझते थे, उनका रवैया सहयोग को होना चाहिए, ये उसके अंदर दिया गया है। महोदय, शुरुआत में जीएसटी की जटिलता के कारण मुकदमों में संख्या बहुत बढ़ गई थी। हालांकि अब सरकार ने इस पे काफी सरलता ला दी है, लेकिन आयकर विभाग में आज भी लगभग 5 लाख मामले लंबित है। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकारी प्रारंभिक स्तर पर मामलों को सुलझाने के बजाय जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्हें सीधे अपीलेट में भेज दिया जाता है। इस लंबी प्रक्रिया के कारण देश के लगभग 13 लाख करोड़ रुपए मुकदमों में फंसे हुए हैं। जन विश्वास बिल 2026 के संदर्भ में मेरा सुझाव है कि अधिकारियों की स्पष्ट जवाबदारी तय की जाए। यदि विश्वासों का निपटारा शुरुआती स्तर पर ही कर दिया जाए तो न केवल मुकदमों का बोझ घटेगा, बल्कि ये फंसी हुई विशाल पूंजी भी अर्थव्यवस्था के नाम दी जाएगी। दो खाली ये सजेशन है। सभापति महोदय, जुर्माने, चेतावनी और सुधार नोटिस जारी करने की पूरी प्रक्रिया को 100%
ऑनलाइन और फेसलेस किया जाना चाहिए। एक केंद्रीकृत पोर्टल होना चाहिए ताकि कोई भी अधिकारी किसी को भी व्यक्ति रूप में परेशान न करे और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा मेरा ये है, जिन 717 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया उसकी जानकारी आम जनता, छोटे दुकानदारों और कारखाने वालों को नहीं होती है। मेरा सुझाव ये है, मराठी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में एक व्यापक जागरूकता अभियान चला जाए। जब मुंबई के एक छोटे व्यापारी को पता चलेगा कि अब उसे छोटी गलती के लिए पुलिस का डर नहीं है, तब असली ईज ऑफ लिविंग जमीन पर उतरेगा। लास्ट एकदम अंत में यही कहना चाहता हूं कि ये जन विश्वास विधेयक 2026 भारत को आधुनिक बनाने की और वैश्विक यानी ग्लोबल मानकों को अनुरूप डालने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। मैं और मेरी पार्टी इस विधेयक का पूर्ण तरह से समर्थन करते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने जन विश्वास बिल 2026 विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और अपनी लोकसभा खगड़िया की जनता की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बिल गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाला और 140 करोड़ भारत के नागरिकों के अंदर विश्वास भरने वाला बिल है। इस बिल के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय पीयूष गोयल जी का और इस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष युवा आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस समिति में, इस सिलेक्ट कमेटी का मुझे भी सदस्य रहने का सुअवसर माननीय अध्यक्ष जी ने दिया। इसके लिए मैं उनका भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, श्री तेजस्वी सूर्या जी की अध्यक्षता वाली इस समिति में 49 सीटिंग में कानूनों को एनालाइज किया गया है, जिसकी कल्पना कभी विपक्ष कर ही नहीं सकता है। अंग्रेजों के जमानों के कोर्ट फीस एक्ट 1870 से लेकर नए कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025 तक हर कानून को न केवल बारीकी से अध्ययन किया गया है, बल्कि सर्वसम्मति से इसको पारित करने का काम हमारी इस समिति ने करने का काम किया है। यह बिल सही मायने में इस श्लोक को चरितार्थ करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इस बिल में सबको साथ लेकर चलने की सोच है। आज इस बिल के माध्यम से जो बदलाव होने जा रहा है वो एक ऐतिहासिक बदलाव है, क्योंकि जिन 78 कानूनों में इस संशोधन को करने का काम किया जा रहा है, न केवल इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बल्कि इसके साथ साथ आम नागरिकों का ईज ऑफ लिविंग भी सुधरेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं किस तरीके से यह बिल हमारे देश के युवा, हमारे देश के किसान, हमारे देश के गरीब और मध्यम परिवार के लिए संजीवनी का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से किसानों के लिए द कैटल ट्रस्ट पास एक्ट 1871 के तहत जब किसी किसान का कोई मवेशी किसी दूसरे किसान की खेती में चल जाता था, उसके फसल को थोड़ा बर्बाद करता था, तो उसको जेल तक का प्रावधान पुरानी सरकार ने करने का काम किया और हमारी सरकार ने इस बिल के माध्यम से इसको डिक्रिमिनलाइज करने का काम किया है और अब केवल जुर्माने तक इसको सीमित करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, द अपीडा एक्ट 1985 के तहत जब किसान निर्यात के रिटर्न को सही समय पर नहीं जमा कर पाता था, तो इन लोगों ने उन पर मुकदमा तक चलाने का काम किया और हमारी सरकार ने पहली बार यदि ये गलती होती है तो चेतावनी तक इसको सीमित करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियुक्तियों को अप्रेंटिसशिप कोटा पूरा न करने पर आपराधिक आरोपी के तरह उनके ऊपर आपराधिक कानूनी कार्रवाई की जाती थी। हमारी सरकार ने इसको खत्म करने का काम किया। अब जितनी भी कंपनी हैं वो न केवल खुलकर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देगी, बल्कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित करने का काम भी करेगी। अध्यक्ष महोदय, बुनकरों के लिए द हैंडलूम एक्ट 1985, जिसमें हमारे गरीब बुनकर, मैं भागलपुर में जन्मा हूं जहां पर एक बड़ी आबादी हमारे बुनकरों की है। हमारे गरीब बुनकर जो गलती से आरक्षित वस्तुएं बना लेते थे तो उनको जेल तक में डालने का प्रावधान इन लोगों ने बनाया था। हमारी सरकार ने उस प्रावधान को खत्म करते हुए केवल पेनल्टी तक
इसको सीमित करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, हम लोग सब जितने पक्ष या विपक्ष के यहाँ पर हमारे सांसद बैठे हैं, प्रतिदिन द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जिसमें प्रतिदिन जो ट्रैफिक से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत गलतियां हम लोगों से होती थी, तो इसमें मुकदमों से लेकर आम नागरिक कोर्ट और आरटीओ के चक्कर लगाने पर विवश हुआ करता था। हमारी सरकार ने पहली गलती पर चेतावनी और फिर जुर्माने तक इसको सीमित करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मक्का और मखाना हब एपीडा एक्ट, जिसके तहत मेरी लोकसभा जो सबसे ज्यादा मक्का उत्पाद करती है खगड़िया, वहां पर जब पहली बार कोई किसान निर्यात करने पर कोई कागजी कार्रवाई में कोई त्रुटि कर देता था तो उस पर मुकदमा चलाने का ये लोग काम करते थे। अब हमारी सरकार ने उसको हटाकर पूरी तरीके से किसानों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है और अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में न केवल किसान बल्कि युवा भी अपने स्टार्टअप को लेकर देश भर में नहीं दुनिया भर में इस निर्यात को निडर होकर कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने निरंतर अथक प्रयास करके 1633 ऐसे पुराने और जटिल कानूनों को खत्म करने का काम किया है और उससे देश का व्यापारी, देश का किसान, देश का युवा और मध्यम वर्गीय परिवार निडर होकर अपने जीवन को जीने का काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, 2014 से 25 तक भारत ने 748.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके ये आकर्षित 143% की वृद्धि बढ़ाकर देने का काम किया और एक्टिव रजिस्टर्ड कंपनी जो 2020-21 में 1.55 लाख थी, वो बढ़कर 3 फरवरी 2026 में 1.98 लाख हो गई है। ये अपने आप में बताता है, ये 27% की जो बढ़ोतरी ये अपने आप में बताती है कि हमारी सरकार केवल कानून बनाती नहीं है, उस कानून का धरातल पर होता हुआ मूलचूल परिवर्तन भी हम लोग देखने का काम अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं। 2014 के बाद मोदी जी की सरकार ने न केवल ये मूलचूल परिवर्तन किया बल्कि कई ऐसे प्रतीकों को भी उखाड़ फेंकने का काम किया जो राजशाही तरीके से चलाने का काम करते थे। हम लोगों ने राजपथ को कर्तव्य पथ बनाने का काम किया, क्योंकि एक सच्चे लोकतंत्र में राजा कोई नहीं होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य प्रधान होता है। हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय नौसेना का नया निशान दिया। इन लोगों के कार्यकाल से नौसेना के जो झंडे हुआ करते थे वो सेंट जॉर्ज क्रॉस हुआ करता था, जो गुलामी का एक बहुत बड़ा दाग था। हम लोगों ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2 सितंबर को नौसेना को एक नया निशान का अनावरण करने का काम किया, जहां हम लोग गर्व से देख सकते हैं कि महान छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा उसमें अंकित है। अध्यक्ष महोदय, अपराधी कानून में भी मूलचूल परिवर्तन किया गया है। जहां अंग्रेजों के बनाए गए आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट हुआ करते थे, उसकी जगह पर अब हम लोगों ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का तो काम है कि उनको विरोध करना है, लेकिन इस बिल के माध्यम से अध्यक्ष महोदय साधारण गलतियों पर असाधारण जिस तरीके से उनको सजा दी जाती थी उसको रोकने का काम किया है। और मैं 4 पंक्ति में सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूं, विपक्ष के साथियों कहना चाहता हूं कि तुम विरोध करते रहो, भ्रम फैलाते रहो, हम सच की राह पर यूं ही चलते रहेंगे। तुम आंधियां उठाओ, तुम तूफान मचाते रहो, हम हर बार दीपक बनकर जलते रहेंगे। तुम झूठ के सांचे चाहे जितने गहरे कर लो, हम सच्चाई की किरणें बनकर ढलते रहेंगे। तुम सवालों में उलझाओ, राह भटकाते रहो, तुम्हें हम हर मोड़ पर जवाब बनकर मिलते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, जवाब बनकर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया। हम इस बिल का और हमारी पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Chairperson, sir. The Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill is now called Jan Vishwas 2.0, but I think it is violate the law, pay and go. Yes. The major structural faults in the bill is blanket decriminalization. There is no classification of offences. The bill amends 79 plus laws uniformly without distinguishing
minor procedural lapses, serious regulatory violences. Example is the Drugs and Cosmetic Violation Act 1940, removing imprisonment for violations affecting the public health, risks serious consequences, weakens deterrence against counterfeit drugs. This treats technical non-compliance and violates doctrine of proportionality. There is replacement of criminal liability with monetary penalty. Across the bill, there is the punishable with imprisonment is replaced by liable to penalty. This is seen in repeatedly across acts like Dock Workers Regulation of Employment Act, where there is stage-wise increase in the penalty. 5,000 rupees for first contravention, then 10,000 for the next and further. So, if you can pay, you can violate the law. And there is one more act, Disaster Management Act, sir. In this, if the negligence leads to loss of lives, there is simple imprisonment for 1 year, and now that is again reduced with increased monetary penalties. Administrative education replacing judiciary. The educating officers, they decide the guilt. In Chapter 7, Section 29, suing for compensation in any competent court is now replaced by making an application for compensation to educating officer. This weakens the judicial oversight. In Section 30, convicting magistrate is now replaced by educating officer. Compounding plus settlement culture. Offences can be settled by payment. Even serious violations can be closed without trial. Like the Damodar Valley Corporation 1940 Act, it allows compounding with payment and there is no prosecution. This is pay and escape model. The constitutional objections are violation of Article 14, where equality before law is gone. Rich corporations can pay penalties and escape the liability, whereas the poor individuals force coercive enforcement. Violation of Article 21. Criminal prosecution replaced by administrative inquiry. No independent judiciary in first instance. And then punishment is not proportional to the harm, sir. Now this promotes corporate crime and corruption. This is the cost of doing business model. Corporates will treat penalties as operational expense. They will continue violations if the profit is more than the penalty. Weak deterrence. Earlier there was fear of imprisonment. Now there is only financial penalty. Encourages repeat offenders. This leads from warning to penalty to continued violation, and then encourages regulatory capture. Legalization of white-collar crime. This bill effectively decriminalizes corporate fraud-like conduct, converts crimes into violations, undermines public safety, like in Drugs and Cosmetics Acts, Infrastructure and Highways, Labor and Industrial Laws. This will harm the lives, but yet attracts only fines. The bill is arbitrary and overboard. It undermines criminal justice system. It promotes economic inequality. Sir, few acts like the Pharmacy Act, the LIC Act, National Highways Act, the Petroleum and Pipeline Acts. In all these acts, there is increase in the penalties, but they require stricter regulatory oversight. They require stricter enforcement, technological monitoring, and stricter actions, systemic reforms, infrastructure strengthening, and thereon. And this bill also encourages corruption. It weakens the deterrence against corporate crimes. It violates basic structure. This bill replaces justice with settlement, accountability with affordability, and punishment with payment. It tells the powerful, commit a violation, pay a fee, and walk free. This is not reform. This is the legalization of white-collar impunity. It may carry the name Jan Vishwas, but it betrays the trust of people of India. Congress stands firmly with people and against any law that makes justice a commodity that can be paid. Sir, I agree with my senior MP, Arvind Sawant, sir. He says that if you don't want to put people in jail, first clear the persons who are already in jail.
So don't act as if you're with the people, but try to clear all the false accusations on the people, sir. Thank you. Thank you. Shri Praveen Khandelwal. Shri Praveen Khandelwal. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का और अपने जनपद की महान जनता का फतेहपुर खड़ा करा दियो, आपका नाम नहीं बुलाया महोदय। Sorry, correct. आज्ञा हो तो बोले। I'm sorry. Shri Praveen Khandelwal ji from BJP. Sorry. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस बेहद महत्वपूर्ण दूरदर्शी और संरचनात्मक सुधारों वाले जनविश्वास बिल के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं और उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। न केवल एक सांसद के रूप में बल्कि देश के 9 करोड़ व्यापारियों और लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लघु उद्यमियों की ओर से भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इस जन विश्वास बिल का सबसे ज़्यादा लाभ हमारे क्षेत्र के उन लोगों को मिलेगा जो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं। केवल मात्र टेक्निकल एरर या क्लरिकल एरर के नाम पर इंस्पेक्टर आते थे, धमकाते थे और उसके बाद करप्शन का एक खेल शुरू होता था। ये जन विश्वास बिल करप्शन के उस खेल को समाप्त करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो पिछले 60-70 सालों में जो भी पूर्ववर्ती सरकारें थी उन्होंने कानून इतने ज्यादा बना दिए कि हमारे देश का छोटा व्यापारी, गांव कस्बे में रहने वाला व्यापारी अगर चाहता भी तो अपनी तरक्की नहीं कर सकता था। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उसको अनेक प्रकार के प्रावधानों से जूझना पड़ता था। इस बिल पर जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत बड़ी पहल के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में जो लाइसेंस है उसको परपीचुअल कर दिया, यानी कि एक बार लाइसेंस लेंगे हर साल रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार की गवर्नेंस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के आए हैं उसके लिए देश के लघु उद्यमी और व्यापारी उनका धन्यवाद करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जन विश्वास का अर्थ है छोटी प्रोसीजरल गलती पर जेल नहीं, लेकिन सिस्टमेटिक फ्रॉड पर किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं। अभी जिन वक्ताओं ने जिक्र किया मैं समझता हूं शायद उन्होंने बहुत ध्यान से हमारी प्रोसीडिंग्स को पढ़ा नहीं है या पूरे बिल को ध्यान से पढ़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अपराधों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। इस बिल के माध्यम से केवल उन अपराधों को डीक्रिमिनलाइज किया गया है जो बहुत छोटे थे, मामूली थे और बहुत सिस्टमेटिक फ्रॉड या इंटेंशनल फ्रॉड वाला कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसको कि डीक्रिमिनलाइज किया गया हो। जन विश्वास बिल का मतलब होता है ऑनेस्ट कंप्लायंस को राहत देना, लेकिन इसके साथ साथ हमारी सरकारों की जो पीनलाइज शक्ति है उसको सीरियस फ्रॉड, वायलेंस और पब्लिक हार्म पर केंद्रित होना चाहिए। ये जन विश्वास का अर्थ होता है। इसीलिए इस बिल के माध्यम से एक बड़ी मात्रा में लोगों को राहत देने का प्रावधान किया गया है। कानून का डर क्लरिकल एरर पर नहीं बल्कि संगठित धोखाधड़ी पर होना चाहिए। यह जन विश्वास बिल का प्रोपोर्शनेट रेगुलेशन है। कहीं ना कहीं हम सबको इस बात को समझना होगा। जन विश्वास बिल का मतलब कानून को हल्का करना नहीं बल्कि कानून को अधिक न्याय संगत, अधिक लक्षित और अधिक विश्वसनीय बनाना है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में एक बात आपके सामने समक्ष कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का ये जो माहौल अभी तक बना हुआ था, ये अनेक प्रकार के कानून थे। उन कानूनों के चलते पश्चिम बंगाल से
1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2025 के बीच 6,688 कंपनियों ने पश्चिम बंगाल से पलायन किया, क्योंकि वहां की सरकार उनको ये वातावरण देने में असफल सिद्ध हुई। लेकिन वो कंपनियां जो वहां से पलायन किया वो कहां पर आई? वो महाराष्ट्र में आई, उत्तर प्रदेश में आई, छत्तीसगढ़ में आई, गुजरात में आई, राजस्थान में आई, असम, झारखंड और अन्य क्षेत्रों में आई है। तो कुल मिलाकर के ये जो हर वो राज्य जो अपने यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगा, हर वो राज्य जो अपने यहाँ काम करने वालों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगा, हर वो राज्य जो अपने यहाँ ईज ऑफ लिविंग देगा, उसको निश्चित रूप से इस बिल के माध्यम से फायदा मिलेगा। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह विधेयक किस प्रकार का परिवर्तन लाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। 113 प्रावधानों में कारावास को सीधे पेनल्टी में बदला गया है। 317 प्रावधानों में जुर्माने को पेनल्टी में परिवर्तित किया गया है। 63 प्रावधानों में पहली बार के उल्लंघन पर केवल चेतावनी और उसके बाद नोटिस का प्रावधान किया गया है। और अभी कुछ देर पहले हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स और अपीलेट अथॉरिटी की भी स्थापना का प्रावधान किया गया है। वहीं जो माइनर ऑफेंसेस है उनको कंपाउंडिंग करने का भी प्रावधान किया गया है, जो ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि कॉम्प्लायंस को सुनिश्चित करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम इस विधेयक के व्यवहारिक प्रभाव को देखें तो ये विधेयक विशेष रूप से हमारे MSME सेक्टर और छोटे व्यापारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से देश में व्यापार और अधिक करने की प्रवृत्ति को बल मिलेगा। वहीं दूसरी ओर ये इंस्पेक्टर राज की प्रवृत्तियों को रोकेगा, कंप्लायंस को सरल बनाएगा, इन्वेस्टमेंट और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार और व्यापारियों के बीच विश्वास का संबंध स्थापित करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से एक महत्वपूर्ण प्रभाव हमारी न्याय प्रणाली पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि आज जो लाखों मामले हमारी अदालतों में लंबित हैं, केवल बहुत छोटे छोटे कारणों से, उनको भी जल्दी उनका निस्तारण करने में मदद मिलेगी। इससे अदालतों पर बोझ कम होगा, मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा, न्यायपालिका गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। जी, आप कंक्लूड कीजिएगा। बस अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट में कर रहा हूँ जी मैं। और यह न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने लंबे सालों से कभी किसी सरकार ने इस बारे में सोचा नहीं कि एक आम व्यापारी, एक आम उद्यमी किन किन परेशानियों से दो चार होता है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वो सारे कदम उठाए हैं। व्यापारियों के लिए मुद्रा योजना कौन लेकर के आया? मोदी जी लेकर के आए। स्वनिधि योजना कौन लेकर के आया? मोदी जी लेकर के आए। विश्वकर्मा योजना कौन लेकर के आया? मोदी जी लेकर के आए। महिलाओं को उद्यमी बनाना, देखो 2 मिनट बस, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए लखपति निधि योजना कौन लेकर के आया? नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए। तो कुल मिलाकर के यदि उस सेक्टर को जो सेक्टर देश के लगभग 20-25 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, उसको मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसलिए मैं जन विश्वास बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। मैं जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, यह विधेयक इस सरकार के दोहरे चरित्र और उसकी कारपोरेट परस्त मानसिकता का जीता जागता प्रमाण है। और महोदय, माननीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी कहते हैं कि यह बिल बिजनेस को सरल करने के लिए है। मैं पूछना चाहता हूं, यह बिजनेस को सरल करना किसके लिए चाहते हैं? महोदय, जब पर्यावरण, श्रम और सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन को गैर आपराधिक बनाया जाएगा तो इसका सीधा मतलब है कि बड़े उद्योगपति अब बेखौफ होकर नियम तोड़ेंगे
अगर किसी कॉर्पोरेट कारखानों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी से किसी मजदूर की जान जाती है, या वे नदियां जहां कारखाने के केमिकल वगैरह उस नदी में गिर रहे हों, वो नदियां जिसे वो जहरीली करते हैं, तो अब उन्हें जेल नहीं होगी, सिर्फ जुर्माना पर वो छूट जाएंगे। महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। एक तरफ गरीब जो किसान हैं, ट्रैक्टर, केसीसी, छोटा छोटा लोन जब वो चुका नहीं पाते हैं तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, यहां तक कि कुर्की जब्ती तक के भी कर दिया जाता है महोदय। लेकिन बड़े सूट बूट वाले व्यवसायी के आर्थिक और ढांचागत अपराधों को सरकार गैर आपराधिक कर रही है। यह जन विश्वास विधेयक नहीं महोदय, यह पूंजीपति विश्वास विधेयक है, पूंजीपति विश्वास। इस विधेयक के तहत 79 कानूनों के 717 प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाया जा रहा है महोदय। क्या अब कानून तोड़ना सिर्फ पैसा देकर बच निकलने का लाइसेंस बन जाएगा? यह एक खतरनाक सोच है। नियम तोड़ो, पैसा भरो और फिर से नियम तोड़ो। महोदय, पटना के आसपास प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां सील होने के बाद भी चलती रही। एनजीटी को बिहार पर 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाना पड़ा और सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की पहचान ठीक से नहीं हो पा रही है। यह सिस्टम पहले से ही कमजोर है और आप जेल की सजा भी हटा देंगे तो यह कानून नहीं, नियम तोड़ने का लाइसेंस बन जाएगा महोदय। सरकार से मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हुई। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, हम तो चाहते हैं कि उद्योग आए। और जो कहते हैं इन लोग, ये सरकार कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है बिहार में, तो भैया डबल इंजन की सरकार इतने दिनों से है, तो फिर इस तरह का पलायन क्यों हो रहा है बिहार से इतना? क्यों नहीं उद्योग धंधे आप लगा रहे हैं? अगर आप उद्योगों को पहले ही यह संदेश दे देंगे कि नियम तोड़ने पर सिर्फ जुर्माना लगेगा, तो क्या यह जवाबदेही उद्योगीकरण होगा महोदय? नहीं होगा महोदय। एक उदाहरण मैं देता हूं। औरंगाबाद में एनटीपीसी है, एनटीपीसी चल रही है। स्थानीय लोगों ने बार बार शिकायत किया, हमने भी कई को बार शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। एनटीपीसी से जो एक्स निकलते हैं, राख जो निकलते हैं प्रदूषण से, सैकड़ों गांव का खेती सर वंचित है, खेती नहीं कर पा रहे हैं, इतना प्रदूषण है इससे, फ्लाई से। दर्जनों गांव का जल प्रदूषित हो चुका है, दर्जनों गांव का, कई को दर्जन गांव प्रदूषित हो चुका है महोदय। जब आज भी इतनी शिकायतें हैं और कल जब जेल का प्रावधान ही नहीं रहेगा, तो ऐसी बड़ी कंपनियां महोदय, इसे कौन रोकेगा? बस जुर्माना भरो और छूट जाओ। महोदय, मैं बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में 30,207 गांवों में पानी प्रदूषित हो चुका है बिहार का। अगर ऐसे हालात में भी आप सजा को कमजोर करेंगे तो यह जनता के जीवन के साथ सीधा खिलवाड़ होगा महोदय। कंक्लूड कर रहा हूं महोदय। जन विश्वास विधेयक मजदूरों के शोषण के लिए है। बिहार के मजदूर, किसान, गरीब के साथ धोखा है महोदय। सरकार, अभी हमारे एक मित्र भाई जिक्र कर रहे थे, इंस्पेक्टर राज को हटाकर कॉर्पोरेट राज ला रही है। क्या अब न्यायालय नहीं बल्कि अफसर तय करेंगे जी? धन्यवाद। अपराध क्या है और सजा क्या है? अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड कर ले रहा हूं। यह विधेयक संविधान की मूल संरचना पर प्रहार है। यह पैसा देकर बच निकलो वाली संस्कृति को बढ़ावा देता है। यह अफसरों को अत्यधिक शक्ति देता है और यह भ्रष्टाचार को जन्म देता है। इसलिए इस विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाए और जन विश्वास के नाम पर जनता को धोखा मत दीजिए। यह बिल अमीर के लिए आजादी और गरीब के लिए बर्बादी है महोदय, बर्बादी है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। बहुत
नीलेश लंके जी। सभापती महोदय, आज मी सभागृहात एका विधेयकाच्या विरोधात उभा आहे, पण ही केवळ विधेयकावरील विरोधातील भूमिका नाही. हे देशाच्या व महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची, शेतकऱ्यांच्या हक्काची, कामगारांच्या सुरक्षेची आणि संविधानाच्या आत्म्याची भूमिका आहे. अध्यक्ष महोदय, हे सरकार याला सुधारणा म्हणत आहे, पण आम्ही स्पष्ट सांगतो ही सुधारणा नाही, ही जबाबदारीपासून पळ काढण्याची युक्ती आहे. हे जनतेसाठी नाही, भांडवलदारांसाठी आहे. हे शेतकऱ्यांसाठी नाही, सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीसाठी आहे. हे कामगारांसाठी नाही, हे मोठ्या उद्योगांच्या फायद्यासाठी आहे. एकतर ही निवड समितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या पक्षाचा एकही सदस्य यामध्ये समावेश नाही. अध्यक्ष महोदय, या विधेयकात फौजदारी शिक्षेऐवजी केवळ आर्थिक दंड ठेवण्यात आला आहे. म्हणजे काय? मोठ्या कंपन्या नियम मोडतील, पैसा भरतील आणि मोकळ्या होतील, पण गरीब, लहान उद्योजक, कामगार, कंत्राटी कामगार, कर्मचारी, सामान्य नागरिक यांच्यासाठी तोच नियम म्हणजे संकट आहे. हा फायदा नाही, हा मोकळा परवाना आहे. नियम मोडा, दंड भरा, पुढे चला, हे सरकारचे नवे धोरण आहे का? कायदा सर्वांसाठी समान असेल तर शिक्षा फक्त दुर्बलावरच का? सभापती महोदय, या विधेयकामुळे सर्वात मोठा धोका कामगार सुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणाला आहे. कारखान्यात दुर्घटना झाली, सुरक्षाने मोडले, प्रदूषण वाढले, जमिनीचे, पाण्याचे, हवेचे नुकसान केले तर फक्त दंड भरून सुटका? कामगारांचा जीव इतका स्वस्त आहे का? शेतकऱ्यांच्या पाण्यावर विष पसरून जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करून फक्त पैसे भरायचे का? शेतकऱ्यांचा अपमान सहन करणार नाही अध्यक्ष महोदय. कामगारांचा अन्याय सहन करणार नाही अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्राच्या जमिनीशी, पाण्याशी, माणसाची खेळ आम्ही कदापि सहन करणार नाही. महाराष्ट्राचा आवाज दमदार, कामगार एकजूट, शेतकरी विरोधात नाही. हे विधेयक केवळ दंडापुरते मर्यादित नाही, ते नियामक सवलतीचे नव्हे, नियामक दुर्बलतेचे चिन्ह आहे. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा कायदा कठोर राहत नाही तेव्हा उद्योगांना संदेश जातो, तुम्ही मोठे असाल तर नियमही तुमच्यासाठी वागतील, आणि हेच सर्वात घातक आहे अध्यक्ष महोदय. कारण संविधानात सांगते राज्याने लोकांच्या कल्याणासाठी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय आणि राजकीय न्यायाचा पाया मजबूत करायचा असतो, पण येथे उलटे घडत आहे. जनतेचे रक्षण कमकुवत आणि मोठ्या हितसंबंधाचे रक्षण मजबूत. हे संविधानाचे नाही, हे कॉर्पोरेट सुलभता बनवण्याचा प्रयत्न आहे. अध्यक्ष महोदय, कलम 14 समानतेची हमी देते आणि कलम 21 जीवन, व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते. मग प्रश्न असा, जर सामान्य नागरिकांवर कायद्याची कडक पकड आणि मोठ्या उद्योजकांवर फक्त दंडाची मृत थाप असेल तरी समानता कुठे राहिली? जर कामगारांच्या जीवाची किंमत फक्त दंडात मोजली जात असेल तर जीवनाचा हक्क तरी कुठे राहिला अध्यक्ष महोदय? एक देश, एक कायदा, मग दोन मापदंड कशासाठी? गरिबांसाठी कठोरता आणि श्रीमंतांसाठी सवलत, हे चालणार नाही अध्यक्ष महोदय. दोन मापदंड नको, एक न्याय, एक कायदा अध्यक्ष महोदय पाहिजे. मी सरकारला स्पष्ट सांगू इच्छितो अध्यक्ष महोदय, शेतकरी, कामगार, पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्थानिक स्वराज्य यांच्या हितावर घाव घालून कोणतीही सुधारणा स्वीकारली जाणार नाही. अर्धा मिनिट द्या फक्त. जर खरोखरच सुधारणा करायची असेल तर ती जबाबदारी वाढवून, पारदर्शकता वाढवून आणि जनतेचे संरक्षण मजबूत करून करावी लागेल. म्हणूनच अध्यक्ष महोदय, आमची ठाम मागणी आहे की हे विधेयक तात्काळ संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवावे, सखोल चर्चा करावी. शेतकरी संघटना, कामगार संघटना, पर्यावरण तज्ज्ञ, राज्य सरकारे आणि नागरिक सामान्यांचे मते घ्यावीत. अन्यथा या सभागृहात नोंद होईल की सरकारने जनतेच्या हक्कापेक्षा भांडवलाचे हित मोठे मानले. महाराष्ट्र आवाज बुलंद आहे, शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद आहे,
कामगारांचा आवाज बुलंद आहे, संविधानाचा आवाज बुलंद आहे. जय शिवराय, रामकृष्ण हरी. तुम्ही आम्हाला बोलण्याची संधी दिली, धन्यवाद. जय हिंद. माननीय श्री NK प्रेमचंद्रन जी. Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for affording me this opportunity to take part in the discussion on the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026. Sir, it is indeed a privilege to make mention that I was also a member of the Select Committee to examine this bill, Jan Vishwas Bill 2026. I would like to place it on record the endeavors taken by the chairman, in particular, the chairman, Sri Tejasvi Surya, in his understanding as well as the conducting the proceedings of the Select Committee was fair and good enough to be appreciated. Though I am having so many dissent to it, so I have already given a dissent report, a dissent note on my part, and that is on record in the Select Committee. I would like to place it on record through my speech through the attention of this House. Sir, if you examine the statement of objects and reasons of the bill, there is an observation that paragraph 5, the Honorable Select Committee examined the said bill and submitted its report to the Lok Sabha on 13 March 2026. In addition to the bill referred to it, the Honorable Committee made recommendations to bring several other enactments within the ambit of the bill. And that is the reason by which there are 79 acts further, so it has come total 79 acts. See, my dissent note is very clear because the Select Committee has got the authority to examine the bill, scrutinize the bill through a motion passed by this House. And the Honorable Speaker has entrusted the authority with the Select Committee to examine the bill, draft bill which is presented before the House. And you may kindly see, sir, on 22nd December 2025, the Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Department of Promotion and Industry and Internal Trade has written a letter to the chairman of the Select Committee, Mr. Tejasvi Surya, that further acts has also to be examined in this committee so that the ease of doing business and the ease of living can be achieved. See, what is the authority of the executive or the ministry to write a letter to the chairman of the Select Committee that further acts has to be examined by this committee? The executive has no authority to give such a letter or such a request because it is only the speaker has the authority to see that what are the acts to be examined by the committee and what are the provisions to be examined by the committee. The full domain, the authority is with the Honorable Speaker, not with the committee or not with the committee chairman. Because we have got the authority, the Select Committee in which I was also a member, got the authority to examine the bill, scrutinize the bill through the motion adopted by the House. So the domain is absolutely the draft bill which is being proposed, which is being referred to the committee through the motion, and that too by the Honorable Speaker. And my dissent note is that, sir, it is the bill was introduced on 18th August 2025, referred to the Select Committee, and the referral to the Select Committee was thus strictly in terms of and limited by the motion adopted by the Lok Sabha. It is a settled principles of parliamentary law and practice that when a bill is referred to a Select Committee or a joint committee, the remit and jurisdiction of the committee are confined to what is contained in the bill and to what is expressly stated in the motion of reference. The committee derives its authority solely from the House. The committee is getting the authorities from the House and cannot travel beyond the scope of the bill or the terms of the motion. Sir, the authoritative practice and procedure of Parliament by M.N. Kaul and S.L. Shakhtar. Kaul and Shakhtar is the authority in all these parliamentary procedures and practices, clearly lays down that the motion for reference of a bill to a select or a joint committee may include specific instruction to the committee, and the instruction to consider matters other than those dealt with the bill must be specific and clear. In the absence of such express instruction in the motion, the committee's jurisdiction remains confined to the provisions of the bill as introduced in the House and referred to the committee.
This reflects long settled, established parliamentary practice and convention as recognized by the Lok Sabha Secretariat. Sir, in the present case, the motion referring the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2025 to a select committee does not empower or instruct the committee to examine or recommend the amendments to 1. Provisions of acts which are not included in the bill at all, or provisions or sections of acts which are included in the bill but which are not sought to be amended by the bill as introduced. Therefore, the remit of the select committee is limited to examining and reporting on the provisions of the bill as introduced and referred by the House, nothing less and nothing more. This is the settled parliamentary procedure, convention, accepted procedure. But unfortunately, the committee has gone beyond the ambit of the committee and voted for 17 acts and submitted a report before the House, and that is the reason by which the government has withdrawn the bill and come with a new bill, fresh bill. But unfortunately, nothing was mentioned in the statement of objection reasons, nothing is mentioned. So for which, why I am making or placing before the House for record is, I am seeking a ruling on this also. Because if this practice is pursued in future also, any act, the committee will be getting authority to look into any act. So please, I have the dissent note. Normally, if you are submitted a dissent note, definitely you should be given an opportunity to explain what is the dissent and what is the content of the dissent. So kindly give me some little bit time. So for which I am seeking a ruling from the Honorable Speaker regarding this aspect, whether the committee is empowered to examine and scrutinize the provisions which are beyond the scope of the motion, that has to be cleared, for which a specific ruling is required. That is the first point which I would like to make mention. That is my dissent note also. And another one point I will conclude, sir. The second one is regarding Mr. Tejaswi Surya was arguing, or he was talking that it is a wonderful thing the government has done, because consolidated legislation, more than 79 acts taken together and more than 1,000 provisions have been amended. That is not a good legislative practice, sir. Each and every act should be discussed in detail separately. But unfortunately, nowadays, the parliamentary practices which we are pursuing, even after this NDA government has to come in power, most of the legislation put together and make a consolidated amendment. That is not a good practice, because each criminal provision in each criminal provision in each bill will be different, because it is depending on the situation. The aims and objectives of the acts are different. So it should be separate, distinct and independent. Consolidating all the acts within one act and amending the provisions of all these in a consolidated way is not a good legislative practice. That will not serve the purpose of the true, real spirit of the legislative practice. That is to be keep it in mind. And the third point, I am coming to the merits of the bill. I am not going to detail this because we have made our observation in the committee meeting. That is on record. So I would like to say that, sir, ease of doing business and ease of living. Now TDP, the Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu, I heard today from the speeches that speed of doing business, that is a new concept. Ease of doing business, ease of living, as well as speed of doing business, it is good. We should have an investment-friendly atmosphere. Definitely the entrepreneurs should be encouraged, but it should not be at the cost of the poor people. It should not be at the cost of the living at the cost of the labor. So nowadays, because of the neoliberal structural economic reforms, all these reforms are at the cost of the labor and the poor people. Why these reforms are not being made in the labor sector? Everywhere the privilege and the benefits are being given to the entrepreneurs or who are having the capital. So that aspect has also to be keep it in mind. When we decriminalize, here the imprisonment is made as the penalty, and wherever there is a penalty provision, that penalty is converted into a fine. Good for the minor offences, but in most of the cases the things are different. So the stringent penal provision is required in some cases. In some cases it has to be relaxed, for which I am fully in agreement with the observations and report of the committee. But at the same time, regarding the legislative practice, as far as the ambit of the powers of the committee, for which my dissent is there,
for which I am seeking a ruling from the Honorable Speaker. With these words, I conclude. Thank you very much, sir. माननीय श्री आमरा राम जी। माननीय सभापति महोदय, जन विश्वास कानून 2026 पे अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और जहाँ तक जन विश्वास विधेयक 2026 लेके आए हैं, ये बड़े बड़े लोगों को कानून तोड़ने पे केवल पैसा देके छूट देने का काम किया है। और दूसरा काम, इस जन विश्वास के माध्यम से सरकार जनता से खजाना भरने का काम कर रही है। निश्चित रूप से पशु अत्याचार में जो 100 रुपये था उसको 5000 रुपया करने का काम किया है। मतलब कितने गुना, मतलब आप समझते हैं इसको सजा से बाहर करते तो 100 का 200 करते, 500 करते, लेकिन 5000 करने का काम किया है। जहाँ अत्याचार जिसके मालिक हैं वो उसकी तो बात समझ में आती है कि उससे आप पेनल्टी ले लेंगे, लेकिन जो आवारा पशु हैं, इस सरकार की उस सांप्रदायिक नीति के कारण आज बहुत बड़ा गोधन आवारा है जिसका मालिक कोई नहीं है, वो सरकार इस नीति के कारण आया है। तो क्या सरकार वो पेनल्टी चुकाने के लिए तैयार है? निश्चित रूप से। जहाँ तक पशु क्रूरता में, आपने 10 लाख रुपए तक, क्योंकि पशु का व्यापार या तो मुस्लिम अल्पसंख्यक करते हैं या दलित समाज उसका व्यापार करता है, क्योंकि इस देश की बहुमत आबादी आज भी खेती पे निर्भर है। उस खेती के अलावा 30% आबादी आय उसकी पशुधन से, उसके पालन से होती है, और उसका व्यापार निश्चित रूप से वो कर रहे हैं। उन पे आपने 10 लाख रुपए का पेनल्टी लगाने का काम किया है। मेरा तो निवेदन है कि वो पशु खरीद के लाता है, पैसे दे के लाता है, उसके साथ किसी तरह की क्रूरता नहीं करता, चाहे वो भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, गाय है, जो भी घोड़ा है, जो भी कोई पशु है। निश्चित रूप से कई करोड़ के पशु होते हैं, को खरीद के लाता है, वो कोई क्रूरता करेगा? उसका जान से प्यारा उसको पैसे दे के लाया है, वो व्यापार करता है। और निश्चित रूप से उस पे आपने इस आधार पे कि वो पशु का व्यापार करने वाले दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उन पे 10 लाख का जुर्माना लगाने का काम किया है। न केवल उनको छूट देने का काम किया है, पेट्रोलियम खनिज पाइपलाइन, सभापति महोदय, किसान के खेत में से अगर पाइपलाइन जाएगी और वो तेल कंपनी अगर उसका ठेकेदार उसको वाजिब मुआवजा नहीं देगा तो निश्चित रूप से उसमें करेगा। और उसमें आपने कहां तक किया है? प्रथम पर 1 लाख रुपए जुर्माना, और दोबारा अगर वो उसको नहीं मानता है तो आजीवन कारावास और मृत्युदंड का भी आपने प्रावधान कर दिया कि अपने खेत जो उसकी आजीविका है, निश्चित रूप से उसमें मैंने तो अपने लोकसभा क्षेत्र में देखा है कि अभी गैस पाइपलाइन आई है, किसान की हर तरह से दुरुस्त करके उसको आप ये करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज निश्चित रूप से ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग, अगर उसको किसी ने में चलने में निरपराध कर दिया तो उसमें 10 लाख रुपए का, मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, जब काले कानून इस देश की सरकार लेके आई, इस देश का किसान अपनी फरियाद लेकर के सरकार के सामने रखना चाहता था, लेकिन उस सरकार की पुलिस ने सरकार के आदेश से किसान का रास्ता रोक दिया। तो उन पे ये पेनल्टी होनी चाहिए, उस पे नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से पूरा का पूरा वो बड़े लोग जो मजदूर का खिलाफ जो भी कार्रवाई करते थे, उसका जो सजा का प्रावधान था, उसको लूटने के लिए केवल पैसा देकर के छूटने का मतलब, वो निश्चित रूप से जिस तरह से फैक्ट्रियों का अपशिष्ट है वो नदियों में डालते हैं, बार बार एनजीटी के करने के बाद में भी वो प्रावधान नहीं करते, केवल मशीनें लगाते हैं जिसमें बहुत बड़ा खर्चा आता है, उसको चालू नहीं रखते, और पूरी नदियों को, और न केवल नदी बल्कि वो जमीनें भी उससे इतनी पॉल्यूटेड हो जाती है कि न वो पानी काम का रहता है, न जमीन काम की रहती है, और उससे विपरीत मानव स्वास्थ्य पे भी बहुत बड़ा अपराध है।
उन अपराधों को केवल आपने कुछ पैसा दे करके छूट देने का काम किया है। मैं समझता हूं ये जनता के पक्ष में नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों के पक्ष में है, और वो केवल पैसा दे करके उस अपराध से छुटकारा देने का, क्योंकि सरकार सब तरह से यही करने जा रही है। जो 40 कानून इस देश के श्रमिक जो सुई से लेके हवाई जहाज बनाता है, वो अपना खून पसीना करता है, उनके कानूनों को समाप्त करके 4 लेबर कोड ले आए जो इस देश के तमाम उद्योगपतियों के पक्ष में है और देश के मेहनतकश मजदूर के खिलाफ है। इस किसान की भी आय को तहस-नहस करने के लिए मैं समझता हूं पशु क्रूरता के नाम से उन व्यापारियों के साथ भी जो अन्याय करने का प्रावधान है, निश्चित रूप से इसको वापस लिया जाना चाहिए। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सर्वप्रथम मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के अपने फतेहपुर की जनता का धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस लोकतंत्र के मंदिर में इस जन विश्वास बिल के बारे में बोलने का अवसर दिलाया। महोदय, मैं इस जन विश्वास बिल 2026 का पुरजोर विरोध करता हूं। यह बिल सरकार का साफ धोखा है। सरकार 79 कानूनों में 784 धाराएं बदल रही है। मानवर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब किसका नाम बदल दे, कब किसका रंग बदल दे, कब किस शहर का नाम बदल दे, कौन सा नियम ले आवे, जनता से कोई पूछने का इनका कोई सरोकार नहीं है। पूरी तरीके से भारत की जनता को दुख देने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कर रही है। मानवर, आज अभी अमराराम जी बोल रहे थे, हमारे हरिंदर मलिक जी ने कहा किसानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा इस बिल से होने वाली है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े कारोबार करते हैं, उनको दंड में बहुत ही सरलता है, लेकिन जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, किसान हैं, बुनकर हैं, दुकानदार हैं, उनको ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाला बिल है। महोदय, सरकार कहती कि इससे जनता को फायदा होगा और कारोबार आसान हो जाएगा। मानवर, ये देश किसानों का है, ये देश श्रमिकों का है, ये देश मेहनत करने वाले लोगों का है। उन मेहनत लोगों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नए नए संशोधन लाती है, वो कभी भी नहीं सोचती है कि हम जन विश्वास लें। नारे में तो बोले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और धरातल में दिख रहा है सबका कर दिया सत्यानाश। सबका सत्यानाश मनवर हो गया। आज पूरे देश में गैस की किल्लत है, सरकार की तरफ से जा रहा है कि कोई किल्लत नहीं है। पूरा मीडिया, भारत का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सब जगह दिखाया जा रहा है कि गैस की भारी किल्लत है, कालाबाजारी हो रही है, महंगे सिलेंडर मिल रहे हैं। उन बातों पर ध्यान नहीं मानवर। आप धाराएं बदल देंगे, आप रंग बदल देंगे, आप ढंग बदल देंगे, आप नाम बदल देंगे। अभी एक सज्जन कह रहे थे हमने राजपथ का नाम कर्तव्य पद कर दिया। बड़ा तीर मार दिया भाई। कौन सा कर्तव्य आप कर रहे हैं? अपने कर्तव्य का बोध करिए। ये देश गरीबों का है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है। इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इस देश में महंगाई बढ़ रही है, इस देश के अंदर किसानों की फसलों की लूट हो रही है, इस देश में श्रमिकों को उचित मजदूरी नहीं मिल रही है। इन बातों पर नहीं चर्चा होगी मानवर। सिर्फ बिल ला करके जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे अपनी वाहवाही कराना, लेकिन इनके क्षेत्रों में जाके पूछो हालत क्या है। जनता चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो जो वादा किया था उसको पूरा करे मानवर। बिल पे ये सरकार, हाँ बिल पे बोल रहा हूँ मानवर। मैं कहना चाहता हूँ मानवर, ये सबसे बड़ा धोखा है कि ये बिल छोटे और बड़े कारोबारियों के में भारी अंतर है। बड़े बड़े कारोबारी और कंपनियां अब नियम तोड़ेंगे और सिर्फ जुर्माना भरेंगे। उनके लिए जुर्माना कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटा सा खर्चा है। वे कहेंगे जुर्माना भर दिया, फिर नियम तोड़ देंगे। उनके पास ढेरों वकील हैं मानवर, उनके पास पैसा है, उनके पास
आसानी से वो बच जाएंगे। मानवर पर्यावरण गंदा करना, मजदूरों की सुरक्षा न करना, मानवर छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, किसान, बुनकर, आम आदमी, उसके लिए एक छोटा जुर्माना भी बहुत ज्यादा होता है। उनके पास पैसे नहीं होते मानवर वकील को पैसा देने के लिए। एक छोटी सी गलती पर जुर्माना भरने से उनकी दुकान बंद हो जाएगी, मानवर परिवार भूखा रहेगा, वो डर के मारे काम ही नहीं कर पाएगा। सरकार बड़े अमीरों को आसान कर दे रही है, छोटे आदमी को और परेशान कर रही। सरकार ने न इस बिल पर विपक्ष से बात की, न जनता से पूछा, न कोई बैठक की, न कोई चर्चा की। ये बिल न्याय को कमजोर कर रहा है मानवर। अदालतों पर वो कम करने के नाम पर सरकार असल में न्याय को खत्म कर रही मानवर। ये बिल जनता के साथ विश्वास नहीं बल्कि धोखा है। मैं सदन से मांग करता हूं कि इस बिल को तुरंत वापस किया जाए। जनता अब ऐसे झूठे विश्वास के नाम पर धोखा नहीं खाएगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Speaker Sir, for giving me an opportunity to speak on the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026 or the Jan Vishwas 2.0. Sir, this particular bill has 79 central acts and 717 provisions decriminalized, sir. Sir, if you look at the history of this in the recent past, in 2023 Act, they had involved 42 laws and 183 provisions, sir. In the 2025 bill, which was proposed, there were only 16 laws, 16 to 17 laws, and 288 provisions which were to be decriminalized. But that number suddenly has sharply increased, where now it involves 79 central acts and 717 provisions, sir. Sir, if you look at the laws, it is like several laws which are involved, and the most important is the bulk of this decriminalization is being brought in the economic and business regulation laws, sir. Sir, we feel that this is only to help the corporate companies so that they can get away with imprisonment and they can just settle with just fines. So this kind of a law will make sure that the companies are not going to have any respect for, say, safety standards or pollution standards, all these problems, which is going to be a huge headache for the common man, sir. Because these people who set up their companies, they'll be setting it up in one place where it will be the poor who will be surrounding and living over there in an industrial area, and these people will be far, far away, protected from environmental problems or whatever, sir. Sir, and the other things which are involved is about infrastructure and utility laws, where Electricity Act and transport and logistic regulations are involved. And also it involves the transport and municipal laws, industrial and labor-related laws, consumer standards and measurement laws. So here also, when you're talking about the consumers, already as it is, the consumers have no redressal, because most of the times we do not have a clue about how to go about get our dues if there is something where I have a problem with some kind of a product or whatever. Again, here you are making it easier, where corporates are going to be not answerable to the problems which they have created, where the common man will be left running from pillar to post, sir. And also you are talking about the health and product regulation laws, which involves the Drugs and Cosmetics Act, sir. Sir, I think this provision should be re-examined, though the Select Committee has been recommended certain provisions. I feel that these things should be regulated, because there are a lot of instances where quacks are practicing, sir, and we don't know whether these people also are going to be protected over there, where they are manufacturing and selling products, maybe not even licensed. And though complaints are being sent to the authorities, no action is being taken. As it is, with this law, it will become even more easy for them to float all these norms, sir. And also the commodity and sector-specific laws, where you are talking about the Tea Act and the Coir Industry Act. The problem will be about licensing and export compliance, sir. So this nature of decriminalization removes imprisonment. Sir, if you look at the problems, the core threats and risks this bill is going to be creating, it will be something where most of the time we say that minor offences are being done which need not have an arrest provision. But if you look at the law, it does not say arrest. It says arrest and imprisonment and or a fine. So it is left to the discretion of the person implementing it. So if you are looking at, I mean, like we've seen it in several instances, sir, where the rich, especially spoilt brats, where they are going about driving on a highway or wherever, they have total disregard to people around them, even if they are not drunk. There are instances where these have ended up in deaths of innocent civilians, sir. When you are having a bill which says that a traffic accident need not be criminalized, it is decriminalized,
it will be with, they will have absolutely no respect for the law, and they may even insult a policeman, saying that, what is it? This is only a fine which I have to pay. Okay, here, take it. And they will throw it on their face. These instances do happen, sir. We have seen so many YouTube videos where the police have to bear the brunt of all these kind of behavior from the affluent people, sir, affluent society, especially youngsters. Sir, there is also lack of independence. Earlier, all these laws had a provision where it will go for a judicial scrutiny, where the courts are involved, and we can expect some kind of legal redressal for these issues, sir. But here we are looking at an adjudicating officer who is going to be deciding on it. And the moment there is a bureaucratic person involved, there is always going to be a suspicion whether he is going to be influenced by either the political or administrative personnel, sir. So these kind of risks are inherent in this bill. So how are we going to be addressing all these issues? And the competence gaps, these officials may lack the judicial and technical expertise to decide complex cases. For example, sir, in my constituency is a highly polluted area because there are so many industries over here. Sir, these industries have created so much of pollution problems, and we are trying to take legal actions against them. But if you are going to be decriminalizing this, those industries are going to act with impunity and say, okay, at the most it's going to be a 10,000 rupee fine, I'm going to do this, and I'm going to put all my whatever sewage and slush into the rivers or whatever and pollute it, sir. And this is going to also dilute deterrence for public safety, sir. And if you're looking at examples of how this will affect, the Drug and Cosmetics Act, it had a provision for imprisonment, but now it has been removed. This potential risk to consumer safety if companies prioritize profits over strict compliance, sir. Sir, National Highways Act, up to 5 years of imprisonment if a highway is unsafe. But now you've decriminalized it, so a corporator who is laying a road may say that I don't care about the safety of people, and he may compromise for profits. And also the Indian Post Office Act, sir, criminal penalty for unlawfully opening of postal articles. Thank you. I can't understand why this is decriminalized. It is an offense which should be criminalized. And also, sir, when we are talking about the environmental problem, our Honorable Prime Minister in COP26 in Denmark, he said when the whole world was willing to go for net zero by 2030, the government of India, represented by our Honorable Prime Minister, they said we are going to only do it by 2070. You bring this law, environment is going to go for a toss where even by 2100 you will not be able to achieve your environmental net zero, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, Honorable Speaker, sir. I like to speak on Jan Vishwas bill, and I do so with the genuine concern about the directions and the design of this legislation, sir. Sir, the core issue is that the bill bypasses the careful, consultative approach that any major change in criminal liability demands. It replaces imprisonment with fines and administrative penalties in a very wide range of laws, but the structure around those penalties is weak. The threshold for action, the margin of discretion, and the escalation of penalties are left largely to executive rules rather than the clear statutory safeguards. This is without adequate checks and balances, sir. There is also a serious question about institutional rigor. The earlier version of this bill went to a select committee, which highlighted several concerns about whose process ended with the bill being withdrawn. The government has now introduced an amended version. We request a resend to a committee. Underlying questions about proportionality, accountability, and deterrence remain unanswered, sir. The issue is that this model may turn penalties into a routine cost of doing business, especially for small producers and vulnerable workers, instead of a genuine mechanism to ensure compliances and protect our public interests, sir. The absence of a strong, independent adjudication and appeal framework also makes it harder for ordinary citizens to seek redress, sir. I do not oppose the idea of rational or proportionate regulation, but this bill as drafted needs to be reconsidered with a greater sensitivity to institutional safeguard, transparency, and protection of the right of the weakest, sir. I request through you, sir, to the Honorable Minister, sir, kindly refer this bill for a joint parliamentary committee, sir, as it's my side request, sir. Thank you so much, sir. Yes, sir. माननीय श्री रमेश अवस्थी जी, माननीय श्री रमेश अवस्थी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आज इस गरिमामय सदन में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2 पर और उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस समिति का सदस्य रहा हूं, इसलिए मैंने इन ऐतिहासिक सुधारों को करीब से देखा है। इसलिए मैं इस विधेयक को नए भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक मानता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस क्रांतिकारी कदम के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने गुलामी की मानसिकता के आखिरी प्रतीकों को मिटाने का बीड़ा उठाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी चर्चा की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करना चाहता हूं। हवाएं लाख मुखलिक हों मगर चलना नहीं रुकता, जुनूने ये साहिल हो तो फिर दरिया नहीं रुकता, बदलती है हमें तकदीर इस भारत की अब यारो, कदम जब बढ़ गए आगे तो फिर मोदी नहीं रुकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 75 वर्षों में हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी तकनीकी भूलों के लिए हमारे व्यापारियों, किसानों और आम नागरिकों को अपराधी की तरह देखा जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का मंत्र दिया, वह विधेयक उसी की जीवंत सिद्धि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो हमें इंस्पेक्टर राज और लाल फीताशाही की बेड़ियों को हटाना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने व्यवस्था को डाउट से निकालकर ट्रस्ट पर आधारित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जन विश्वास प्राविधान संशोधन 2000 पर गठित चयन समिति की रिपोर्ट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद ये विधेयक लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, श्री तेजस्वी सूर्या की अध्यक्ष वाली इस समिति का सदस्य होना मेरे लिए एक सम्मान की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में वर्षों से कई कानून ऐसे चले आ रहे हैं जिनमें छोटे छोटे तकनीकी या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को भी आपराधिक अपराध बना दिया गया है। परिणाम ये होता है कि एक सामान्य नागरिक, छोटा व्यापारी या उद्यमी अनावश्यक रूप से कानूनी जटिलताओं में फंस जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी समस्या को दूर करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है, जिसे माननीय मंत्री जी पीयूष गोयल जी द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस समिति के कार्य की विशेष सराहना करना चाहता हूं, जिसने गहन अध्ययन और लगातार 49 बैठकों के माध्यम से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। मैं आज माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस समिति को रिपोर्ट तैयार करने में अपना मार्गदर्शन और पूरा सहयोग दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समिति ने 79 केंद्रीय अधिनियमों में 784 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की सिफारिश की है, जिसमें 717 अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का मूल उद्देश्य बहुत स्पष्ट है: नागरिकों के जीवन को आसान बनाना, व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित करना और अनावश्यक मुकदमों को कम करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक छोटे छोटे उल्लंघनों पर भी लोगों को जेल जाने का डर रहता था। इस विधेयक के माध्यम से ऐसे मामलों की कारावास की जगह आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है: नगर पालिका प्रशासन, मोटर वाहन कानून, MSME, बिजली, वस्त्र, कृषि प्रसंस्करण और कानूनी महाविज्ञान सहित कई क्षेत्रों में सुधार किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोटर वाहन अधिनियम में अनुपालन को सरल बनाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के भी सुझाव इस बिल में दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दवा और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम में सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संतुलित दंड व्यवस्था की सिफारिश भी इस बिल में की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका कानूनों में जेल की सजा को हटाकर संचरित दंड लागू करने का प्रस्ताव है।
रेशम, चाय, नारियल उद्योग और कृषि निर्यात से जुड़े कानूनों में भी सुधार कर दंड को व्यावहारिक बनाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समिति ने बहुत एक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। पहली बार गलती करने पर चेतावनी या सलाह, बार बार गलती करने पर आर्थिक दंड। यह एक मानवीय और व्यवहारिक दृष्टिकोण है जिससे ईमानदार नागरिकों को राहत मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही समिति ने यह भी सुनिश्चित किया है कि गंभीर अपराधों में कड़ी सजा बरकरार रहे, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से कोई समझौता न हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में पारदर्शिता और आधुनिकता पर विशेष ध्यान दिया गया है। डिजिटल अनुपालन प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव, स्पष्ट अपील और न्यायिक प्रक्रिया, न्यूनतम और अधिकतम दंड की स्पष्ट व्यवस्था, यह सब मिलाकर एक सरल, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था तैयार करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विधेयक माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को आगे बढ़ाता है जिसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी गई है। यह केवल कानूनों में बदलाव नहीं बल्कि शासन के दृष्टिकोण में बदलाव है, जहां सरकार दंड देने वाली नहीं बल्कि सहयोग करने वाली बनी है। अंत में मैं माननीय महोदय आपसे कहना चाहूँगा, इस विधेयक से अनावश्यक मुकदमे कम होंगे, न्याय व्यवस्था पर बोझ घटेगा, व्यापार और उद्योग को गति मिलेगी और आम नागरिकों को भी राहत मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से आता हूं, इसलिए मैं कानपुर के बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि कानपुर कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हुआ करता था। हमारे यहाँ के चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग और हजारों MSME ने दशकों तक देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है, लेकिन दुर्भाग्य से पुराने और जटिल कानूनों के कारण यहाँ उपलब्धियों को मामूली तकनीकी खामियों के लिए भी आपराधिक मुकदमों को सामना करना पड़ता है। अपराध मुक्त इसी विधेयक से अब छोटे मोटे उल्लंघन जेल की सजा नहीं बल्कि केवल जुर्माने की दायरे में आएंगे। इसमें कानपुर के व्यापारियों में व्याप्त इंस्पेक्टर राज का डर समाप्त होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट चाहूँगा। भरोसे की राजनीति, यह विधेयक दर्शाता है कि हमारी सरकार अपने नागरिकों पर शक नहीं बल्कि विश्वास करती है। हम इंस्पेक्टर राज की संस्कृति को विदा कर रहे हैं और सेल्फ रेगुलेशन की संस्कृति को आगे ला रहे हैं। अदालतों का बोझ, हमारे छोटे छोटे मामले जो सालों से हमारी न्यायपालिका पर बोझ बने हुए थे, इस संशोधन से खत्म होंगे। इससे हमारी अदालतों को गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम केवल आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनेगा विकसित भारत, वह तब बनेगा जब भारत का नागरिक बिना किसी सरकारी डंडे के डर से सीना तानकर अपने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं इस सदन के माध्यम से देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह सरकार आपके साथ खड़ी है। हम आपको अपराधी नहीं बल्कि देश का भाग्य विधाता मानते हैं। विश्वास से ही विकास है और जन विश्वास से ही भारत का उज्जवल भविष्य है। अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने विपक्ष के साथियों से, जो हमारे साथी माननीय प्रधानमंत्री पर अपने शेरो शायरी के माध्यम से कटाक्ष करते रहते हैं, मैं उनको जरूर कहना चाहता हूं कि उनकी सोच सिर्फ विरोध करने की हो गई है, विरोध का उनको फोबिया हो गया है। तो उनके इन्हीं कुतर्कों का और उनकी शायरी का जवाब मैं इन दो पंक्तियों पर देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, चमकता है जो सूरज बनकर वो अंधेरों से नहीं डरता, जिसे हो देश की फिक्र वो चुनौतियों से नहीं डरता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अल्ताफ अहमद जी। शुक्रिया मैडम। जन विश्वास बिल में जो आज ये अमेंडमेंट्स लाई हैं, इसमें 2 चीज़ जो हैं उसकी तरफ मेन अटेंशन दी गई है इस बिल के इस प्रोविजंस में। एक तो कोई 1000 के करीब ऑफेंसेस हैं जिनको रैशनलाइज किया गया है, और दूसरा शिफ्ट हुआ है क्रिमिनल पेनल्टी से, जो क्रिमिनल पेनल्टीज़ पहले लगती थी अब माइनर फॉल्ट्स के लिए वो नहीं लगेंगी, अलबत्ता फाइन्स होंगे। इस पे सेलेक्ट कमेटी भी बैठी, उसने भी काम किया, लेकिन आम लोगों की राहत का ख्याल नहीं रखा गया। ये बात तो ठीक है कि अगर किसी बिजनेसमैन से कोई जुर्म हो जाता था
तो उसको सज़ा हो जाती थी 6 महीने की, 5 महीने की या साल की। तो उस डर की वजह से कई लोग बिजनेस करने से डरते थे। अब अगर आपने वो चीज़ ख़त्म की तो आपने साथ में ये रख दिया कि एक अगर बंदा अपनी गाड़ी में 8 भैंसों के बजाय 9 भैंसें लेकर चल रहा है तो उसको 1 लाख रुपए का फाइन हो जाएगा। तो ये कौन सा फ़ायदा है या ये कौन सा काम है लोगों के फ़ायदे के लिए? आप एक साइड से थोड़ी सी राहत दे रहे हैं, दूसरी साइड से आप उतना ही फाइन कर रहे हैं, उतना ही नुकसान कर रहे हैं। तो उधर से नाम इसका आप जन विश्वास रख रहे हैं, तो आम लोगों को तो फिर इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। इस बिल पे जो आपने सेलेक्ट कमेटी बिठाई उसने उसकी तरफ ध्यान तो नहीं दिया। इसी के साथ साथ अगर ये जो बिल आपने लाई, क्या अच्छा होता इस बिल में ये भी ख्याल रखा होता कि जो बेरोज़गार हैं, जिन्होंने डिग्रियां हासिल की हुई हैं, जिन्होंने पीएचडी की हुई है, उनको कितना बड़ा टाइम लगता है बैंकों पे, उनको आपके इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में कितना टाइम लगता है, उनके केस प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है, उनको सब्सिडी देने में कितना टाइम लगता है। उस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं इस बिल में। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपको वो कह रहा हूँ जो आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो आप जन विश्वास की बात कर रहे हैं, जो आप ईज करने की बात कर रहे हैं कि राहत मिलेगी लोगों को, उन लोगों की राहत के लिए क्या है जिन लोगों ने डिग्रियां ली हुई हैं। जो आपकी बैंक्स हैं, आपकी बैंक्स क्या बड़े बड़े लोगों को कर्जे देती हैं? जो बेरोजगार जाता है उसको कितना वक्त लगता है, उसको कितना टाइम लगता है एक बैंक पे लोन लेने के लिए, उसको आपके इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में कितना टाइम लगता है? क्या उन चीज़ों के लिए कोई प्रोविजन नहीं है? है कि यदि जेपीसी से बिल आया है तो जेपीसी में जो जिस चीज पर चर्चा हुई है उसी पर आप बिल में चर्चा कर सकते हैं, या जो प्रिंसिपल बिल है उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल बिल तो जेपीसी ही है, इसके अलावा कोई स्कोप ही नहीं है। यही रूल 78 कहता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा जेपीसी से आई हुई बिल के ऊपर आप कोई और चर्चा कर ही नहीं सकते। यही रूल 78 है। इसको हाईजैक मत कीजिए। प्लीज कंप्लीट। मैं सर आपने मैं मैडम वो खत्म कर दूं, मैं एक सब्जेक्ट। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि बैंक्स जो हैं वो भी इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं करती जो बेरोजगार लोग हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में यूटी है, बैंक्स इनके अंडर हैं। मेरे रजौरी पुंछ के इलाके में बैंक्स की ब्रांच ही बहुत कम है, तो लोग वहाँ कहाँ फ़ायदा उठाएंगे इनकी पॉलिसीज़ का। फिर इसके साथ साथ एक बड़ा अहम मसला है हमारी जम्मू कश्मीर का, वो है ट्रेड डील के हवाले से जो हमारी एप्पल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। हम पिछले 2 महीने से चला रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। मंत्री जी, मैं आपसे आपको कह रहा हूं और मैं आप सबको कह रहा हूं कि जो ट्रेड डील से इतना बड़ा नुकसान हमारी एप्पल इंडस्ट्री को होगा, उसके पिछले 2 महीने से हर फोरम पे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उस मामले में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन जो नुकसान उस ट्रेड डील से होगा, जब बाहर से सेब आएगा और हमारा सेब जो है उसकी कीमत कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और किसान जो है उसको नुकसान होगा। उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, सरकार उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रही है और इस तरीके से किसान जो है वो भी परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय सदस्य श्री एम गुरुमूर्ति जी। Thank you, Madam, for giving me the opportunity to speak on Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026, Madam. Madam, Inland Vessels Act Amendment Section 63 expands scope to include offences and contraventions, strengthening enforcement, Madam. However, options of classification between minor and serious violation risk arbitration treatment, Madam. Further, there is a ground level regulatory capture may happen, Madam. So in chapter 16, punishment reflects stricter enforcement intent, Madam. However, blanket shift towards monetary penalties instead of imprisonment may dilute deterrence in safety critical violations, Madam. Madam, in key offence areas, section 14, 18 and 30
strengthens regulatory compliances, madam. In section 87 of 5, recording of offences improves transparency, madam. However, effectiveness depends on robust digital monitoring systems, madam. Madam, in section 87A, adjudication mechanism introduced adjudicating officers and appeals. However, concentration of investigative, adjudicatory and enforcement powers within the executive risk violating fair trial principles, madam. Madam, in maritime and fourth legislative amendments, section 44, penalty substitution shifts from criminal fines to civil penalties, madam. It improves efficiency, madam. Madam, in Coastal Shipping Act amendment, section 16, 18, 26 and 30 promotes ease of doing business, madam, through monetary penalties, madam. Madam, in Merchant Shipping Act amendment, section 281 strengthens accountability through penalties. However, absence of criminal consequences in serious fraud-related conduct may dilute deterrence, particularly in certification and compliance process, madam. Madam, in section 319, rule making provides procedural clarity, madam. However, there is a dire need for an e-portal for MMD, madam, covering which the entire process from application to final permissions to ensure transparency and expedite approvals, madam. Madam, in Drugs and Cosmetics Act 1940 amends to move monetary penalties, madam. However, it removing imprisonment for violation affecting public health risk, serious consequences and weakness deterrence against conflict of drugs, madam. Madam, in Pharmacy Act 1948, it enhances penalties, madam. However, madam, weakened enforcement against unregistered practitioners requires stringent regulatory oversight beyond monetary penalties, madam. Madam, in Dock Worker Act 1948, amendment introduced penalties, madam. However, labor violation require stronger enforcement as a monetary penalties alone may not deter exploitation, madam. Madam, in Oil Industry Development Act 1974, amendment introduced penalties, madam. However, regulatory overlaps requires coordinated enforcement mechanism, madam. Madam, in Fishing by Foreign Vessels Act 1981 enhances penalties, madam. However, enforcement depends on maritime surveillance capacity and coordination, madam. Madam, Inland Waterways Authority Act 1985 introduced penalties, madam. However, weak monitoring system requires digital tracking and infrastructure strengthening, madam. Madam, in APEDA Act 1985A, amendment introduced graded penalties, madam. However, export compliance requires simplified and digitalized systems, madam. In Railways Act 1989 enhances penalties, madam. However, enforcement challenges require technology-driven monitoring and accountability, madam. Madam, and control of National Highway Act 2002 amendment introduced higher penalties, madam. However, persistent encroachments require real-time monitoring and inter-agency coordination, madam. Thank you, madam, for giving me this opportunity. So I support this bill, madam. माननीय सदस्य श्री चंदन चौहान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण जन विश्वास उपबंधों में संशोधन विधेयक 2026 पर अपनी पार्टी की ओर से अपने विचार रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश में ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है।
ये विधेयक प्रस्ताव में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की सोच को जमीन पर उतारने का कार्य करता है। मान्यवर चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि ये कानूनी प्रक्रियाएं दंडात्मक या डराने वाली ना होकर न्याय करने वाली और सुधार लाने वाली होनी चाहिए। महोदय, इस विधेयक के माध्यम से 23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय अधिनियमों के अंदर 717 प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि जिन छोटे मोटे तकनीकी या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों में पहले अपराध माना जाता था, अब उन्हें दंडात्मक के बजाय प्रशासनिक और आर्थिक दंड के माध्यम से निपटाया जाएगा। पहले की व्यवस्था में एक छोटी सी गलती पर भी जेल का डर बना रहता था, जिससे आम नागरिक, छोटे व्यापारी, स्टार्टअप और उद्यमी आवश्यक रूप से भय और असुरक्षा का माहौल में काम करते थे। महोदय, ये विधेयक केवल कानूनों को सरल बनाने की तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मानसिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। पहले जहां सरकार नागरिकों के संदेह की दृष्टि से देखती थी, अब यह विधेयक उन्हें ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट्स की ओर ले जाने का काम करेगा। इससे निवेश का माहौल तो बेहतर होगा ही, उद्योग और प्रोत्साहन मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था में गति आएगी। महोदय, मैं विशेष रूप से किसानों के संदर्भ में कुछ बात आदरणीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं आपके माध्यम से। महोदय, हमारे देश का किसान आज खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि एग्रीप्रेन्योर बन रहा है। प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, स्टोरेज, मार्केटिंग की भागीदारी बढ़ रही है। ऐसे में कई बार कृषि से जुड़े छोटे उद्यमी जटिल कानूनों और नियमों के कारण परेशान हो जाते हैं। यह विधेयक किसानों और कृषि से जुड़े छोटे व्यवसायों के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, आगे भी किसी क्षेत्र में काम करने वाले छोटे उद्यमियों के लिए कंप्लायंस बर्डन को कम करना होगा। आदरणीय जितिन प्रसाद जी यहाँ बैठे हैं, उनके समक्ष मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। मैं आदरणीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को और सरल किया जाए। छोटे किसानों, एफपीओ और सहकारी समितियों को नियमों में आसान बनाया जाए। कृषि भंडारण, कोल्ड स्टोरेज तथा सप्लाई चेन से जुड़े कारोबारियों के अनावश्यक दंडात्मक प्रावधानों को पूरी तरह मुक्त किया जाए। और वहीं इसी विधेयक में क्रम संख्या 65 पे, जहां वर्ष 2009 में पशुओं के संक्रामक रोग के निवारण और नियंत्रण अधिनियम 2009 की अनुसूची में बोवाइन रोगों में 14 रोगों के साथ ब्रुसेला को भी जोड़ा जाए। महोदय, अगर हम वास्तव में किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उन्हें केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि पूरी वैल्यू चेन को मजबूत बनाना चाहिए। तभी संभव होगा कानून उनके लिए सहयोगी बने, बाधा नहीं। इसलिए सरकार से आग्रह करता हूं, इस विधेयक की भावना के अनुरूप किसानों के लिए एक सहयोगात्मक और संवेदनशील व्यवस्था विकसित की जाए। छोटे कृषि उद्यमों, ग्रामीण स्टार्टअप, सहकारी संस्थाओं के अनुपालन और सरल बनाया जाए। दंडात्मक प्रावधानों को जहां हटा दिया गया है, वहीं सहायक तंत्र को और मजबूत किया जाए। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह बिल न्यायालयों पर मुकदमेबाजियों का बोझ कम करेगा, साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता जयंत चौधरी जी की ओर से इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि सदन इसे पारित करने में पुरजोर से एक राय बना के पारित करने का काम करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रशांत पडोले जी। धन्यवाद अध्यक्ष। मैं आज इस सदन में खड़ा हूँ तथाकथित जन विश्वास बिल का पुरजोर विरोध करने के लिए। सरकार कहती है यह ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, मैं कहता हूं ये कारपोरेट बेस्ड गवर्नेंस है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार कह रही है कि ये माइनर ऑफेंस है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में जो बदलाव किए गए हैं, जहां पहले जेल होती थी, अब सिर्फ
मॉनेटरी पेनल्टी वहां पे कर दिया है। क्या जनता की जान सिर्फ माइनर ऑफेंस है? आज यह सहकार कर रही है। 2026 में यह बढ़कर 144 गीगावाट हो गई है। इसी तरह पवन ऊर्जा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 54.65 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि 29 जुलाई 2025 को जुड़ी, जब देश ने बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की अब तक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी हासिल की। इस दिन देश के कुल 203 गीगावाट बिजली मांग में से 51.5% हिस्सा नवीकरणीय स्रोत ने पूरा किया। यह पहला मौका था जब देश की आधे से अधिक बिजली की जरूरत स्वच्छ ऊर्जा स्रोत से पूरी हुई। इस दिन ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 44.50 गीगावाट, पवन ऊर्जा का 29.89 गीगावाट और जल विद्युत का 30.29 गीगावाट रहा। यह उपलब्धि केवल बढ़ती क्षमता का संकेत नहीं, बल्कि यह भी बताता है कि नवीकरणीय ऊर्जा अब राष्ट्रीय ग्रिड में प्रभावी रूप से एकीकृत हो रही है। दुनिया भर में ये एक स्थापित तथ्य है कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और जीडीपी ग्रोथ साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ऊर्जा उपलब्धता औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाती है, एमएसएमईज को सशक्त बनाती है, रोजगार सृजित करती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि ऊर्जा क्षेत्र के परिवर्तनशील दशक के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने 2014 में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 2025 आते आते चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी का दर्जा प्राप्त किया है। और अब हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में हम अग्रसर हैं। एनर्जी ट्रांजिशन, वैश्विक नेतृत्व। मित्रों, एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में भारत आज वास्तव में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। नॉन फॉसिल कैपेसिटी शेयर 2014 में 32% से बढ़कर नवंबर 2025 में 52% हो गई है। भारत ने एनडीसीज के तहत 50% क्यूमुलेटिव नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का लक्ष्य लगभग 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है और ऐसा करने वाला पहला G20 कंट्री अपना देश बन गया है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2026-27 तक 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है। इस योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और फरवरी 2026 तक 31 लाख से ज्यादा घरों को इसका लाभ मिल चुका है। तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार को समर्थन देने के लिए सरकार ने पावर ग्रिड को अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान किया है। इसके तहत प्रति सहायक कंपनी निवेश सीमा को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह कदम बड़े और पूंजी गहन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जैसे कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज एसी और हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम को गति देने में मदद करेगा। इससे नवीकरणीय ऊर्जा के कुशल ट्रांसमिशन और राष्ट्रीय ग्रिड में इसके बेहतर एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। आज इस योजना के तहत शहरों और गांवों में छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं। हमारे किसानों को सस्ती बिजली मिले, इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। आज इस दिशा में कई राज्यों में सोलर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। इन प्रोजेक्ट से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, यानी घर में मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और खेतों में मुफ्त बिजली के लिए पीएम कुसुम योजना। Solar power growth has been especially remarkable.
increasing nearly 47 times from 2.8 gigawatt in 2014 to 133 gigawatt in 2025. Wind power capacity has more than doubled during this period, rising from 21 gigawatt to 54 gigawatt. PM मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली घर योजना, मुफ्त बिजली योजना और PM कुसुम ने साधारण परिवारों और किसानों को एनर्जी प्रोवाइडर में बदल दिया है, जो सिर्फ बिजली पैदा करने तक सीमित नहीं, ये 16 सेक्टर में कौशल, सेवाओं और इकोसिस्टम्स और निवेश के नए अवसर भी ला रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2070 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2014 के बाद से क्लीन एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी में हुई प्रगति को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि ये लक्ष्य हम जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। कुल मिलाकर भारत का पावर सेक्टर आज कई वर्षों के सुधार का परिणाम है। यह किसी एक योजना का असर नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, निवेश, नीतिगत सुधार और तकनीकी उन्नति का संयुक्त परिणाम है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि, हर घर तक बिजली पहुंचाना और सप्लाई की विश्वसनीयता में सुधार, ये सभी उपलब्धियां इस बदलाव को दिखाती हैं। साथ ही वितरण क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही वित्तीय और परिचालन चुनौती को भी अब धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। डिजिटल तकनीक, स्मार्ट नेटवर्क और नई बाजार व्यवस्था यह तय कर रही है कि भविष्य में बिजली कैसे उत्पन्न होगी, कैसे वितरित होगी और कैसे उपभोग की जाएगी। आने वाले समय में उपभोक्ता इस पूरी प्रक्रिया का अधिक सक्रिय हिस्सा बनेगा और इसी के साथ बिजली जो अक्सर दिखाई नहीं देती, देश के विकास, समावेशन और अवसर की सबसे मजबूत